How many words? 3 words. 4. 4, okay. Yeah. Hindi, English? Hindi. Okay. Sugar? मैं लो. First word. Papa. Papa. Baby. Baby. पापा से छोटा. पापा से छोटा. Raju Chacha. चाची 420. Okay. चाचा भतीजा. Chacha Bhatija. No. First half. Chacha. चाचा. Okay. First word. चाचा. Chacha. Okay. Okay. Second word. Mine. Hindi. पापा का? Me. तेरा. तेरे मेरे सपने? मेरे. चाचा मेरे. Third word. Okay. T-shirt. Jeans. Shirt. No. कपड़े? Right? कपड़े. Okay. चाचा मेरे कपड़े. ये ऐसी तो कोई फिल्म नहीं है. बच्चों की खामोशी बहुत कुछ बोलती है. उन्हें ध्यान से सुनिए. कहीं कोई अपना ही उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा. चुप ना रहें. चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से लड़ें. मैं तो अपना जा रही थी चुपचाप. उन्होंने ही बात शुरू की. बात करना भी गुनाह हो गया. कमाल है. अब आदमी करे तो करे क्या. हुआ क्या? ठीक से बता. लंच टाइम हुआ तो मैं टिफिन लेकर आ रही थी. संतोष जी सामने से चलकर आए और मेरा रास्ता रोक लिया. अब रास्ता थोड़ी बदल लेंगे क्योंकि सामने से लेडीज आ रही है. एक ही दफ्तर में काम करते हैं भाई. ये तो होगा. मैंने देखा उसके हाथ में खाने का डब्बा है तो मैंने पूछ लिया. आइए आज साथ में लंच करते हैं. बस इतना सा तो बोला. कुछ बोला क्या? पहले बोला कि ये रंग काफी जच रहा है आप पे. फिर बोला आइए साथ में लंच करते हैं. मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था पर मैंने उन्हें आराम से मना किया. मैं मनीषा के साथ लंच करती हूँ. शायद उनको बुरा लग गया. अब बुरा तो लगता ही है ना. ऐसा भी क्या है. उससे 3 साल पहले से हूं इस दफ्तर में. इस पर भी कोई चीज होती है यार. रिस्पेक्ट अपनी जगह है. मैं समय पे अपना काम खत्म करती हूँ. सुबह टाइम पर आती हूँ. 1 आध घंटा एक्स्ट्रा भी रुकी हूँ मैं कई बार. और मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा. जाने लगी तो आपसे कहीं ज्यादा अच्छी दिखने वाली लड़कियां काम कर चुकी हैं इस ऑफिस में. तो ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा. ये किस तरह की बात है. बात क्या है ना. ये सर पे चढ़ जाती हैं. अब लेडीज समझ के हम इनको डांटते फटकारते नहीं है तो इनको लगता है ये ज्यादा टॉप में. और ऐसा कुछ तो बोला भी नहीं मैंने. मुझे लगा डर गई शायद तो मैंने हंसकर समझाने की कोशिश की. अरे स्मिता जी और मैडम लोग भी हैं इस ऑफिस में. हम लोग कई बार साथ में बैठ के लंच करते हैं. तो इतना सोचिएगा मत इस बारे में. इतना सा बोला तो मुंह बना लिया. घूर के निकल गई वहां से. मजाक भी नहीं कर सकते क्या. मजाक के नाम पे कुछ भी बोलेंगे क्या. मैं अभी उनसे बात करती हूँ. अब स्मिता, वैसे इससे पहले कभी संतोष जी के बारे में ऐसा कुछ सुना तो नहीं है. हो सकता है तुझे ही गलत लग रहा हो. मेरा मतलब सोच ले एक बार. सब ठीक है ना. क्या सोच रही हो. जो हुआ वो गलत था या नहीं. गलती से था या नहीं. या हुआ भी या नहीं. सच तुम जानती हो. सोचो मत. स्मिता जी सब ठीक है ना. ठीक तो नहीं है लेकिन हो जाएगा.
Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shri Ram, and welcome to all. Um, Thank you so much for joining us, and it's a small effort from us to create awareness among the people what sexual harassment is. Coming to the fact that sexual harassment जो है वो बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. तो जो हमारे साथ बाहर होता है at our workplace or in public, that's called sexual harassment. लेकिन जो हमारे साथ हमारे घर में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में होता है, that is called violence, sexual violence or abuse. So these are two different topics altogether. Today we're going to check and we're going to talk about sexual harassment at workplace. आज हम उसके बारे में बात करेंगे. And in next topics we will try to cover sexual abuse and violence at the same time, so that हम लोगों को समझने में आसानी हो और हम लोगों को ये समझ में आए कि हम उससे हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उससे बचने के लिए, एंड हमारी लीगल राइट्स क्या हैं उसको लेके, एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस बाय द गवर्नमेंट एज वेल. एट द सेम टाइम what should be and what should not be done, and first of all, should we actually encourage people who are in facing this situation to come out and report the abuse, not only because some of them are at that power that they can sexually abuse you, but at the same time where you have equal rights as an employee in a company to report anything that happens. So before I go forward, मैं यहाँ से आगे बात करूँ, मैं आप लोगों को थोड़ी सी definition बताना चाहती हूँ. So I will go point wise, और कभी भी किसी का भी कोई सवाल है तो I'll request you guys please आप लोग ज्वाइन कीजिएगा और जो भी सवाल आपके हैं उनको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी. सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है? ये एक अनवेलकम बिहेवियर होता है जो आपको ऑफेंसिव लगता है, जो आपको ह्यूमिलिएटिंग लग सकता है या आपको इंटिमिडेट कर सकता है. ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या आपको कोई ईमेल लिख के हो सकता है, आपको कोई लेटर लिख के हो सकता है, आपको कोई मैसेज के थ्रू हो सकता है, ये वर्बल हो सकता है, मतलब आपको बोल के, जैसे हम देखते हैं सड़क पे व्हेन गर्ल्स आर पासिंग सम बॉयज विसल और मिसबिहेव और पास कमेंट्स, so that is verbal harassment. Same as physical harassment, which we all know. जब आपको physically कोई अटैक करे या आपको अब्यूज करे या आपको वायलेट करे, दैट फॉर्म वो अंदर वो उस एम्बिट के अंदर गिरता है जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट. एंड ये किसी भी के साथ हो सकता है, सो इट इज जेंडर न्यूट्रल. तो स्पेसिफिकली वुमेन सिर्फ अब्यूज का शिकार होती हैं, मेरा ऐसा मानना नहीं है. मेरा मानना है इट इज जेंडर न्यूट्रल, इट कैन हैपन टू एनीवन. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज कि हमारे पास ऐसे अभी वर्क प्लेस पे ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज या आप ऐसे बोल दीजिए सेटअप्स हैं जहाँ पे हम इनको रिपोर्ट कर सकते हैं. पर जैसे अभी हमने ये शुरू होते हुए भी हमारा शो शुरू होने से पहले भी आप लोगों ने देखा, जो हमने एक छोटा सा वीडियो प्ले किया था, that we start raising questions on the victim. We don't raise question on the perpetrator. हम लोग हमेशा जिस पे जुल्म होता है उसको सवाल करते हैं, उस पे ओनस डालते हैं प्रूव करने का कि उसके साथ गलत हुआ. अब मैं सेक्सुअल हरासमेंट के 3-4 एस्पेक्ट्स आपको बताना चाहूंगी. सेक्सुअल हरासमेंट जो है उनमें ये सब चीजें होती हैं, इंक्लूड एज पर द लॉ, टचिंग, ग्रैबिंग और मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विद यू विदाउट योर कंसेंट, आपकी मर्जी के बिना, मेकिंग कमेंट्स एट यू, जैसे सड़क पे चलते हुए those roadside guys, they do this, or it can be women. आपको ऊपर से नीचे तक ताड़ना, आपको ऊपर से नीचे तक देखना, आपके ऊपर अलग अलग कमेंट्स मारना, रूड और अब्यूजिव बिहेवियर होना उनका. सेक्सुअल गेस्चर्स, जो हम जेस्चर्स करते हैं, बॉडी मूवमेंट या कुछ ऐसा आपत्तिजनक आप अपनी बॉडी से आपको इतना अनकंफर्टेबल बना देना. सेक्सुअल जोक्स जो कि बहुत कॉमन हो गए हैं हमारे वर्क प्लेस पे, बिकॉज हम अपने आप को एक लिबरल सोसाइटी की तरह देखना शुरू कर दिए हैं. बट क्या वो किसी के आर यू क्रॉसिंग द लिमिट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो लिमिट क्रॉस कैसे होती है? दी सेक्सुअल जोक्स, कमेंट्स अराउंड समवन, किसी की सेक्सुअलिटी को लेके, किसी के अपीयरेंस को लेके, किसी के बिहेवियर पैटर्न को लेके उनको कमेंट, टॉन्ट
or harass karna is another kind of harassment at workplace. Insulting with sexual comments, या आपके seniors आपको pressurize करें कि आपको हम you will get the job benefits or you'll get the promotion, जो हमने बहुत कुछ देखा होते हुए, only if you please us. Please us अब किस तरह से होता है, या फिर sexual assault, indirectly exposing their private parts to the people, women. These are kind of sexual harassment. So when does sexual harassment becomes an assault? वो assault कब बनता है? If someone is sexually harassing you in a way that causes you to feel humiliation, pain, fear or intimidation. अगर इनमें से कोई भी चीज आपको फील होती है, humiliation, pain, fear, intimidation, it is considered as sexual assault. If you believe you are being sexually assaulted, you may want to find some solutions. What it means is that we find a support system at your workplace and how you have to tackle it. So how we will tackle it, I'll come to that part later. और वो आपको कैसे इफेक्ट कर सकती है, सेक्सुअल हरासमेंट आपको किस तरह से इफेक्ट कर सकती है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उस पे भी मैं अभी आप लोगों से चर्चा करूंगी. So coming to very one important factor which I wanted to share with you guys is, what does law says? Law says, section 354A, a man committing any physical contact advance involving one unwelcoming and explicit sexual overtones, or demanding or requesting sexual favors, or showing pornography against the will of a woman. इनमें से अगर वो कुछ भी करता है, आपके ऊपर सेक्सुअल कमेंट्स मारता है, आपसे डिमांड करता है, आपसे रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर्स के, या फिर आपको पोर्नोग्राफी दिखाता है अगेंस्ट योर विल, और मेकिंग सेक्सुअल रिमार्क्स, he is the one who is guilty of sexual harassment. It is covered under 354A. Coming to another section which helps us in this is section 209. Obscene acts in public places, singing obscene songs to anyone. It is again a punishable act, up to 3 months, an amount of fine, or both of them. It depends. But even having so many well-laid laws for it, the only problem is, do we report? No, we tell our women to avoid it. So I personally feel a law implementation is more important than just having laws. There's one more section, that is section 509. Uttering any word or making any gestures intent to insult the modesty of a woman is again a type of sexual harassment. But there is one independent research of a Women Prohibition Act, which is 1987. If an individual harasses another with books, photographs, paintings, films, leaflets, packages, extra, containing indecent representation of a woman. जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे एड हैं, यहाँ सीमेंट बेच रहे हैं और वहां एक औरत को दिखा रहे हैं इन द मिनिमल क्लोथ, या एक क्रीम बेच रहे हैं आप, और एक आप वुमेन को कैटेगराइज कर रहे हैं कि वो गोरी होगी तो ज्यादा अट्रैक्टिव होगी. दीज आर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वुमन एंड दे आर लाइबल फॉर अ मिनिमम सेंटेंस ऑफ 2 years. उनको 2 साल की पनिशमेंट हो सकती है. Now, what is one more very important point is basically, अब हम जो कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जो एक्ट हमारा बना था 2013 में, इसके अंडर सेक्सुअल हरासमेंट को जो है 3 तरह में डिवाइड किया गया, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांस में. फिर इसका जो डिवीजन था वो बहुत ही खूबसूरती से करते हुए, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, making colored remarks on a person. It can be of any sex, any gender. It is not important because I said it is gender neutral. Showing pornography again without taking consent from you or without your will, that is all divided. Then unwelcoming physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature. So these are the categories where they are divided. Then we come to the part where we say it is the implied or exploit promise.
जहां पे वो आपको प्रॉमिस करेंगे कि आपको हम तब प्रमोशन देंगे, when you entertain me, or when you treat me in a different way. So that kind of behavior, all these categories are basically which comes under the sexual harassment at workplace. इम्प्लाइड और एक्सप्लाइड थ्रेट्स, अगर आप वो मना कर दें और आपको ये थ्रेट दिया जाए कि आपका करियर इफेक्ट होगा, आपका प्रमोशन इफेक्ट होगा, आपको किसी तरह से भी मेंटली प्रेशर करने के और डराने का कोशिश, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू सेक्सुअल हरासमेंट. इंटरफेरेंस विद योर वर्क, अब जब उन्होंने आप पे एडवांस किया, आपने मना कर दिया, तो वो जनरली वर्क प्लेसेस में क्या होता है, वो आपके अगेंस्ट एक ग्रज पाल लेते हैं. तो जब आपके खिलाफ एक ग्रज पाल लिया, तो आप जो भी काम करते हैं, या तो उसमें नुक्स निकालते हैं, या बोलेंगे यू हैव नॉट डन इट प्रॉपर्ली, दिस इज नॉट हैपनिंग, दैट इज नॉट हैपनिंग. सो इंटरफेरेंस विद योर वर्क इज वन मोर टाइप ऑफ sexual harassment which happens in workplace when you you don't take their advances appropriately, humiliating you, treating you badly, making you compare with other people, and saying you're worse than them. We have seen worse people, but humiliating you in a way that you feel dejected and rejected, and you start feeling that you don't have that worth, because he's saying you can only go ahead if you sexually favor that person. So all these sections 354A, 209 and 507, and this the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1987, this covers all these parts. Now coming to another part, which is what does sexual harassment becomes an assault. जैसे मैंने आपको बोला था कि जब आपको फिजिकली आपको इंटिमिडेट करने लग जाए, और जब आप उससे डरने लग जाएं, तो दैट इज व्हेन इट बिकम्स एन असॉल्ट. आपको अपने जीवन पे डर का एहसास होने लगे, आपको लगे कि वो आपको हरास कर सकते हैं, आपको फिजिकली हार्म कर सकते हैं, वो असॉल्ट में आ जाता है. So there's one commission which is called Equal Employment Opportunity Commission, that is called EEOC, Sexual Harassment. इसमें जो होता है, इसमें जो हमारे ऊपर जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है, उसका डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, सेक्सुअल हरासमेंट किस तरह से होती है, इसके बारे में बहुत अच्छा विवरण दिया गया है. तो आई विल ट्राई टू शेयर इट विद यू. इट इसमें जो है, इट इन्वॉल्व्स अनवेलकमिंग सेक्सुअल एडवांसेस, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, जैसे मैंने बोला आपको, एंड अदर वर्बल एंड फिजिकल एक्शंस दैट आर सेक्सुअल इन नेचर. They are considered to be illegal, as I stated to you guys. Now, coming to one more very specific part is when the conduct occurs in a person or working environment. जब भी ये कभी working environment में होता है, it is viewed from an employment discrimination basis also. क्योंकि gender equality at workplace is one more thing which is very important, and it is covered under the Civil Rights Act as well. So this question is very important. तो क्या जो उसके बाद ये जो आपका जो डिवीजन है, बिकॉज आप एक वुमन है या आप एक मैन है, आपको इस बेसिस पे आपको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, आपका एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेट कर, आपका एम्प्लॉयर आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है आपकी सेक्सुअलिटी के बेसिस पे, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन. So there's one more kind of sexual harassment. It is called quid pro quo. It is what does it mean and how does we define it? So I will tell you. Quid pro quo is sexual harassment involves a person who acts as a supervisor to other employee, asking them for sexual favor. Sorry. जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं और वो आपको बोलता है कि no, you have to do this with me, you have to come for a dinner with me, you have to go out for me with me, and maybe he's trying to get too close and too personal with you in exchange for some kind of employment benefits. तो अगर आप मेरे साथ आज पार्टी पे चलेंगी, तो we will आपका प्रमोशन ड्यू है, हम आपका प्रमोशन देख लेंगे. इंक्रीमेंट इज ड्यू, दैट इंक्रीमेंट वी विल सी. तो ये सब जो है, इट कम अंडर क्विड प्रो क्वो सेक्सुअल हरासमेंट. आप इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया कि आपकी रैंकिंग, आपकी सैलरी, आपका प्रमोशन, वो सब इसके अंडर आपका कवर हो जाता है, हाउ यू आर एक्सप्लॉयटेड in the workplace. Dusra is the other one is hostile working environment sexual harassment. Hostile working environment sexual harassment can
occur when someone who's working at a company does one of the following things: make intimidating or threatening comments. तो जैसे आपने बोल दिया कि ओके आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू, आई विल सी मैं क्या खुद कर सकती हूँ ऑन माय ओन कैपेबिलिटी, आपके ऊपर जोक्स, आपके ऊपर रिपीटेड सेक्सुअल एडवांस, या आपको किसी चीज में फंसाने की कोशिश so दैट आप उनकी बात सुन सके. These are the hostile work environment sexual harassment के types. And इसके मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल देती हूँ. Telling you dirty jokes again and again, trying to send you messages or stories about the sexual nature of talks, or creating images, sending you WhatsApp emojis by such ways, commenting or writing notes to you or emails, or using discriminatory or abusive or insultive or derogatory statements against you. That is all part of this sexual harassment. And there is one more type that is called non-direct sexual harassment. क्योंकि बहुत सारे टाइम जब harassment होता है तो आपका सीनियर बोलता है, अगर आप उसके खिलाफ कंप्लेन करते हैं कि मैंने तो कभी कुछ डायरेक्टली बोला ही नहीं, आई हैव नेवर सेड एनीथिंग डायरेक्टली, सो दैट इज कॉल्ड नॉन डायरेक्ट सेक्सुअल harassment. So what is it? It is basically a direct sexual harassment. और non-direct में यही difference है कि it occurs when a second victim has been offended by the authority of visual sex misconduct. तो suppose कीजिए आप ऑफिस में कहीं घूम रहे हैं and some of this perpetrator who is a habitual offender, you can say, and you're not comfortable with his advances. He's just looking at you, where you're going, where you're moving, looking at your body in a very different manner. We at times, women have a sixth sense. He's looking at my body in a very different manner. So that kind of thing, remarks आपके बारे में, अरे आज तुमने ये पहना है, आज तुम, how we say in cheap words like मस्त लग रही हो, कि आप उसको डिफेम कर रहे हो, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो. So that is a non-direct sexual harassment. It should also be taken into consideration. And what should we do about it? So let's come to a very focal point, that is Bhavri Devi ka judgment tha, and on that basis there are Vishaka guidelines which were formed basically. Now I will read out to you guys what is basically Vishaka guidelines. Vishaka guidelines वो guidelines थी जो बनाई गई थी after Bhavri Devi case. Bhavri Devi was a woman. She was working in a government department, and she was a Dalit woman. So there were so many sexual misconducts which was like made on her, and then what and how she fought it in Rajasthan. It's a case of Rajasthan versus Bhavri Devi. So, and then this reached to the Supreme Court, and when Supreme Court observed that at workplace there is more harassment occurring to women, and especially of some particular categories, then they made this Vishaka guidelines, and it was considered that these guidelines should be followed by each and every agency, whether it's a local body or whether it's a government organization. So they should be in place at workplace. अब जब विशाखा गाइडलाइंस बनी थी बेसिकली, तो क्या हुआ था, विशाखा गाइडलाइंस के बाद आपको बोला गया कि जो विशाखा गाइडलाइंस है उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए, आपको एक सेटअप चाहिए होता है जिसमें आप बेसिकली अपने हर ऑफिस में, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो, चाहे वो एक प्राइवेट ऑफिस हो, चाहे वो कोई भी ऑफिस हो, any kind of office where there are more than 10 to 12 employees, you need to have a setup in your office where basically you need to have 2 members from committee, some HR department representative will be there, and one independent body who will be vetting this. So whatever complaints come to your department in this through HR, they have to be verified, they have to be validated, and then the action should be taken. अब बहुत बार ऐसा होता है, the victims don't want to come further, उनका नाम बाहर आ जाएगा, उनका अगर उन्होंने कंपनी छोड़ दी तो एम्प्लॉयर उनके रिपोर्ट में लिख सकता है ये बात, so they try to be and like to be anonymous. So what we generally do is when the setup is there, you have a right to be anonymous to file a complaint as well.
So the Vishaka guidelines were a set of guidelines that were intended to prove women at workplace to protect them. They were instituted by Supreme Court of India in the year of 1997. These are procedural in nature and the state the method that is to be followed while dealing with the cases related to sexual harassment. जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि हर वर्क प्लेस पे होना इनका जरूरी है। जो भी 10 से ज्यादा जहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट होती है वहाँ पे इनका होना बहुत जरूरी है। इट्स अ मैंडेटरी थिंग। तो लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे ये सब नहीं बहुत कॉमन है। वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट बेसिकली कि हम कैसे अपनी कंपनी का खर्चा बचा सकते हैं और कैसे हम ये सेटअप ना हो ताकि एम्प्लॉयज जो सीनियर एम्प्लॉयज हैं उनको बचाया जा सके। सो इसका एक पॉजिटिव चेंज था सोसाइटी पे। आफ्टर द इंसिडेंट्स मेनी वुमेन्स वर रेप्ड इन वर्क प्लेस, बहुत ऐसा कुछ हुआ था। तो एक एक्ट वायलेशन राइट ऑफ इक्वालिटी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 14 of the Indian Constitution, Article 15 and 16 provides that there would be discrimination on the basis of caste, religion, sex and the equal opportunity to everyone. तो ये तो हमारे हो गए, ये हमारे राइट्स है। बट जब ये वायलेशन होते हैं तो इनके बारे में क्यों कोई नहीं सोचता। तो भवरी देवी के फैक्ट केसेस जो मैंने आपको बताया, वो एक दलित औरत थी और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। वो बहुत यंग एज में उनको मैरी करवा दिया था। So she was helping a young girl who was forced to marry at a very young age by her parents. There was a powerful political personalities and influential people involved, and she failed to stop the child marriage. वो उस बच्चे की शादी करना नहीं रुकवा पाई। She tried to resist. उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश की। उन्होंने रैलीज निकाली, कैंपेन शुरू की, ग्रुप बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको अपोज किया, उनको सपोर्ट नहीं किया। और उनको भवरी देवी जी को अटैक भी हुए, उनकी लाइफ पे 2-3 बार अटैक हुआ। एंड व्हेन शी वाज वॉकिंग, अपने पति के साथ वो चल रही थी तो उनके ऊपर अटैक हुआ एंड शी वाज गैंग रेप्ड बिकॉज शी वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अ यंग गर्ल। तो भवरी देवी जी ने filed a criminal case against the rape against these men because she was knowing who they are. She was not taken seriously by policemen, जैसे हम लोगों के साथ हमेशा होता है, पुलिस हमारी नहीं सुनती है और किसी भी ऑफिसर ने उनकी कोई भी मदद करने से मना कर दिया। 52 आवर्स के बाद कंप्लेंट फाइल की गई क्योंकि बिकॉज शी वाज पार्ट ऑफ दीज कैंपेन्स एंड ऑल दैट, तो इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया और राजस्थान हाई कोर्ट ने 5 आदमियों को जिन पे उन्होंने असॉल्ट किया था उनको पनिशमेंट सुनाई। तो दिस वाज व्हाट हैपेंड इन द बवरी देवी। बट आफ्टर उसके बाद क्या हुआ, जब बवरी देवी जी के जिनको उनको सजा सुनाई गई हाई कोर्ट से, जब ये हुआ उसके बाद शी अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो जो राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट थी, उन्होंने बहुत सारे चीजों के एंगल खोल दिए और वी डिसाइडेड कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इसके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, रोड मार्च, ये सब वो सब हुआ और इसके बाद जो हमारा विशाखा गाइडलाइंस का फॉर्मेशन हुआ। तो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम करती है वुमन सेफ्टी के लिए, वुमन अपलिफ्टमेंट के लिए, उन्होंने बवरी देवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मांगा और बोला कि ऐसी महिलाएं जो कि किसी भी सरकारी या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए जो वो निर्भय होकर अपना काम कर सकें, अपनी ड्यूटीज कर सकें और उनको सेक्सुअल हरासमेंट एक उनके पास लोगों के पास टूल नहीं होना चाहिए, उनको फिजिकली हार्म करना उनके लिए टूल नहीं होना चाहिए, so that they can work in a safety environment. So the judgment was given by three bench judges basically, held that the fundamental rights provided under 14, 15, Article 19, 1G, Article 21 of the Constitution are violated by the act of sexual harassment. तो आपका जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबसे सुपीरियर होते हैं और जब वो वायलेट हो गए तो दैट द एक्ट इज कॉल्ड सेक्सुअल हरासमेंट। इस केस में the court brought to Vishaka guidelines for protection of women at their workplace and providing a safe environment for women for the work. But now, see, it happened long back, as I told you, 1997, ये सब 1997 से हम 2021 में आ चुके हैं। Earlier, it was more
evident that women were harassed at the workplace, but now it has changed. Men have equally been targeted at the workplace. तो सेक्सुअल हरासमेंट अब जेंडर न्यूट्रल हो गया है और इसीलिए नॉट ओनली विशाखा गाइडलाइंस ऑल्सो कवर द गाइडलाइंस which where men are sexually abused. So it has become more gender neutral at today's time, and we have been making sure that whatever complaint comes to us, because I'm part of one of the organization where I go and vet the sexual harassment cases as an independent lawyer, accept their own committee, so that we see and we vet all those complaints and हम उन पे क्या action ले सकते हैं, क्या report बना के हम company को दे सकते हैं. We make sure that both the parties are heard. It is a transparent thing, and we evaluate, and we even हम लोग उनको inform करते हैं उनके rights क्या हैं, उनको हम लोग lectures देते हैं. We do some certain kind of presentation that what are their rights and how they can protect themselves, both men and women. At the same time, one very upsetting thing I have seen, we have to file a report every yearly of these companies where we are on panels. But fortunately, इतने सारे रूल्स होने के बावजूद भी इतना अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों को कंपनीज बोलती हैं, अरे मैम ये दो तीन पैराग्राफ आप मत पढ़ाइएगा, छोड़ दीजिए इनको, ये बताने की जरूरत नहीं है, इसका इम्पोर्टेंस नहीं है. So we are still at the place where we are trying to hide these things. So even MNCs in our country, they not only like जो अभी आप देख रहे हैं evidently जो ट्विटर में हो रहा है, कोई हमारे rules follow नहीं करता, law of the land, same is happening with the people in the corporate world and other parts as well. एम्प्लॉयमेंट के जहाँ पे भी एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं, वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट होने के चांसेस होते हैं. तो ये जो सेटअप ऑफ गाइडलाइंस जो उन्होंने बोला है कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए अपने सेटअप्स में, ये बहुत सारी एमएनसीज भी नहीं करती हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली इसको कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है. एंड वी who try to do it, the companies don't prefer to again bring us. हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद they don't prefer कि इतना चिक चिक करते हैं ये लॉयर, कोई और मिल जाएगा जो who can work as per them. So that is the sad state, and that's why still the sexual harassment at workplace is a big issue. Nobody covers it. Nobody tells you what your rights are as an employee. So there are many things you can do basically जब आप एक sexual harassment के through जा रहे हैं, and what can be the steps we can take. We will come to it. Before that, I will tell you objective and need of the Vishaka guidelines, which has to be in place in every organization. And आप लोग भी जहाँ जहाँ काम करते हैं, I will request you all, आप भी check करिए अपने HR department के साथ कि what are the setups of आप Vishaka guidelines आपके यहाँ पे, who is the members of that. And अगर कभी भी कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे आपको कंप्लेन करना पड़े, तो क्या आपके ऑफिस में ऐसा सेटअप है जहाँ पे अगर आप कभी भी ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट के थ्रू गुजरे, तो क्या आपके पास एक weapon of using these guidelines and using these mechanism which has to be in the office at the first place, वो है कि नहीं है, so that you not only safeguard yourself but the people who are working with you, your colleagues, your associates, your seniors and your juniors. So these are few things which we all should keep in mind. Objective of Vishaka guidelines क्या हुआ था? After the Babri Devi incident, many women group came on streets, जैसे मैंने आपको बताया बहुत protest हुआ था, and they raised a question about the safety of women, what happens to them at the workplace. So they have a proper legislation that could ensure the safety of women at workplace and provide just and fair punishment to people who indulge in the crimes against women like rape, sexual harassment, sexual violence, sexual abuse. These rules were provided by the legal system at the time, were often used by men who were accused. As I said there's a change now, but earlier when 1997 these guidelines were constituted, the thing was it was more towards the need of the woman, because as we all know, men were always they were always considered to be the perpetrators. But now the scenario have changed, so it has become gender neutral. The Vishaka guidelines came into existence to provide a set of guidelines, जैसे मैं आपको बोल रही थी, to prevent sexual harassment of women at workplace,
ensure that people who indulge in act of sexual harassment and give a justifiable punishment. तो उनको उनके जो वो सेक्सुअल हरासमेंट में इन्वॉल्व होते हैं उसके हिसाब से उनको किस तरह का पनिशमेंट मिलना चाहिए, कैसा पनिशमेंट मिलना चाहिए। और वर्क प्लेस पे देखिए, अगर आप एक जगह काम करते हैं, अगर ये बंदा एक रेगुलर ऑफेंडर है तो आप पहली शिकार होंगी और ना आप आखिरी शिकार होंगी। तो अगर हम लोगों में इतना हम एफर्ट मारें कि अगर हम सफर कर रहे हैं तो हमारा आगे आने वाले लोग सफर ना करें, तो अगर हम ये स्टेप लेके उनके खिलाफ कंप्लेन करें तो वो एक जस्टिफुल पनिशमेंट उनको मिले, शायद वो ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाए। क्योंकि ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं हु डोंट बेयर इवन 1% of this in their organizations. They will chuck the person at the same moment अगर something comes up like that, और वो उनको निकालते हैं उस पीरियड के लिए जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है। अगर इंक्वायरी कंप्लीट होती है and they find anything about the person, then his career is gone. So that period when that has to be investigated so that the person doesn't influence anyone at that place, the workplace, this person is terminated for a particular period. And in many cases, the companies pay the salary also. It's not that they will just terminate him because there's a complaint. Inquiry is equally important because we have to understand at times we have other personal agendas involved to just malign a person or put him in the position that this thing happens. So that is one of the very important thing which was like put into the guidelines as well later, that during the time of when the inquiry is there, the person should not be at the workplace so that it directly or indirectly could not influence the inquiry. And that is why it is very important that an independent person, not part of the organization, but an independent person is there who is part of that core group who vets these complaints about sexual harassment and validates and checks all the facts so that the person against whom this has happened, they are in a position to take appropriate action, and the company can also help them in that way. So that creating that safety environment is very important for all these organizations as well. And one more very important point is where we should consider now, because we are evolving. Women are also working and men are working late night shifts. They're working in night shifts and all that in many organizations rather. So that period when they travel from home to office or office to home, that period where they are basically going back to the place or coming to office, nothing of this advanced where rape or anything happens by either the people who are in the office or who transport them, the drivers, vehicles which transport them in that. So they had particularly made certain guidelines for that, but unfortunately, like we all know, इंडिया वर्क्स भगवान भरोसे। यहाँ पे लॉज तो बहुत हैं बट इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे जीरो है। until a big incident happens, nobody comes and talks about it. Neither will you actually. How many of you who are working at night shifts will go and ask their supervisors what are the precautions, what are the guidelines from the company given to these drivers who pick us from a house, or if I'm the last one who has to be dropped, what precautions are there, who is going to vet whether I'm dropped back at my place. Just making a call will not solve that problem. So drug tracking devices, how the mobiles have to be fitted, how you have to monitor the location of the driver where he dropped the last person. These are certain guidelines which are there, but how many of you actually know about it and ask your employees? You don't. And as you know, all in West, there is a particular period. आप 7 घंटे काम करते हैं, आप 6 घंटे काम करते हैं, आप 8 घंटे काम करते हैं. इवन इन इंडिया वी से यार 9 to 5 का जॉब है. 9 to 5 का जॉब कोई जॉब ही नहीं होता बेसिकली. यू आर ऑलवेज ओवरवर्क्ड. आपको उसका सैलरी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है. सो ये जो है एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर कवर होते हैं ये सब फैक्ट. तो आपका एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से होता है इसके बारे में भी हम दूसरे टॉपिक में चर्चा करेंगे. बट दिस बीइंग specific of sexual harassment at workplace, these are the things you should be aware when you're working in an organization, and knowing what is the duty of that company to protect you if some uncalled incident happens. So taking further from there, I will just talk few more points about okay.
So how do we provide safe working environment, जैसे मैं अभी बात करी थी. तो हर किसी का, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आप लोगों में से जितने लोग वर्क करते हैं, हर किसी का एक नैतिक जिम्मेदारी है, सिर्फ अपने, नॉट टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, बट अदर पीपल यू आर वर्किंग विद, योर को कोलीग्स, योर सीनियर्स, योर जूनियर्स, योर एसोसिएट. तो बहुत सारे लोग को ऐसा होता है कभी कभी. जैसे अभी सर ने, अरुण जी ने एक वीडियो चलाया था हमारे इससे शुरू होने से पहले कि वो बोल रही हैं कि वो मेरे साथ एक अजीब सा बिहेव कर रहे थे, बट उनकी दूसरी साथी ने उनको क्या बोला, हमने कभी उनके बारे में ऐसा कुछ सुना नहीं है. तो आई थिंक यू आर जस्ट थिंकिंग टू मच, बट यू आर द ओनली पर्सन हु कैन जज वेदर what you're feeling is a correct behavior or whether it's happening with you repetitively. So is that person actually trying to make a sexual advance on you? And maybe there are many more people, but they will not come forward because they are scared. जैसे मैंने अभी आप लोगों को explain किया, आपकी इंक्रीमेंट में रुकावट आ सकती है, आपके अगर प्रमोशंस हो रहे हैं उसमें नेगेटिव रिमार्क हो सकता है, या आपको बार बार ह्यूमिलिएट किया जा सकता है. तो बहुत सारी चीजों के डर से बहुत सारे लोग सामने आके नहीं कंप्लेंट फाइल करते हैं. सो इट इज योर मॉरल ड्यूटी, इफ somebody is doing something to any of them, अगर आपको पता है, तो मैंने जैसे आपको बोला, आप अनोनिमसली भी एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. तो यू शुड डेफिनेटली डू दैट. और जो ये कमिटी बनाई जाती है, इट्स कॉल्ड रिड्रेसल कमिटी. रिड्रेसल का मतलब होता है एक ऐसी ऐसी कमिटी बनाई जाती है जो कंप्लेंट जो उनके पास आई उनके साथ प्रॉपरली डील कर सके. और बिकॉज एक एक जो बंदा होता है वो बाहर से होता है, तो उसको इन्फ्लुएंस करना इजी नहीं होता है. और एक सूटेबल एक्शन लिया जाए, उस एक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, और अगर परपेट्रेटर कौन है अगर वो पता चल गया, तो उसको इक्वल चांस दिया जाए उसको अपना साइड रखने का. बट एट द सेम टाइम, इफ ही इज proven that he is guilty, then what legal action can be taken against him by the person who's the one who's the victim, and how the company can help that person to take legal action against that person, the perpetrator. That has to be considered, and that is what redressal committee does. ये जैसे मैंने आपको बोला, हम जब इस रिड्रेसल कमिटी के पास जाते हैं, तो वो लोग हमको जब एक केस डिसाइड हो जाता है, आपको फर्दर टू असिस्ट हाउ यू विल गो इन द कोर्ट्स, हाउ यू विल अप्रोच द कोर्ट, हाउ द कोर्ट फीस विल बी पेड एंड ऑल दैट हैज टू बी टेकन इन कंसिडरेशन. उसमें आपको basically they can assist you. So sorry guys, 1 minute. So how you can assist, how you will be assisted by the company. There's a format for that. You have to fill certain forms, and you will be given some amount by the company as well to pay the legal fees and all that, and how they will assist you by hiring a lawyer from the company as well, because generally in each company they have a legal setup, and these legal setups represent an individual lawyer to represent you on all these cases. और इसके साथ साथ, जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी, हम लोग वहां पे जाके लेक्चर्स देते हैं आफ्टर अबाउट हरासमेंट. ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है जिसमें आप उनको अवेयर कर सकते हैं, पीपल हु आर वर्किंग इन दीज वर्क प्लेसेस, कि कैसे आप अपने राइट्स के लिए लड़िए, कैसे आप इस रिड्रेसल कमिटी के सामने जाइए, और जो विशाखा गाइडलाइंस में आपको प्रोटेक्शन दी गई है आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई हरास कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कैसे एक्शन ले सकते हैं. तो ये जब चीजें होती हैं, इट मेक्स इट इजी फॉर not only the victim to raise her voice, but at the same time, it makes easy for the companies to give an equal and safe working environment for all the genders who have been part of, or is part of, or will be part of their organization. And that is one of the duties of the organizations, to make sure that secure, safe environment, at the same time an equal opportunity of work to both the genders, and not only equal opportunity but equal growth and equal pay has to be paid, so that a fair and an equal society of work environment is created within their own office, organization, and society. And these workplaces and these organizations represent the mirror of the society, how our society thinks and takes.
I will take it further from here, but if any of you would like, Arunji, you can flash the link. If any of them wants to join and ask certain questions, I will be addressing them at the same time. So I was talking, Jai Hind, Jai Bharat. Jai Bharat, Jai Shri Ram. We'll start flashing the questions now from Yes. the public. You can start answering Arunji, them. I will just conclude it in two more points, and then we will take questions, because before I conclude, I want to tell them how it affects your mental health, Absolutely. and which is Thank very you. important point nowadays. Yeah. Yeah. So how sexual harassment basically affects you, that is very important. तो आपको एंग्जाइटी हो जाती है. हम लोग बहुत लोग सुनते हैं कि यार ऑफिस में एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, मैं एंग्शियस हो रहा हूँ, मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ. सो दीज आर द साइंस. यू फील स्ट्रेस्ड, यू फील एंग्शियस, यू फील डिप्रेस्ड. आपको आप सिचुएशन से भागना शुरू कर देते हैं रादर देन एड्रेसिंग. तो यू विल ट्राई टू अवॉइड दैट पर्सन, यू नो. तो आपका एक बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाता है. आप अपने ऊपर, जैसे मैंने बोला, जब आपके ऊपर बार बार आपके काम में और आप में और आपकी कैपेबिलिटीज पे डाउट उठाया जाता है, रेज किया जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम दोनों लूज होने लगते हैं. वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी पे, बिकॉज यू स्टार्ट विड्रॉइंग स्लोली एंड स्लोली. फिजिकल सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया. आप ज्यादातर यू आर वेरी अनहैप्पी एट दैट वर्क प्लेस. आपको हेडेक होता है, यू डोंट एंजॉय योर वर्क, स्लीप प्रॉब्लम्स होना शुरू होती हैं, बिकॉज योर बॉडी इज स्ट्रेस्ड एट दैट वर्क प्लेस, because you're not happy, you're not being appreciated, you know the reason for it basically. So that creates a problem health wise as well. और आप ऑफ कोर्स जब ये सब होगा तो आपका जो पोटेंशियल है वो फुल में कभी भी नहीं निकल के आता. तो आपका जो आप प्रोडक्टिव और जो आप पहले कर सकते थे, जो आपकी कैपेबिलिटीज थी, उन पे क्वेश्चन मार्क आप खुद उठाने लगते हैं कि वेदर आई एम केपेबल, इज दिस पर्सन राइट, that I'm not capable enough, and that's what is happening. I'm not able to do my work. I'm not that great I used to think. So we start questioning, and that is what I feel. When you're a victim, the first thing society or any organization or any person who is a perpetrator does is make you believe that you are less. You are the one who has something which is making him to treat you like that. And that is the worst thing, because if you start believing you're the reason for this yourself, you may be the one who is giving him that kind of signals. क्योंकि हमारे यहाँ नहीं बोलते हैं तुमने कपड़े छोटे पहने थे शायद इसलिए, तुमने ये किया होगा शायद इसलिए, तुमने बात हंस के करी होगी. No, we work with these people. They are family. So how should we give them wrong signals? And what are wrong signals? Talking to someone, laughing with someone, eating with someone, going out with someone, that cannot be a wrong signal. That is what you do with people you work or you grow or you spend time with. So how do certain kind of people take it negatively? So वो उनका कहना ये होता है कि she's very outspoken, she's very outgoing, she's she has this, she has piercing, she wears short clothes, she wears western clothes, or she does this. So is this advance how I judge myself, how I dress, or how I behave at workplace, or how I get and talk to my colleagues? Will that be a parameter to judge my capacity as a person or my caliber? Is that how I will be treated because I am a certain kind of individual, and my work will not be the reason how I will be judged? So these are the strange parameters which is set by our own society and our own people. So rather than questioning these victims and raising aspersions on them, what we need to basically do, उनसे सवाल कीजिए जो ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व है. और जहां तक मैंने नोटिस किया है, अगर कोई इंसान ऐसा है तो ना तो वो पहली बार करता है, ना वो आखिरी बार करता है. उनका एक पैटर्न होता है. बस हम लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि हम उस सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते. हम अपने ऑफिस में बने हुए कमिटीज में नहीं जाना चाहते क्योंकि फिर 10 लोग बातें करेंगे और 10 डिपार्टमेंट्स को पता चलेगा. बट इज दैट द सोल्यूशन? Now I will tell what the solution is, and at the same time, Arunji, you can ask me questions. What we can do, I'll give the answers. What we can do later, and you can take the questions and people as well who want to join. Right. So initially, I'll take the questions which are all in the comment section so that we can, go by. We'll do justice to that also. So there was one question from Arinya ji.
Uh, she asked this: how about the pot shots on looks on live social media and comment section, please? Will that form into any That guidelines or yeah? I know. That's a good question. See, that is why we say there's a public forum. It is a public platform. This is called where social media sexual exploitation. It doesn't fall under the ambit of workplace sexual harassment, but under the ambit of social media harassment. And that's why when I say to people, whenever they say, somebody's troubling me, sending me dirty messages or DMing, go and file a complaint. It's so simple. And you don't need to run from police station to police station. Cyber is for that. Cyber means where cyberspace is used. Insta, any other form of the any other platform rather, where you're being harassed. Go to cybercrime, file a complaint online. They will be taking care of it. And complaints are very easy to make. And cyber law may not be very famous in our country, but because it's a new thing and still a lot of people work on it, so they are very fast. Let me tell you this. I have done it many times myself. They are helpful. They will try to explain you. They will try to help you. At the same time, the actions are taken. So Aranya ji, cyber complaint is the easiest way when you go on the social platform. And one more thing from a personal experience also, and what I heard from few of my friends and colleagues, when it's specifically on a social media and you have the valid proof and evidences, and if you call a women's cell or a women and child cell, if I'm not wrong, like police stations, right? Their Yes. action is very fast. I have seen people reaching the cops, answering your calls and reaching the place within half an hour. This is maybe it could be state, specific, but wherever the states which have known people have done, because I have encouraged people to call because I was not sure how it works, but I have seen some positive things. There could be negatives also, as Sonia ji told, but it's yeah. So that's the first question. Yeah, thank you for that. And then second Thank question you, is Aranya ji. yeah, it's a there probably it's a question like why Vishaka guideline? Why is it named? I told you one of the organization which helped Bhavri Devi to file this case in Supreme Court was the organization which is named after a woman, that is Vishaka. So Vishaka means, even it has a meaning. If you find it, it means for development. So that is why it was named as Vishaka guideline. Thank you very much, Sonia ji and Vidya ji. Actually, it turned out to be excellent question because we need to understand why the name is. Thank you for that. And then Pragya ji has written this question: is there any law for men? I know you Pragya mentioned ji, that it is not gender specific, yeah, but it's gender neutral. So it is not gender specific. It's gender neutral. It is equally applicable to men and women at the workplace. Harassment is not a it's not a gender specific subject. It's a gender neutral subject. So yes, men at workplace who have been sexually exploited can again approach their organization and ask for the committee, which is set up under the same guideline. As I said, Vishaka means development, so development can be both for men and women. yeah, Thank you, maybe the Pragya ji, for name. the question. Thank you, Sonia ji. Maybe the name is very probably feminine. I mean, that's maybe I'm wrong in that. That's why people mistake it as it's for a female. But then again, by my personal experience, we can invite our people also. But in my personal experience, that's very true. One of the things which men at workplace do not approach, for this sexual harassment especially is one is this feeling of mard ko dar nahi hota kind of stuff. They are not supposed to tell that, and they have this social Yeah, because they feel their machoism will be questioned. But absolutely. Arunji, I have seen at many places nowadays, women are at the top positions in many companies, and they find these toy boy young guys in their companies, so they are sexually exploited. So my question is always, how can we make abuse, gender specific? It cannot be. Abuse is always abuse. It can happen to any gender. And if we see that ways, as I was saying, that we will talk about sexual abuse also in some session. So when abuse happens, it's happening on our men, on our boys, on our kids also, even in our schools and colleges. Though you will be
shocked to know in 2020 there was one report where it says it has increased 3.5% more than what is happening to women. Because women को हम इतने सालों से तैयार कर रहे हैं बोलते हुए कि sexual abuse होता है, but this was never taught to our kids, boys. So they're still very scared to come out with it. Absolutely. So I think abuse पे किसको भी नहीं लिखा होता है कि वो boy है या girl है, कौन सा gender है. Yeah, that's actually a great point. At the same time, I have a couple of incidents. Probably I can first we'll concentrate on our, the viewers are the basic thing. Let them, we'll take them in, we'll finish their incidents. Then I'll narrate my incidents on my personal life also. Which actually is a part of the session, right? We need people to come out and talk because Yes. I don't want to stay inside the, behind the back doors, hiding behind my machoism, as you rightly mentioned, right? We need to come out. Okay. Then, thank you for that. And then Miraji has actually, she's a question, a double, is in a double comment, so I can take one by one. So, Miraji writes, I mean, if you can read or I can read it out for you. My friend has booked her estranged spouse under Cybercrime Section 506 for writing derogatory mails and casting aspersions on her chastity to her friends and acquaintances for 4 years, several times, as he was reported a psychopath. How can this FIR be since 2 years no charge sheet is filed? You can directly approach the court, rather, I would say. Not only because this was happening, but there is, when we talk about maligning someone in public, in society, and, defaming her, that is itself a charge which can be directly filed in the court. And defamation is one of the crimes where you don't need to file a charge sheet, or sorry, no, don't need to file a complaint. You can directly approach the court that somebody is trying to malign me and defaming me in the society, and take it as a criminal act and file a complaint against it as well. But as you said, nothing has happened from 2 years. You can directly approach the court of your state. If you need any help, you can get in touch with me. I can help you regarding that. Thank you And so much. of course, one more thing, Meeraji, one of the easiest way, if nothing is happening till now, you can always go to the Women Commission in your state, give the complaint copy to them and say that nothing has happened and it is affecting the person not only mentally, it is as in society, it is also affecting her name, and that is affecting her business or work. So there's not only mental trauma but mental abuse as well, which is happening due to that. So some appropriate action must be taken, and they should push this case further. So Women Commission will be the best thing to do right now if police is not doing anything after filing the charge sheet. Thank you so much, Sonia ji. And I think that makes sense also. Nowadays, people are, escaping, the direct चला गया है, mails चला गया है, आजकल social media, because they can sit anywhere, they are paper tigers, right? Sitting anywhere and trying to do all this. Yeah. So, Venki ji had asked this question. Again, it's in two part. So, what he says, many students face harassment in schools and colleges also. Many teachers misbehave with girls. I would include boys also. Pragya ji rightly mentioned girls and students. I mean, since they're students. Arunji, your what voice can is they do? breaking. Arunji, your voice is cracking. It's breaking. Okay, mine internet. Okay. So, what I'm saying is, I don't want it to be girls alone, it's boys also. Okay, Venki, many students are facing Sorry. harassment. See, I told you at the very beginning that whatever happens in school and colleges and all that, that's called sexual abuse. That is not exploitation, right? Exploitation means when you exploit exchange of something, but there's no exchange. That's abuse. And we are going to discuss this topic in length because it is again a very important topic to be discussed. How school children and in colleges, children face these issues. Misbehavior with the girl, as I said, there's also a committee in school where you can report it. But unfortunately, so that the school's name or college's name is not maligned, they try to hush it up. But at the same time, you can file again a complaint
and children who are very small, that will be covered under the POSCO. We have seen many parents filing the complaints under the POSCO Act nowadays, when it is regarding to the children who are very young at the age, at below 18, they will be taken under the POSCO Act, and above 18 in colleges and all that, they can always go to the Women Commission, as I stated, and they can file a complaint there, or the local police station, where the further action can be taken. And there can be two parties, not only the person who is the abuser, a teacher or a professor, but at the same time the institution on whose part he is, where there needs to be a committee which has to monitor the behavior of the teachers and the pattern, and see the atmosphere of the school has to be maintained, that has to give a report. And if before vetting anybody's background they keep such people, they are answerable. So there will be two parties all the time. One will be the institute, and one will be the person who is the perpetrator. So this is the way you can deal with your abusers. So that's a fair weight point. I'll put in my two bits. If it's, I mean, viewers, please don't get angry. I know you came to listen to Sonia ji, but I'll just give my two bits in this. I know Sonia ji, we have these committees set up in the working place as well as in the some of the most of the working places, I would say. But do you think there are committees set up even in the educational institutes? Because of late we are seeing the rise in them. We are seeing actually a substantial rise in them. And the part is, as an adult, people go and complain. Kids do not know whom to complain to. And that's why they tell it to the parents, and parents go to the police station. They don't approach to these committees. Right? So would it be a safe thing when you put it in the colleges? Or, yeah. See, if something happens to your child at the school or at a college, first thing you need to do is, inform the principal or the higher authorities, because most of the children nowadays, they go to private schools, right? And these private schools, they are funded by certain individuals. They are called the committee members. So you have to write to them and write to the principal. And at the same time, you don't have to wait. You have to, at the same time, go and file a police complaint. Because what happens when these committees and when the principal sees the school's name or the college's name is coming in between, because press tries to cover it immediately. And when they see this coming, they may offer you some money and they will try to hush it up. But at the same time, if you file a police complaint, so it makes sure that the person who either is a teacher or is someone who's a part of the school, if he is doing any such act, he's bought into books. And one more important thing I would like to tell everyone who's watching this is, when school hire these teachers or hire these staff, they have to do a background check of all these teachers or the staff they are hiring, to see if they have a criminal record. So if you don't report this incidents about this particular person or about this particular staff, how will anyone in future know whether the school in which his kid is going, that they're not keeping a rapist, they're not keeping abuser as, in their school. So that is why it becomes your double duty, not only to report it to school but to the police station as well. Absolutely. Thank you so much, Sonia ji. Let's take in the questions, then I'll put in my, because I have, whenever you say something, I have a related incident which has happened. So, but then they're all related to the false charges, which people are misused. So we'll come to that later. Okay. So Freeze Damji has written this question in his own unique way. So, namaskar to everyone. Sonia ji, what's your point of view on Tarun Tejpal's sexual harassment case? The Mapusa, Goa District and Sessions Court on May 21st acquitting him. Good ones. They acquitted him, but unfortunately, the state has challenged it already in High Court. Oh. Yeah. See, very important point, Freeze, and a very good question, rather, I'll say. Tejpal was not one of the small fish. He was a big name. And what did it take? One young small girl to bring his empire down. That shows the courage of that girl. Yes, the legal battle has not been very fruitful. Neither has it given justice to that female now. But at the same time, his whole facade which he created, and he was exploiting these women
She was not the first woman who was exploited, but this one small girl had the courage to bring this man down. So, my observation, if you asked me, on his acquittal is that he will again go to jail because there's enough evidence and there are enough statements which have been recorded by the court and by the committees which were set up to prove that he was one of the person who actually exploited that girl. uh, Freeze, that fortunately आप एक चीज अगर हम लोग ये बोलेंगे, if we say this, that girl, when I say that the victims who suffer this, you're known to them. So this man, Tarun Tejpal, was known to the family of that girl. So there were, unfortunately, like what is happening in Sushant's case, in the same way, though there was so much of pressure put on that girl and the family, but still they fight it out. They fought it out like anything, and they're still on it. Now the court order, state court order, the district court order, as you say, has been challenged by the Goa itself, the state itself, saying that there's enough evidence. And I think that proves that there are certain kind of people who still want to fight it out, even if they have to fight the high and mighty. And that is what we should do. We are fighting in the case of Sushant Singh Rajput as well, high and mighty. So we should keep our fight on. I hope that answers your question, Freeze. Okay, thank you, Sonia ji. So I have other questions. Okay, Pragya ji has taken on question. Sorry guys, if I missed some question, you can post it again. It is. I have seen a lot of my friend males being falsely accused. I hope is there some law to safeguard. Pragyaji, I have very clearly said, as the committee which is formed, it has an independent person. What happens when you accuse someone? That has to be proven. So when you have an independent body, when you have an independent person, part of the committee who is basically uh, addressing this issue and they're validating many things. I have personally seen many complaints which are false. So that's what when I said that it's just at times the revenge, the love saga, failed love saga, and many other reasons due to which false complaints are filed. So for safeguarding them, it is always good to whatever is asked them by the committee members. They have to give all that, and they should be honest in the answers. At the end of the day, nobody wants that their company or person's name should be maligned. And of course, that is the best way to keep yourself straight before the committee if that kind of order is passed or a complaint is made against the person. And one more very important point, it's not just you. When a question is raised on someone, it is his surrounding people also. That's why I said if you feel that someone at your workplace is being harassed and they cannot raise the voice, you raise the voice. At the same time, if you feel someone against whom someone is raising aspersions or filing a complaint, so that complaint, if you feel is false, you should go and report to the committee who are making that report and giving it to the company, saying that no, we have not seen this kind of behavior ever by the person. So maybe this person, the complaint is false. So that is what is our duty as well. Yeah, so thank you so much, Sonia ji, again. And this is from Dhananjay ji. So again, this is one of the topic which I would like to discuss with you because, as I told you, there are some incidents in my personal life as well as with my people whom I know. You know how the big bag corporate world, they call works, right? And any law is made, there are always misuse of this laws, and we have seen it on every case, right? So okay, coming to this, how uh, always we found man targeted and booked in such kind of fake cases. Can you please elaborate for a behavior to be taken by men to protect them himself? So this particular thing, why I'm repeating, because we have seen in even in Facebook and other places, there are some few cases which have happened. There was one specific girl who did something wrong in a traffic light, the famous case of a Sardar young man, right? He actually opposed her something doing something wrong, so she captured in that in the video, and then she shared saying that he tried to sexually harass her,
and that man lost his job, and he was abused and threatened all the way. And then they found out it was a false allegation. And the two girls, so-called Rohtak, I think, no, Rohtak Brayharts is what they projected everywhere. All this left liberals went. For 1 month they even called her for interviews, their sisters, and then they found out it is their business. Sorry to use the word, but it is made, they धंधा बना दिए थे कि कोई टारगेट करो, उसको जबरदस्ती इसमें फंसाओ, like they instigate them to get into trouble and they record it and then file a case. ऐसे बहुत लोगों को, two youngsters who wanted to join an army, right? They were actually they could not join because, as you rightly told, the background verification happens, and they could not give the exams, and then a lot of stuff. And they're all from not very rich family, so I don't. So this also happens. So his question is, how do we protect guys? Yeah. See, as I have been saying, I know there have been many false cases. Not only this, if you see domestic violence, where 498 is a very easy weapon for women, basically. So there have been false cases, and that has been noted by the Supreme Court as well. And at times they have passed the new guidelines every time. So in this case also, as I said earlier, it was more women dominated because men never used to come out with this, that they have been sexually harassed, because machismo was one of the questions. Second question was, if you go out and say I have been sexually abused or this or anything, so are you man enough? That is the second question which people ask. How can a woman harass you, or how can this happen? So there were many reasons, but now, as I said, as we have evolved, as time has changed, there are equal representation even in the committee which has been created by under this Vishaka guidelines in the companies as well. So what I personally feel is behavior. See, your behavior. It is not, if you're harassing someone, as I said, it cannot be the first time and the last time. There's a pattern for it. So people around you, they always observe your behavior. It changes. You can be aggressive, you can be regressive, you can be abuser. Men can give gali, aurat cannot give gali. Women has to look good because she has to be. Jai Hind, Jai Bharat, Ujjwal ji. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, Jai Bharat, Sonia ji. Jai Shri Ram, sir. Jai Shri Ram. Sorry. No problem, sir. Yeah. I was not feeling well. I just overslept. Yeah. You're looking tired, sir. But you can take rest if you're not keeping well. We don't, Yeah, so that's okay. because yeah. So the question is, yes, there's a pattern, but now how we need to safeguard ourselves? The only way is to we should know how should we conduct ourselves. The first thing, to save yourself. And you are right, धनंजय जी, बहुत सारे आदमियों को फंसाया जाता है, बट मैंने अभी वही बोला था, उसका रीजन ये होता है कि जब भी हम सवाल रेज करते हैं किसी के ऊपर भी, एक महिला हो या पुरुष हो, सवाल ये होता है बेसिकली कि क्या ये पर्सन ऐसा है कि नहीं है, क्या ये आदमी ऐसा है कि नहीं है। वो कौन जस्टिफाई कर सकता है? वो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप अपने आप ही उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, आपको अपना कंडक्ट पता है। बट अगर आपके साथ वाले कुलीग पे एक क्वेश्चन रेज कर दिया गया कि क्या ये आदमी ऐसा है जो हरासमेंट करता है, तो जैसे अभी मैंने बोला, जो रिड्रेसल कंपनी के अंदर जो रिड्रेसल कमेटी फॉर्म की जाती है, उसमें नॉट ओनली सिर्फ आपको बुलाया जाएगा, बट उनके साथ काम करने वाले जो अदर कुलीग्स और एसोसिएट होते हैं, उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जाता है, उनसे भी पूछा जाता है। तो अगर आपका कंडक्ट अच्छा है तो वो सब लोग यही बोलेंगे अच्छा है, बट अगर कुछ लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं कि आपका खराब है, तो देयर इज समथिंग, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर द वन हु इज रॉन्ग। वो एक कंक्लूजन पे पूरा टोटलिटी में इवैल्यूएट करने के बाद ही पहुंचा जाता है। Yes, Arun ji. No, I have a continuing question, Dhananjay ji. First of all, स्वागतम. जय भारत, जय श्री राम. जय भारत, जय श्री राम. मैं आता हूँ आपके पास. Before that, I wanted to same incident. मेरे I'll tell the one incident which happened in our life, right?
Right. It was my very close friend. ठीक है, वो subject matter expert था. Till 34, 33 तक शादी नहीं किया because he was brought up by a single mother, not in a very good financial condition. So his mother brought him up. So he was like taking care of her, and she had some health issues. So क्या है, he got, I think, sister कुछ था उसकी शादी के लिए, he arranged everything, है ना. So he didn't get married till 33 years. So उनके what happened is he was little khadus. When I say khadus, you understand, right? He was straightforward. He doesn't have the flowery words. He was brilliant in the subject matter, but he was like this. So usually the corporate world में क्या होता है कि you need to be very smiling all the time. You know, you should say all the stuff. And so the women folks specifically do not did not like him. My colleagues mentioned they did not like him because he never used to give a smile. वो क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर बोलेगा, बस उतना ही. नो इफीज, नो एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर दैट. So what happened is they were waiting for a chance. I think one of the little jumpy among my co-worker, she had actually once went and complained against him, and she had filed a serious charge that when a one-on-one meeting होता है ना, वहां पे इन्होंने मुझे अभद्र शब्द में बुलाया. एंड सोनिया जी, ट्रस्ट मी, विशाखा आप बोल रहे हैं ऑफिस में इतना, आई हैव सीन दैट्स हाउ यू नो हाउ इफेक्टिव दे आर इज step by step. First they called these both, then they called witnesses. It was a very elaborate. I was also called one of the witnesses, and I told him, see, I have never seen him do that, and he will not do it. Then it affected him so much. The guy was maligned, although finally nothing happened. Like, they told that it was not a direct if or no case. They warned each one, and they warned this guy also. But उसके बाद क्या होता है, that girl, she is treated as a hero in the sense a lioness. ठीक है, उसने ले चढ़ी है. That guy, I could see the way he was, मैंने wherever जाता है ना, पीछे बात करने लगे. Although he was a brilliant guy, he had served for 5 years in the company. At last he had to quit. And I was with him for the next 5 months, how to get him a job, because background verification दब्बा आ गया ना उनके ऊपर. And we had to speak to the our HRs and all those things. Seen to that, उसके जो लेटर जाता है ना, the letter of experience, उसमें वो black mark ना आए. We had to request them multiple times so that, because background verification, then he ought to got a job, because he was financially not that great also. ठीक है. So this is one thing which I feel, I don't know how to express this. It is maybe not something to do with it's not a sexual harassment, but it's a harassment, right? And it was converted into a sexual harassment because मेरे को अभद्र शब्द बोला गया and all this stuff. So I wanted to know. Arunji, you got it all wrong. When I said sexual harassment, I said a way abusive word, abusive treatment, a word which denigrates a woman is also a sexual harassment. So, at times what happens in office, we don't realize, because we talk with these people regularly. We at times, slip of tongue, Kelly J. Yeah, in that passion of moment, we may have said something. We didn't mean it, but that woman felt offensive. She must have taken it that way. And that is why this happened. So my only question is, if we remember, we have been watching this Me Too movement, which suddenly started, and there were like many victims, not only women, but men also, who came out that they have been abused. So one of the top cases which happened in our country was J.J. Akbar, who was a leader in BJP, and Malini Ramani, who was working under him when he was one of the top guns, in the industry, media industry. So all these, when these things came, so being at the position where he could have manipulated that, but it suddenly, when his name came out and there was allegations against him, he had to step down so that there's a fair inquiry, fair chance given to the other person to be heard. And recently, 1 month back, when the judgment was passed, it was in favor of Malini Ramani, saying that yes, there have been certain incidences where many other women have come out to report it. Reason being, because they feel he's a powerful man. Nothing can happen to him. But somebody took one initiative to bring it down, all for him. So same in your friend's case, he may not be that kind of person, but
The moment somebody uses a word or a gesture or a certain pattern of addressing someone which they may feel abusive, it amounts to sexual harassment. So that is why I said conduct is very important. Yeah, I agree. Maybe they have included his past also, and then probably pushed in this. And why bol rahe the? See, I know he doesn't behave with people normally. He has this, so that doesn't mean that he's going to abuse them sexually, right? So that, I mean, ये 1 + 1 = 2 ऐसा ये calculate करके चिपका देते हैं, and how much it has affected him, I personally I know because I was with this guy specifically. So yeah, and good point. And then we have one more question from Aranya ji. With all due respect, what can women do if their own lawyers make passes during the most crucial stage of her your court and you have already paid their fee? Oh God. Okay. Yeah. Yes, this is again very common. Not only the clients, maybe the co-workers and co-lawyers, women lawyers have to go through the same. So the best way is that, as I always have been saying from the moment I have connected to this Sushant Singh Rajput movement, that there is bar council where they are registered. You can go there and raise the complaint against the lawyer. See, fee may not be returned to you because once the fee is paid to a lawyer, he may claim that he has given you certain kind of service which you don't have an account of. But at least his behavior will be questioned, and he may not be allowed to practice for certain period of time, 6 months to 1 year. There's certain many other things which can be done. His chance to work in some particular field he will not be given to work in some particular field for a certain period of time. There are many things which can be done by the bar council, but for that you need to approach the bar council of whichever state it is he's registered and raise the issue with them in writing. Thank you. And we have Paritosh here. Paritosh bhai. प्रणाम अरुण सर, प्रणाम सोनिया जी, प्रणाम उज्जवल जी, सभी को प्रणाम। भारत माता की जय। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सबसे पहला सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ बिकॉज अभी मैंने वो स्कूल और कॉलेजेस की बात सुनी, तो मैंने एक चीज जो रियलाइज करी है ना, इवन इट्स स्पेसिफिकली विद मैन, इज दैट कि हमें हमारी डिक्शनरी में सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन और जो भी ये सब टर्म्स है इसके है ही नहीं हमारे दिमाग में। इवन अरुण सर को भी आपने देखा होगा, भी उनको भी वो डिफरेंस थोड़ा सा समझने में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी आप देखोगे जितने भी लोग आएंगे भी ना आदमियों की तरफ से, वो नहीं बता पाएंगे। सो मेरा ये सवाल है आपसे, क्या कोई ऐसा कोई लॉ है या कोई प्रोसीजर है जो कि लेके आया जा रहा है जहाँ की हमें स्कूलों में छोटे बच्चों को, मेन एंड वुमेन, उनको समझाया जा सके कि व्हाट इज एग्जैक्टली सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इन सब के बारे में। बिकॉज जब दोनों जेंडर्स को बचपन से ही सिखाया जाएगा, देन ओनली आई थिंक वो एक सर्टेन हम एक उस स्टैंडर्ड पे पहुंच पाएंगे कि वी नो दैट थिंग कि क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सो मेरा पहला सवाल यही रहेगा सोनिया जी। जी, पारितोष जी, देखिए, इन बिग सिटीज देयर इज वर्क कमिटी इन एवरी स्कूल सेटअप जहाँ पे बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में सिखाया जाता है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम नर्सरी। व्हेन यू गो टू स्कूल, दे हैव दिस कमिटी वेयर एवरी वीक वंस दे आर कॉल्ड, it's more like a class where they teach them in different playful way that what is bad touch, what is good touch, who can touch you and who can touch you which part, and what if a bad, these kids, they don't understand what is exploitation, but if someone tries basically to cross that line of by touching you in your private parts or harassing you in particular way, then that is when you have to report it to not only to school, not only to your teachers, but to parents as well. So yes, this setup is already in many schools, in almost all the schools in cities. I'm sure government has also taken many steps in the government schools, as much as I know that there are teachers who have been particularly brought to schools, and there are seminars conducted, there are classes conducted on this regularly to make children aware of this. And
You guys will be shocked. My son, who's 5 years old, knows this because Nice. they have been taught from nursery in school. They have been told. So once, by mistake, my husband was playing with him and his hand just touched him at the wrong place. He kicked my husband on the face. He was like, you are touching my private parts. That is how children learn. So that is when I say not only education, not only cultural values, all these things have to start from ground root level. एक्चुअली ये जो चीज है ना, हमारी जनरेशन ने कभी देखी नहीं. आई डोंट नो, शायद हमारे शहर में अब होता है या नहीं होता है. आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट आई एम क्वाइट हैप्पी टू सी एटलीस्ट शुरुआत हुई है इस चीज की. यू नो, इट्स वेरी परितोष जी, आपके जनरेशन में हुआ तो मैं, हमारे जनरेशन तो हम देखे भी नहीं है सबको ना. यस सर, समझ लीजिए अपना क्योंकि जनरेशन. उस समय ये बोला जाता था कि जो पुरुष है वो इतना सक्षम है, वो सिर्फ अपनी नहीं, वो बाकियों की भी, अपनी बीवी की भी, अपनी बहन की भी प्रोटेक्शन के काबिल है. बट वो आप एक उसको ड्रीम लैंड में छोड़ दिया कि भैया तुम महारथी हो, तुम्हें सबकी चिंता करनी है, बट उसको ये कभी नहीं सिखाया तुम्हें अपनी भी सुरक्षा करनी है. So the best part is government has taken many measures about it, Arunji, and I have been fortunate enough to go to many government schools and be part of all this awareness. So that is how I know that this is happening. Abhi, in fact, lockdown में भी जो classes होती हैं, we at times once in a week are told to come and talk to the kids. There's a way to talk to kids to understand this. They may not be very direct because they don't understand many things. So you do it in a play manner. So you play some roles, you try to understand with stories, you try to play it with the pluck cards, bad uncle, good uncles, bad touch, good touch. Not only that, approach to teachers, approach to principal, even how to call cops. My son says, I will not call anyone, I'll call the cops directly. So, that is what teachers have taught him. तो ये सब हमारे समाज में तब सुधरेगा जब हम इसको बचपन से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें. Absolutely. परितोष भाई, any other question you have? हाँ जी सर, मैं सेकंड क्वेश्चन से पहले मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्सप्लॉइटेशन कह लो या सेक्सुअल असॉल्ट कह लो, रेप कह लो, आप जो भी कहना चाहो, ये मैं एक्चुअली एक फोटो शूट कंडक्ट करने वाला था वेयर आई वांटेड टू शो, बिकॉज आई वाज वेरी डिप्रेस्ड विद व्हाट हैपेंड विद डॉक्टर प्रियंका रेड्डी. आई होप यू रिमेंबर लास्ट ईयर जब वो इंसिडेंट हुआ था. सो इट गॉट मी इनटू अ डिप्रेशन मोड. So I wanted to, so वो हो नहीं पाया because I didn't get the support from females to be in the part, because it's I think might not be because of the comfort level. So no problem. But what I found was the main thing is that कि जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो ही आपके साथ ये करते हैं, because in men, I don't know about how females do it, because it's not my thing, but if I talk about men, they do it जब उनको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, या फिर एक होता है, एक स्पेसिफिक समय होता है, कोई अकेले में है या समथिंग लाइक दैट, देन ओनली इट हैपेंस. इट डजंट हैपन बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिफाइंग एंड ऑल दैट थिंग. वो सब एक कहने की बात होती है, एंड इट्स ऑल इन फैक्ट. अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये काफी सारी चीजें मिल जाएंगी. तो मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा ये कि इफ आई टॉक अबाउट माय ओन इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, यहाँ पे सबसे ज्यादा है. लाइक इफ यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट कल्चर, वहां पे एक लिमिट तक है जो कि एक्सेस में भी है. लेकिन इफ आई टॉक अबाउट ग्लैमर इंडस्ट्री, वहां तो बिल्कुल ही फाड़ के बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल है. सो व्हाट शुड गवर्नमेंट डू, और क्या इसके सॉल्यूशंस होने चाहिए, बिकॉज इट नीड्स टू स्टॉप इन आवर, क्योंकि मैंने भी वो चीज फेस करी है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ माई लाइफ. ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज इट्स इन आवर इंडस्ट्री, लड़का और लड़कियों सभी बहुत बुरी तरीके से फेस कर रहे हैं. It's not even top tier, lower tier, मतलब आप जो सोचो वहां पे हो रही है. जी पारितोष जी, इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है. आपका सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है. आपकी जो खुद ही जो आपके यहाँ पे लोग हैं, उन्होंने कुछ कमिटीज बना दिए हैं, वो उसमें कोई ऐसी इंक्वायरी नहीं है. आपकी इंडस्ट्री में पहला तो विशाखा गाइडलाइन का ABCD भी लोगों को पता नहीं है, बिकॉज दे नेवर अप्रोच. इससे सबसे इजी होता है, किसी ने कंप्लेन कर दी, किसी ने पैसा दे दिया, पुलिस कंप्लेंट बंद हो गई, खत्म हो गया. और जब पुलिस कंप्लेंट होती है, बिकॉज इट इज समवन हु इज फेमस और हु इज नोन और हु इज फ्रॉम द इंडस्ट्री, दे ट्राई टू हश इट अप. तो पहला मेरा सरकार से ये
रिक्वेस्ट है, नॉट ओनली सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आप लोगों की होती है, बट ये जो छोटे छोटे आप लोगों की इंडस्ट्री में कैमरा मैन हो गया, लाइट मैन हो गया, जो बिहाइंड द सीन होते हैं, दे आर इक्वली एक्सप्लॉयटेड पारितोष. यस यस, फोटोग्राफर्स एंड ऑल जो बिहाइंड द सीन होते हैं, दे आर इक्वली एक्सप्लॉयटेड. तो सबसे तो पहले मेरा ये सवाल है गवर्नमेंट से कि इसको आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बना दीजिए, जिससे ताकि इसमें यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स हो वो भी हमारे लॉ एम्बिट के अंदर आए, वो भी हमारे अदर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे डील होती है वो भी वैसे ही डील हो, उनका भी समाधान वैसे ही हो, उनको भी वैसे ही सुरक्षा मिले, ताकि ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बने. और इसकी वजह से 3 चीजें होगी अगर ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बन गया. एक तो काला धन का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन थोड़ी कम हो जाएगी, और एक क्लीन वर्किंग एटमॉस्फेयर मिल पाएगा हमारी आने वाली जेनरेशन को. So they should take measures about it and do something which should be concrete and which should be helpful for this unorganized sector, as I again refer it to. Absolutely. Oh yes, you are right. मैं बस अब एंड में एक ही लास्ट चीज बोलना चाहूंगा अबाउट नॉट अबाउट दिस थिंग्स, बट मेरे को जानना है ये रेप लॉज हैं, उस पर एक बहुत ही स्पेसिफिक वो है जो कि मुझे बायस्ड का हो या आप वो कह लो कि ओनली मैन कैन डू द रेप. ये जो एक टर्मिनोलॉजी आई थिंक एक लॉ है पूरा. सो मुझे इसका जानना है कि व्हाई इज इट सो, एंड आई फाइंड इट क्वाइट बायस्ड, सिंपल एज दैट. There's a particular reason for it, and I think next session is on that only. We are planning. हम लोगों ने उज्जवल जी और मैंने और अरुण जी ने डिसाइड कर चुके थे इसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए, because it is again a myth. You know, women cannot rape, but if you see physically evident scientifically, only men can rape. So वो myth जो है हम burst करने की कोशिश करेंगे. At the same time, we will try to prove you legally women and men are equal. Judgment आती जाती रहती है, but there are certain factors in each judgment. मैं हमेशा बोलती हूँ judgment कुछ भी हो सकती है, लेकिन factors of the case are equally important. So that has to be considered. So Paritosh, we promise you we are going to one big session on it, because there are many things to be covered in the rape law basically. चलिए, थैंक यू मैम, मेरे को यही सब पूछना था. चलिए, सभी को प्रणाम. हर हर महादेव. जय हिंद. जय हिंद, जय भारत, जय श्री. थैंक यू सो मच. हेलो हेलो, अरिन्या जी, अरिन्या जी आप ही हो ना? हेलो, या नमः आप ही हो ना? नमस्कार. मैं जस्ट वही चेक कर रहा था. मैं जस्ट वही चेक कर रहा था. I know Gurupeda, what you are telling about this. Yeah, welcome. So Arinya ji और प्रियंका जी join किए हैं. Let them answer. Yeah. Jai Hind, Jai Thank Bharat, you Jai all. Shri Ram. Yeah, namaskar to all of you there. I have 2 questions. The first one being of Sushant. Such a big movement, but we do recollect what he was kind of stamped over by Rajiv Masand so many times, that he's a skirt chaser. And Sushant, being very sensitive, had discussed this with Ria and others. So in this whole whatever the grudge and the revenge which we are taking for all these perpetrators and these murderers, Sonia ji, how is it that this part comes out very clearly, because somewhere in the verdict this is also very important. Otherwise it is such a big issue on each one's mental health. And can we take care of this part, because of late the guy moved to Karan Johar's organization, and then he had COVID, and then he's all safe. But can we look at this angle also? He's on ventilator. So okay. that is on the news. But yes, you raised this issue. I will just say a few things. Media industry, which is unorganized sector, as I said, they only work on image. Image of a person is important. So if you raise an issue that, let's take the example that Sushant was at many times addressed at the person who likes to get involved with different women, or a skirt chaser and all. These were thoughts which were floated because it was helping them. Nowhere, anywhere, it has been proven that he was like that. So if you remember last Me Too movement, where that female who was working with him in the movie, which was the last movie of Sushant Singh Rajput, what is his name? Some Sangi is her name. I don't remember the female's name. I'm sorry. Sanjana Sangi. Sanjana Sangi. Yes. Sangi.
So when she raised this issue, when the issue Me Too movement, that he was somehow, she was getting affected by it and all that, and Sushant's name came into picture. Later, she came and denied it, but it had done enough damage to Sushant, not only mentally, but to his image. So it is a propaganda. But if you go in the court, just per saying it doesn't help. You have to prove it. And it has been proven till now that he was not the kind of person what image was portrayed in the media. It was a hidden agenda to traumatize him, get him bogged down, and not let him to raise the way he wanted to rise in the industry. So I don't think just raising anybody question on anybody's character or by calling him names will be enough. It has to be proven in the court. So that is my answer to you, Aranyaji. Yeah, and so that means we all know and everybody knows that he was targeted. So will there be any penalization for such an act, since it's already proven that, Sanjana, she came forward, then she backed out and all that. So will there be someone accountable for all this? Can the verdict include all this, what See, he has gone through? if it is proven that he was mentally getting affected and his family want to take into account all this and file a suit or a case or a complaint against this, of course it will be taken into consideration and they will be penalized. As I said, it can amount from 3 months to 6 months, and some time or some money as well, which is penalty, as well as both of them. So it depends. If the family takes that step, see, first thing is complaint. When I say doing it, and if they come and say in media that okay, it was done and this happened and my brother was named and something like, it is not going to solve the proper problem. It's going to drag it more. Maybe 10 more people will come and say yes, he was like that, because they want this movement to end. But the best way is to go and file a complaint or a case in the court and take the legal route, so that it reaches to a conclusion, rather than going and maligning each one and everyone on the public platforms. Okay, thank you so much. And my next question, Sonia ji, is, I was talking to you earlier, I was asking a question on my sister-in-law. So this lady Perthing, she was totally betrayed by her lawyers, and she had to, at the last stage, she was very young and she did not know what was happening, because she trusted a lawyer, and at the right time, maybe because she was not giving in to those passes and all, it so happened that her own lawyer had actually given away the evidences, the crucial evidences of her husband committing bigamy, and those evidences were never brought to the argument stage, or there's I think there's something like you file a memo of list of something of that, Yes, so list of yes, correct. evidences. So Yes. all that she did not know, because she was naive and young, and she was not in her own maternal state. So these things happen, and at the end, after some 5 years, when she lost her cases and when she realized she was very strong, but she was upset because she was not getting her justice. So she did file her what is that? As you said, the bar council complaint, Yes, not only on yes. her lawyers, on the opponents also, because she had some evidences. But unfortunately, as you say, and all of us know how judiciary works in our country, the bar council, they played again a lot of tricks, and they had actually suppressed that particular complaint for almost 1 year, and later they had sent wrong kind of notices to her address, where both the complaints, she had filed 2 bar council complaints on different lawyers. So out of those complaints, the notice or the order which comes is the same verdict. Say supposing it is 99 and 100, 99 and 100 both had the same order. So this was all later when they diagnosed the whole thing. I think they came to know that the section clerk in the bar council was totally bribed, and he did this mischief, and he was also transferred from that particular state. So at this stage, then the people say, okay, you lose it in
lower court, that is your own state, the lower court, bar council, you can again appeal in high court, which is Delhi. No, just tell me, Sonia ji, how can anybody do all this? A woman gets victimized further throughout, and then she's just a sucker to the system, which is so fraudulent. Just imagine people who are supposed to help in such a noble profession, they become vultures and they target, and then again you have a committee of the same kind of people who would totally, cheat you even in that complaint. So what kind of remedies can you, I'm sorry I'm asking you at No, length, no, I that's got a fine. chance. Every time I wanted to ask you this on other platforms too, but we were not getting time, so I'm giving you a lengthy question. Go ahead, No, Sonia ji, that's thank you fine. so much. So, see, there are two bar councils. One is state bar council. Every state has a bar council, and then there is Bar Council of India. All these bar councils can come under the ambit of Bar Council of India. So, if any of the bar council you feel is not addressing your complaint, so you can always write Bar Council to Bar Council of India. Basically, they will not only take cognizance of it, but they will take certain actions against the people if they have not performed their duties properly. And second, very important point. Whenever you go to these bar councils and you give complaints, you should always address it to the president as well. So you have to keep in CC these presidents of the organizations as well, because they are senior advocates who have certain kind of responsibility and who have been chosen by us only to represent not only the lawyers, but at the same time the clients as well. So these are two things which should be kept in mind by all the people who are into legal battle. Coming to your second point, what can be done? See, passing in advance, or trying to take sexual favors from the clients. It is not a new thing. It has been happening from very long. So it is a criminal act. So as I said, the best thing, not only if you think bar council is not addressing it, go and address it to women commission, go and address it to the police complaint, because at the end of the day, if the lawyer and lawyer fraternity is not replying to you, so the only thing which you have in hand is all these other organizations whom they have to reply. So personally, my advice will be to engaging more other organizations where you can get a support from, specifically Women Commission, which provides a helping hand to all these women in different cases, in different juncture of life, and where you feel that people are failing you, your lawyers are failing you, or other organizations where you have approached are failing you. It is a slow process. We cannot suddenly imagine accept actually magic from them. It must be a slow process, but then it will reach to a conclusion where and how you want to shape it further. That shaping that thing, it will help you in. So that is my Uh, answer to you, Aranyaji. Okay. Another thing in the same context, can it also be marked to the Chief Justice of that state before it goes for a High Court appeal if you have lost it in the lower court in Bar Council complaint? How does that work? And can it Yes, also have a condoned delay of 4 or 5 years because they don't know the system and she has to do it all by herself? there's a limitation of act of 7 years. So yes, she can do it after 4 5 years. And the other thing is, yes, you can address it to the basically Chief Justice of High Court as well. And if he is the member of High Court as well, Bar Association, that will be taken care of, because we have different bar associations: State Bar Association, High Court Bar Association, and Supreme Court Bar Association. So different associations. So if you feel ever that you have been failed by any of the bar association and there is a higher authority in that case, you should always approach them. There's nothing wrong in that. And of course, if Thank you're writing Chief Justice of any state, so you should uh, CC it to Chief Justice of India as well. So it will solve many purposes at the same time. And another last question, Sonia ji. Yes, I please. don't know, I'm putting you to a lot of discomfort, I think, with this question. What can you do when you know clearly that your High Court verdict is deliberately taken three of your cases, and on the very same day, without any adjournment, you are given an order which in all the three you lose and the opponent wins,
and you know your opponent is very strong, has deep pockets, and your lawyer just gives up for whatever reason. So what can one do? I mean, it almost, you would like to complain to the Chief Justice and to the others at the injustice what has happened. So in our country, especially, these things have been happening to not one but many. It's always the accused gets away scot free, the victim gets more victimized, as I said. So can you please advise, because I value your advice very much. You speak very well and give me a lot of facts. Thank you. Thank you. Aranya ji, my question to you is it a SB order or is it a DB order? That depends. So is it a single bench order or a double bench order? It's a single bench order. So you can always challenge it in High Court again before DB, double bench. All that has not happened in that case. So it finally, they took it to the Supreme Court and she won it over there. Okay. She won all the three cases. That's what I'm saying. It was such a open, deliberate thing that the opponent thinks, okay, she cannot afford to go to the Supreme Court, and they played it, and it was very clear that everything was managed. How could on a single day 3 orders come into existence in their favor when it was totally at the lower court? It was one of the cases, she won it, and there were a lot of things like ex parte orders they managed and all that by not giving notices. So finally they even went to the extent of trying to just get rid of this in High Court so that nobody can approach Supreme Court, and that's it. So in such a case, you win in Supreme Court, and then can you still complain about the kind of fraudulent thing which has happened? You can always pursue those complaints against the lawyers. That has nothing to do with the case, because the case has already been tackled in the Supreme Court. But you can always tackle the other complaints which have you filed regarding not the lawyer, Sonia ji, not the lawyer. It's against the single bench judge. No, now you cannot go against the single bench. That would have been dealt in double bench. But now you have gone to Supreme Court and already won. So that order has been suppressed already by the Supreme Court. So you cannot do anything about it. But against the lawyers who have cheated you, against the Bar Council where the complaint was not addressed, those issues you can still deal with, basically. All right. Thank you so much. God bless you. Thank you. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shri Ram. Thank you, Aranya ji. Jai Hind, Jai Bharat to all of you. Thanks for all that patience and so much of time. Have a wonderful evening. Thank you. Bye-bye. You too. Namaste, Priyanka ji. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shri Ram. Jai Bharat, Jai Shri Ram. नमस्ते एवरीवन। सोनिया जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये एक अच्छा टॉपिक आपने कवर किया है, एंड स्पेशली इफ एडवोकेट covers this topic, then it actually gives a very different impact. And that's it, मैं यही बोलना चाहती थी। और कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, चाहे वेदर इट इज विद अ मेल और अ फीमेल, कंप्लेन तो करना ही चाहिए, लाइक बिकॉज if it happens, see, we are now mature, so we can take it in a light way, but अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही है और हम उसे लाइटली ले रहे हैं, तो हम उसे एक और कदम आगे बढ़ने का चांस दे रहे हैं। हो सकता है कि वो आगे किसी और के साथ भी करे। तो और जैसे कि ईव टीजिंग्स वगैरह भी होती हैं, वो तभी ज्यादा बढ़ती हैं जब हम उनको नहीं स्टॉप करते हैं। सिमिलरली, लाइक व्हेन आई वेंट through sexual harassment in childhood, and that was for a very long duration, 6-7 years, so it gives a very negative impact on your personality, very negative impact। आप उस चीज से कभी निकल नहीं पाते और आपको पता भी नहीं होता है कि आपके पर्सनालिटी में ये सब क्या हो रहा है। You look normal, you look really normal, because like I am from a very small city and now I am 35, so at that time we did not had sex education also in our schools, so we did not know what is good touch, bad touch,
and like there were certain issues in my house also. There was domestic violence, so I was not able to open up there also. So it kept on happening for several years, like near about 7 to 8 years. तो उसका जो इम्पैक्ट था वो मेरी पर्सनालिटी पे इतना ज्यादा हुआ कि आई डिड नॉट हैड एनी फ्रेंड्स. आई स्टॉप्ड मेकिंग फ्रेंड्स. आई नेवर यूज टू गो आउट. मैं बाहर जाना पसंद नहीं करती थी. एंड इतने ज्यादा आप ओवर सेंसिटिव हो जाते हो कि मतलब किसी और के साथ भी कुछ छोटा मोटा हो रहा है तो यू ऑल ऑफ सडन स्टार्ट क्राइंग. यू कैन नॉट स्टॉप योर क्राइंग बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर सेल्फ. और काउंसलिंग भी है अभी तो बड़े शहरों में ही है. छोटे शहरों में काउंसलिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, अभी भी नहीं होती है. देर आर नो दैट मच ऑफ गुड टच बैड टच सेशंस ऑल्सो. इवन विलेजेस में तो अभी गवर्नमेंट ने तो फिर भी स्टार्ट कराया है. तो बट सो दिस गिव्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट. लाइक मेरे को अब समझ आता है आफ्टर 35 years आई कम टू नो कि ये जो सब मेरे साथ होता था, ऑल ऑफ सडन रो देना और रात रात में एकदम पैनिक अटैक्स आना. अगर कोई ऐसा मूवी में सीन देख लिया है तो मैं एकदम पैनिक हो जाती थी और मैं ऑलमोस्ट आई यूज टू क्राई लाइक nobody can control me. Nobody can stop me, and I used to cry for hours and hours. And then I used to go for job and तो मुझे लोग बता देते थे मैम कुछ प्रॉब्लम हुआ है आज, आपका तबीयत ठीक नहीं है, बिकॉज वो फेस पे दिख जाता है. तो ये जो इमोशनल टर्बुलेंसेस हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, then I started reading about sexual harassment and its after effects. देन आई केम टू नो कि ये सब उस वजह से हो रहा है जो मेरे साथ बचपन में हुआ था इतने सालों तक. प्रियंका जी, हालांकि see, when we are sexually abused and when it's not addressed, तो हमारे दिमाग पे एक इफेक्ट हो जाता है उस चीज का. तो ये जो आप बोल रही हैं उसके आफ्टर मैथ इफेक्ट्स ये होते हैं कि हम डरने लग जाते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है. मैंने बोला था कि विक्टिम शेमिंग बहुत इजी हो जाती है, हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं. एंड अभी की जनरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है. व्हेन वन दे कम टू द पेरेंट्स दे टेल दिस, दे मे लिसन टू देम. बट प्रीवियस जनरेशन इफ यू गो तो द टैबू की सोसाइटी में पता चल जाएगा, द प्रॉब्लम की अपनी फैमिली वाले रिलेटिव्स इन्वॉल्व हैं या अपने घर में हुआ है, माँ बाप पे ब्लेम आ जाएगा, रिलेटिव्स पे ब्लेम आ जाएगा, तो सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा, बेटी का नाम खराब हो जाएगा, शादी कौन करेगा. ये सब इशू के साथ हम डील करते थे. बट हमने कभी ये डील नहीं करना सीखा कि वो बच्चा जिसके साथ ये हुआ है वो कैसे इसमें से उभरेगा, वो कैसे इसमें से निकलेगा. तो हमने कभी वो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश ही नहीं की. काउंसलिंग तो बहुत दूर की बात है. But now coming to this generation, we not only have counselors in schools, but parents are quite open to listen. And अगर आप एक 2020 तो नहीं बोलूंगी, 2017 onwards आप देखेंगे तो there are many sexual complaints against the children which have been filed by the parents against their own relatives. There's an increase in that because they are ready to listen, they understand. Because I'm sure, Priyanka ji, when you enter into a matrimonial bliss, you have a daughter, so you will be more protective about her. Or you have a son, you will be more protective about her because you have faced something and you are aware it happens. At the same time, you know it has always been hushed. So you will tell your children more about it. So that awareness is created by us. So my point is to all the people, sexual abuse, sexual violence, sexual harassment is a basically very heinous crime. It just not only affects the person it doesn't affect the person for a particular period. It affects them for lifetime. The trauma is with them for lifetime. They get these thoughts. कुछ चीजें मैम ऐसी हैं जो मैं देखकर पहचान जाती हूँ. लाइक हमारा जो जनरेशन है अभी जो 21 years के हैं,
उनका तो चलो they know, and I have seen that this generation is very expressive, but I have seen lot of men also who are in age of 35-40. they sir आप कुछ कह रहे हैं अरुण सर? No, no, no. Sorry, I continue. I just wanted to put in that word. आपने जब बोले थे सोनिया जी और प्रियंका जी, आपने जब बोल रहे थे कि it affects the person, it also affects the entire family. मैं जानता हूँ एक फैमिली को जिनके they got one son, okay? अभी he is around 43-44. अभी तक शादी नहीं किया है. He has got a very different behavior, I could say that, and because सॉरी उन्होंने मुझे शेयर किया है, आई हैव शेयर्ड विथ मी ऑन द अमाउंट ऑफ abuses he had undergone, right? And for years, Priyanka ji, आप जो बोल रहे थे, I can validate he had undergone lot of and how much he had faced, and अभी तक उसके the relationships or interpersonal relationship, even with his own parents, he behaves differently. So there are very few people he speaks to. I can say myself fortunate that he speaks to me and few other people also. But so I can understand it. It affects the entire family. पूरे family को affect होता है वो. So yeah, it carry on. affects, you can't imagine sir, you can't imagine the after effects. आप अकेले नहीं रहना चाहते हो, आप लोगों से बात करना चाहते हो, पर अगर कोई पास आता है, ज्यादा प्यार दिखा देता है, तो आपको लगता है ये मुझे ज्यादा प्यार क्यों दिखा रहा है? कोई गुस्सा कर देता है तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है. You have bundle of questions and there is a storm every time in your mind कि मैं क्या हूं और मेरे साथ क्यों हुआ. ये क्वेश्चन 24 आवर्स आप फाइट करते हो, 24 आवर्स आप फाइट करते हो इस क्वेश्चन से. और ये मैं एक एग्जांपल दे रही थी. देयर वाज अ कलीग, ही वाज नियर अबाउट 34-35 years old in one of my organization. So he also had gone through sexual assault in childhood for very long time. तो वो भी बहुत सेंसिटिव था. उसको मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग बहुत ज्यादा. अगर आप उनको किसी बहुत ज्यादा किसी रिपोर्ट पे कंसंट्रेट करने को बोलोगे, दे विल नॉट बी एबल टू, वो मिस्टेक्स कर देते हैं. और ऑल ऑफ सडन मेमोरी लॉस, मतलब उनका जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो बहुत गहराई वाला, तो आप बीच में ही जोन आउट हो जाते हो. ये उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सेक्सुअल अब्यूज हुए हैं सालों तक. अब वो रिपोर्ट में इतनी मिस्टेक्स करता था, उसको बॉस से डांट पड़ता था. तो ही यूज्ड टू कम एंड शेयर मी. उसके बात करने के तरीके से, उसके रोने के तरीके से और उसके बिहेवियर से मैं पहचान गई दैट ही वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड. आई आस्क्ड हिम, आपके साथ कुछ गलत हुआ है क्या? ही सेड, हाँ मेरे साथ बचपन में ऐसा 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 हुआ है. The effect of sexual abuse is so it is so harmful. It affects your nervous system, it affects your memory also. लोग इन चीजों को नहीं समझते. आप हार्मोनल इम्बैलेंस, आप इलाज कराते कराते थक जाओगे, लेकिन आपको हार्मोनल इम्बैलेंस कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उस हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है आपका स्ट्रेस. और उस स्ट्रेस की जो वजह है, उसकी वजह आपके चाइल्डहुड में है. दैट यू आर सो इमोशनल फॉर एवरीथिंग कि आप हर चीज को स्ट्रेस में ले लेते हो. Priyanka, हर चीज I'm को sorry आप to डाल देते हो. intervene. I'm sorry to intervene here. See, I will bring 3 points here which are very important. आपने जो point raise किए बहुत important है. But मेरा एक मानना है प्रियंका, जब ऐसा it is in the papers, you can see it, you can find it, you can read it. जितने भी हमारे देश में या विदेशों में भी आप देखेंगे, जितने भी ये सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, वायलेंस होती है, अब्यूजेस होते हैं, इसमें 85% से ज्यादा आपके वही लोग इन्वॉल्व होते हैं जो आपके आसपास, आपके क्लोज होते हैं. एंड Absolutely. they are involved. But now the point is one, abuse कितने लोगों के साथ होता है प्रियंका? More than 87%. तो 2019 में रिपोर्ट आई थी, more than 87%. अब बोला कि ड्यूरिंग द कोविड इट हैज इंक्रीज, तो चलिए हम हाइपोथेटिकली लेते हैं 90% पीपल के साथ होता है अब्यूज. द थिंग इज हाउ यू आर इफेक्टेड, आई अंडरस्टैंड, बट हाउ we can overcome it is the journey we have to follow.
We cannot sit and harm ourselves every day thinking about it. So overcoming it should be the solution. As you said, यहाँ पे मैम ये तभी तो मैं ओवरकम ही किया है मैंने. अदरवाइज आई थॉट सेवरल टाइम्स टू फिनिश माय लाइफ इट. और उसके बाद भी एक्चुअली आप जब किसी को ये चीजें बताते हो ना, तो लॉट ऑफ टाइम्स यू आर नॉट लकी इनफ के आप जिसको बता रहे हो वो भी आपको सही जज करेगा या वो आपका फायदा नहीं उठाना चाहेगा. तो ऐसे भी कई बार चांसेस हुए हैं. मेरा आपसे एक क्वेश्चन है. आप बोल रही हैं आपके साथ ये हुआ है. आई फील सॉरी फॉर यू. आपको क्या पता मेरे साथ हुआ है कि नहीं? हैव आई बीन ऑन द सेम बोट? या हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनमें से कितने लोगों के साथ हुआ है कि नहीं? तो आपने जो ये बोला कि मैं अपनी लाइफ खत्म करना चाहती थी, दैट इज नॉट द आंसर आई वांटेड फ्रॉम यू. द आंसर आई वांटेड फ्रॉम यू इज I fought it back. I came and I'm standing before you guys. That is my achievement. I am here before you. सोनिया जी चेंजेस हुए. उसी के मैं वही बाद कह रही हूँ चेंजेस प्रियंका हुए जी, बिकॉज मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ. मैं कहती हूँ मैं I have been brought up in very 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 protective environment, but I have faced it at certain point of time, but that doesn't bog me down. So when I speak for other women because they cannot speak for themselves. But you are one of the voice who should not only speak for yourself but for other women, because you represent that person who has overcome it. So go and fight for all those people. Go and fight for yourself, but not on the cost of self pity. हमें self pity नहीं चाहिए. हम वो वॉरियर्स हैं जो लड़के जीते हैं और लड़के जीत के लोगों के सामने खड़े हैं. Prove that to people by showing your self worth. That is my thing. And अगर आप ये जिंदगी भर सोचती रही है ना मैं विक्टिम हूँ, मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बताती हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों के साथ डील करती हूँ. इंडिया में हर दूसरे घर में लड़की या लड़के के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, आप माने या ना माने. ये सही है मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो आप. बट आप ये इसलिए नहीं एक्सेप्ट करती, किसी के साथ ज्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है. ट्रॉमा भी वैसा ही होता है, किसी के साथ ज्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है. बट प्रियंका, you being in this movement is representation of that woman. So I want to see that Priyanka who can. मैम तभी तो मैंने केस फाइल किया. That's what I'm saying. That is great. That is great हाँ. thing. प्रियंका, वो वहां खत्म हो जाना चाहिए. अगर आपका दर्द आपको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि आपको दर्द हुआ है, वो उनके लिए बेनिफिशियल हो, तो आप अभी भी कहीं पे कमजोर है. आपकी कमजोरी कहीं पे भी नहीं है. आप तो इतनी स्ट्रांग है. तो आई विल प्राउडली से आई नो प्रियंका बिकॉज शी हैज फॉट थ्रू इट. आई वांट टू नो दैट प्रियंका. Be the voice of other people. आई न्यू कि वो मेरे साथ बचपन में हुआ है, मेरे पास प्रूफ नहीं होंगे. मुझे ये पता था कि मेरे पास प्रूफ नहीं होंगे, बट तब भी मैंने केस फाइल किया उस बंदे पे बिकॉज मुझे. प्रियंका, आपको एक चीज बताती हूँ ना, ये मी टू मूवमेंट जो है ना, ये इसीलिए है. जब आपने ऐसा कोई भी सेक्सुअल चार्ज लगा दिया ना किसी पे, the onus lies on that person to prove what you are claiming is true or false. It has nothing to do with you. So I was the first person who told you go and file a case. लोग या बोल देते हैं लोग कि अरे रहने दो, छोड़ दो, भूल जाओ, ये तो बचपन की बात हो गई. बट द आफ्टर इफेक्ट्स दैट आई हैव गॉन थ्रू, वो एक सजा से कम नहीं था. वो एक सजा से कम नहीं था क्योंकि क्या होता है मैम कि कई बार मतलब ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि अगर हम ये चीज ऐसी है कि हम ज्यादा नहीं छुपा सकते, ये आपको मेंटली स्ट्रेस करता है. और जैसा मैंने आपको बताया, छोटे सिटीज में काउंसलिंग भी नहीं होती है प्रॉपरली. आप किसी और को भी बताते हैं ना, कई बार तो वो भी मिसयूज करना चाहते हैं. दे ऑल्सो ट्राई टू यू नो. तो मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि आपके, और मैम वो विक्टिम फेज तो खैर मैं कभी रही नहीं उस फेज में, बिकॉज उसके बाद भी मेरे कंपनी में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो मैंने टाइम टू टाइम बताई है अपने ऑर्गेनाइजेशन में. आई हैव ऑलवेज मार्क्ड अ मेल बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू, सो आई मेड श्योर कि कोई और ना जाए इन सब चीजों से. और सेकेंड थिंग ये होती है कि बट हमें
उन लोगों को बताना चाहिए जो इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। मैं बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट, तो एक स्टॉर्म चलता रहता है आप में कि यार ये सरदर्द खत्म हो, किसी को बता दें, किसी को बता दें, किसी को बता दें। प्रियंका देखिए, आप बट यहाँ उन्हें पे आई बताइए हैं जो तो समझे। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी। एक तो सेल्फ पिटी करना कभी भी किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। दूसरा मेरा कहना ये है कि देखिए, जैसे मैंने अभी बोला, हम सब कहीं ना कहीं विक्टिमाइज हुए हैं, और जब हम विक्टिमाइज होते हैं ना, तो वो जो एक एक चोट रह जाती है ना, छुपी हुई चोट, वो हील करने में हम अपनी मदद खुद ही कर सकते हैं। अगर आप प्रियंका ये डर के मारे कि मैं इसको बताऊंगी वो उसको यूज करेगा, वो that should be on them, that proves their character, not your. You had the faith to tell, that's why you told it. How the other person uses it or what he does with it is his call. And the second time, when you speak with people, don't be scared they will be judgmental, because we have always been such kind of people who like judging others. हम खुद चाहे वही काम करेंगे, बट जब हमको ये पता चलेगा दूसरा इंसान कर रहा है तो हम जजमेंटल हो जाते हैं। तो प्रियंका, थोड़ा जजमेंटल होना कम हो जाइए, बिकॉज आपको शायद अपना हीलिंग में मदद मिलेगा। एंड आई एम टेलिंग इट ऑन ओपन प्लेटफॉर्म, आई डू काउंसलिंग। इफ यू एवर नीड, आई विल डू इट फ्री फॉर यू whenever you want. How much I can help you heal, I will always try to help. That is my open offer. श्योर मैम, श्योर। हाँ, हो सकता है हो गए हों जजमेंटल, लेकिन विक्टिम फेज से तो मैं निकल चुकी हूँ अभी, बिकॉज तभी मैं इतना खड़ा होके बोलना शुरू कर पाई हूँ। अगर विक्टिम फेज में होती तो मैं शायद जाके अकेले उसकी कंप्लेन नहीं करके आती, गोइंग अगेंस्ट माय पेरेंट्स, बिकॉज दे नेवर सपोर्टेड मी। उनको लगा कि अरे इतने सालों बाद क्यों बता रही हो, रहने दो, सॉर्ट ऑफ। तो विक्टिम फेज तो अगर होता मैम, तो फिर तो बिकॉज क्या था कि द लॉयर वाज इन माय सपोर्ट, बट बाकी लोग नहीं थे मेरे सपोर्ट में। तो अगर विक्टिम फेज, बिकॉज मैंने कहीं पर भी अब जो अपनी कंप्लेंट फाइल की है उसमें कहीं पर भी मैंने पैसा वगैरह कुछ भी डिमांड नहीं किया है। मैंने सीधा ये बोला है कि मेरे को एक चीज चाहिए, एंड दैट इज ओनली थिंग, दैट इज जस्टिस। तो Yes, Priyanka, you विक्टिम need तो मैम closure. नहीं You हूँ need, मैं। no, I never said victim. I said fighter. I have been maintaining that Yeah. you are the voice. What I'm saying is you need closure. So you get closure when you self heal yourself. And for self healing, if और you मैम need मैं my ये guidance, आपके प्लेटफॉर्म पे इसीलिए आई हूँ ये बताने कि इट वाज द टॉपिक, क्योंकि ये yes, टॉपिक मेरे को बहुत क्लोज है, इट्स वेरी क्लोज टू मी, एंड आई विल बी स्पीकिंग फॉर इट wherever I'll get the opportunity, because these things, क्योंकि आज भी मैम जो बड़े सिटीज हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं सेक्सुअल हरासमेंट और असॉल्ट के, वहीं पे पता होते हैं। छोटे शहरों में तो लोगों को पता भी नहीं होता है, अरे ये तो रो रहा है, ऐसे ही है, ये तो थोड़ा इमोशनल है, डिस्टर्ब रहता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट पीपल एंड इवन पेरेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड कि भाई ये छुप छुप के क्यों रो रहा है, क्या कारण है कि ये छुप छुप के रो रहा है, क्यों नहीं ये बाहर खेलने जाता है, या एक पर्टिकुलर पर्सन के घर में आने से ये डर क्यों जाता है। नोबडी इज इंटरेस्टेड। right. That is why तो I ये was इतनी telling छोटी when we छोटी। were talking about all this, these are the withdrawal symptoms from the society and from the family. When you should notice something is wrong with your kid and how you can approach and talk to him. And that is या when तो you should take assistance, because जैसे आप अभी देख रहे हैं, प्रियंका is a very strong woman, but still she has not healed. तो वो process of healing में only अगर आप इसको शुरू से शुरू करेंगे, it becomes easy for not only trusting other people, but only being part of those people among, we all face, we get stabbed, backstabbed, we get cheated, we have to go, everybody has to go through this journey, but they become more cautious. They withdraw from people. They don't emotionally invest in people. They feel cheated on small things. So these are the things where we can help each other basically, in this movement also, and generally also, by listening to others. Be one person who can be patient and listen to others, and
just listening can do miracles for other people at times, because they don't have people to speak to. They don't have people whom they can say things which they never, could speak to anyone, thinking that they will be judged. So healing is very important, Priyanka. And as I said, you can anytime and get in touch with me, and I will try to help as much as I can. मैम मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला कि देन आई बिकेम सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर, और उसके बाद में मैं स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाने लगी। बिकॉज एक तो ये होता है कि आप जस्ट एक ट्रेनिंग दे रहे हो, बट जब आप खुद इससे निकले होते हो तो आपको सिम्टम्स पता होते हैं कि क्या आपका बच्चा करता है, क्या क्या उसके साथ होता है। मतलब पूरा घर फेस्टिवल मना रहा है लेकिन वो अकेले कोने में बैठा होगा, राइट। और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो वो हम क्लियरली बच्चों को बता सकते हैं। और कई सारे मेरे सामने तो ऐसे इंसिडेंसेस भी आए कि लोगों ने बोला कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के इतने बुरे आफ्टर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इस चीज ने मुझे ज्यादा हील किया जब मैंने अपनी चीजें शेयर की और मैंने दूसरों को एजुकेट किया, स्कूल्स में जाकर एजुकेट किया, सोसाइटी में एजुकेट किया, तब मुझे ज्यादा मतलब मैं हील हुई। Correct. Yeah, That's if great, I can, Priyanka, and keep healing yourself. That is the best thing, and then you can become the voice of मैंने many तो people like you are at present. मैंने तो इसे ऑप्शन भी दिया है, आइडिया भी दिया है, एनसीडब्ल्यू, एनएचआरसी और हरीश साल्वे। गुरु तुम तो ऐसे बोलते हो, हरीश साल्वे बस बैठा होगा, हम लोगों के ही फोन कब आएंगे। बट हाँ, बाकी सब सोर्सेस बहुत सही है, और hey, गुरु जी के आइडिया गुरु जी जैसे ही होते हैं, महान। प्रणाम गुरु। hey, बट hey, सोनिया प्रियंका जी जी, अभी भी लॉज प्रियंका में जी, चेंजेस आना बहुत जरूरी है। एंड absolutely. एक जो चीज मैंने नोटिस की है, व्हेन यू गो टू कंप्लेन सच थिंग्स, people should be, especially the administration, whether we talk about police station, whether we talk about lawyers, they have to be very very sensitive. They need to be taught how to be sensitive about such issues. अच्छा हो गया, ओके, their behavior is like that. अच्छा, ओके, मतलब भाई किसी के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो ये अच्छा ओके है। ये एटीट्यूड अभी भी है। यस सर। Yeah, a couple of things which I wanted to put in. Probably Shifuji wanted to actually pitch in this time also, but then I'll put in my thoughts in this. Priyanka ji, as Sonia ji rightly told, and many of our people who are watching it are also standing by you. They all agree that you are a very strong woman. Okay, when I'm saying not a woman, specifically strong human, राइट। ये सोल जब स्कार होता है ना, उससे बाहर निकलना, आई ऑल्सो नो पर्सनली, मीन ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट, एज सोनिया जी राइटली मेंशन, एवरीबडी हैज गॉन थ्रू द फेसेस, राइट। और उससे बाहर निकलना, और निकल के बाहर आके इसके, आई मीन सिंस यू टोल्ड दैट, आई वाज वन ऑफ माय थॉट इज दिस, सिंस यू नो अबाउट ऑल दिस, यू हैव स्टडीड इट, बेसिकली सब कुछ स्टडी किए हैं, तो यू वुड बी द बेस्ट पर्सन टू बी अ गाइड और अ काउंसलर फॉर अदर्स, right? On the what Sonia ji was mentioning about all this laws which is there, and we need committees. मेरा वही क्वेश्चन था सोनिया जी से, we have to have lot of committees. ठीक है, अभी बहुत सारी सेक्टर्स है वहां पे कमिटी नहीं है। जब जैसे अभी परितोष जी भाई आए थे, he was also telling about some unorganized sectors. So people can actually, who knows about this, just theoretical knowledge से खत्म नहीं होता. People will not be very emotionally attached. है ना, जो उनसे गुजरे हैं, दे विल बी मोर इमोशनली, एंड एज यू राइटली टोल्ड, अभी एडवोकेट्स और लॉयर्स जो बात सुनते हैं ना, हाँ ठीक है बोल के जाओ, दैट कैन ऑफ एटीट्यूड कम्स इन बिकॉज दे हैव नॉट फेस्ड इट, right? I'm not saying everybody should face There it, are but at ground level there are so many challenges. Like if you are saying that girl or a sufferer to write an application और अच्छा बैठ जाओ इधर और लिखो, I agree, तो ma, that they is what don't I'm saying, help. that is what I'm या दे saying, डोंट हेल्प। अभी उस समय में उसका मेंटल स्टेटस क्या है, वो प्रॉपरली लिख पाएगी नहीं लिख right, पाएगी, फिर आप तो बोल दोगे कि इसमें कमी रह गई। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। प्रियंका जी इसलिए बोल रहे हैं, इश्यूज है बहुत, वी नो, वी रिकॉग्नाइज देयर आर प्लेंटी ऑफ इश्यूज देयर, बट इसका सॉल्यूशंस क्या है, इज व्हाट सोनिया जी हैड टोल्ड लॉट ऑफ स्टफ, which I also feel we should come in with lot of solutions. एक solution मेरे छोटे से जो
सोच है उससे निकाल सकते हैं कि people who understand all this concept, who are actually what you call compassionate, as well as who are who knows about all this, they should actually get involved in all, this kind of stuff as a guidance or a help. ठीक है ना? जब अब सोनिया जी is told, she openly told that she is ready to do all this stuff. Like I don't know how, in what capacity I can do, because I don't know much about law. ठीक है? But I can at least provide this groundwork. जो भी कर सकते हैं मेरे से कर सकता हूँ. So we can all form this to help all these people. That is what I'm saying. My simple submission is this, because of solution के लिए we start thinking about the next step. And I saw a couple of hands being raised. I don't know, but then Priyanka ji, if your network is all right, and if I'm you're leaving. Yeah, okay, I'm leaving. yeah. Thank you so much. Thank you, Priyanka ji, so much, and I Thank really you. Priyanka, appreciate. Jai Hind, Priyanka, Jai Bharat. can you Yeah, wait one Thank you, minute? Sonia ji. Nagendra ji, Priyanka, Nagendra Thank ji is you. there. Nagendra is can there. you wait 1 minute? Please. Just give me Sure. one minute. Acha, you see, this Priyanka is a beautiful girl, and he has awakened us. She has awakened us. Okay, she has awakened us in a big way. I really want to thank her, because what Shushant felt, and Sonia ji on Fogart's channel, if you remember, you were the first to raise child issue, women's issue, and I told you that this is the big change that you brought about. First to speak on this. And today I feel whatever is being done is done by Shushant. And Priyanka has been brought by Shushant. She is no ordinary girl. She deserves a lot of means not pity. She deserves a lot of our respect. Okay, she can speak today. That's why we know what's happening, because personally I have not experienced this in real life. When she told, my I was just shaken like anything to my core when I heard her stories. Initially I also wanted to stay, why are you speaking publicly about you? But then I realized her speaking is important, because it opens our eyes. Okay, the way she is speaking, and today I feel her very strength is, I don't want to say that, but the situation she went through is her strength today. And I believe we should, she deserves a very good work. Sonia ji, what I mean to tell, she deserves a very good job, in a government sector or whatever it is, on such platform where where she can speak of such issues on women's, say the National Commission for Women. She deserves a seat, because she can speak, she is eloquent, and she knows the pain, each pain that a person goes through when he or she undergoes such issues. Okay, I am a yoga teacher, I can understand what pain her nervous system has gone through. Okay, I can understand that, because I have also gone through just job losses, and I know what pain it causes on your nervous system. What thought she has gone through immensely, her whole nervous system might have been, in addition to her abdominal regions. Okay, that that pain and the nervous system pain and the whole body trauma that she has gone through. But yes, I will tell her, don't do yoga, but at least meditation. In the beginning it will be very difficult for her, but gradually it will work as a healing. As Sonia ji said, if I can help her in that regard, I'll try, if she wishes. But if she wishes, not because she looks to my she is like my sister, and I am really touched by her case. She's special, she's just special, nothing like that. She came on our show, we should be thankful to her. But Yeah. Right. she deserves something Nagendra ji, beautiful in what life. She I deserves liked something what you beautiful in life. I She liked deserves what you something said. really beautiful in Yes, life. Yeah. I would like to say one thing. So, Sonia ji, 1 minute. Empowering. Sonia ji, Arunji, 1 minute. 1 second. Otherwise, Sorry, a sorry, sorry. thought will skip my mind. My mind is very fragile when I listen to such things. Yeah. I would like to say we have to create an ecosystem not only for Priyanka, but many like Priyanka. Yeah. Absolutely. She deserves not only our respect, she deserves our love. The Yeah. love will heal many things. I can understand the pain she has been through, but at the same time, the only way to heal is by giving it love. The closure she will get from our support.
At the Yeah. same time, she has to take the decision what is right for her, what is wrong for her. Just following anything blindly will not help anyone, not even Priyanka, Yeah. not only me. And Sonia ji, I will tell No, she no. is a एक very minute, strong woman. Nagendra ji. She should not consider herself weak. She has emerged, Exactly. Yeah, and yeah. the situation she Nagendra can ji. come and talk today. She is a strong woman. For the moment, she should not feel weak. She Yeah, is Exactly. 1 minute. recovering. I'm actually interjecting because Shreya and Shifuji wants to speak Please, with please Priyanka. take them in. Yeah, they are already there. They just wanted to Okay. speak, because that is why I'm interjecting, because Priyanka, we don't Yeah. want Please, Priyanka ji please. to Please, network to go. Nagendra ji, I hope you don't mind. Everybody wants to No, show Sorry love ji. and yeah, support yeah, to Yeah, yeah. Priyanka. yeah. We'll I continue. can also. Yeah. ना आप Yes. इधर ही रहिए Haragendra ji, we need you here. You be here. Okay. All, Jai Bharat to all. Yeah, Bharat. Jai I Hind, just Jai Bharat. stand at that time, when Priyanka was speaking, that on the ground level, I have also faced a lot of it. I was abused as a child also, sexually harassed as a child also, and in my teenage many a times. But I just want to say one thing right now to add to Priyanka's point, that when you go to complain in a police station, first of all, my experience, I was abused on a road. When I went there, the police is asking me, "Do you live alone? Do you have some mental issues?" All those things were going on. He only took my complaint after 2 hours after my husband reached to the police station, and I was adamant. He only took a complaint. Then he went to do the Reiki. After 2 days, they called me to register an FIR because I asked a crime branch uncle to call. That's when they took an FIR. Because after the episode, he took away my purse also with him. He thought maybe I'll follow him or something like that. And I knew it was just a trap kind of a thing, and I didn't give in. I instead like managed it out, and my documents, my address, my house keys, everything was in the purse. That was the main concern actually, and also that I felt he's a psycho, so I had to. It was like for my own protection, I was doing it. These police people, they don't understand this. They're not empathetic at all. See, I understand that the police do act in such a way because some fake people might be coming to complain and things like that, but they should have something for 2 hours in making the person sit there who is not in a condition after that immediate episode or anything. First of all, it takes a lot of guts to go to a police station. My husband said no, I said no, I'm going there. I anyways don't have the house keys. I don't know, I am going to the police station. You come there. It took him 2 hours to come there because he was in the office. He finished everything, and I told him, I'm safe. You just take an hour drive. It took him 2 hours to reach. They didn't even take me seriously. No water, also. Leave anything. Like, okay, calm down. At least try to ease that person. No, nothing. It's not even that they were busy. They had something else to look for or something like that. No, no, nothing. They were just checking my patience. This is true. This is true. This happens, and it's not. I then after that started working with many people of this kind, who face all these, because in my own society, the maids, they have a lot of issues like that. And I started working with all these people, and I've started working in 2, 3 villages now. It's gone to that level. But this ground level problem is still there, that they just don't take you seriously, or then the local police will just go and tell their husband or whoever has abused, the complaint is against whoever, they go and tell them, and money is taken from them or whatever is done. This is how it is happening. So it is like managed and you're sent back in the same thing. I think, Sonia ji, you should take this up on a big thing, because our law really needs some reforms. Even the patrolling people, if you call, it's the same police station that you go to, or whatever happens. Okay. The main thing, the initial procedure of the complaint and things like that, that has to be something different, not like how it is right now. Shreya ji, I'll tell you one thing now. There is one change. If you guys know it, I'm not sure. But you can make a complaint on internet
on any state's website, and it is referred to 2 police stations, and they have to compulsory get back to you within a week's period of time. It is mandatory because they have to report it to the higher authorities. The case is not closed, the justice is not done, nothing is done. Other cases, the VIPs, they would get such a treatment when they are like, I don't know what kind of crime in front of sexual assault it is. They would get a VIP treatment. Their cases would be so fast tracked, you don't even come to know. And why can't these things be so online? I don't understand. These things can be done online. You can have a special bench or a judge or whatever who can take care of it. If you do have a valid thing, it can be from that point then and there. That's the best thing in sexual assault or anything of that sort. After that, you don't even know where the person is or whatever happens. Like most of the time, this is what has happened, that the person is then absconded. This is what happens. So it's the best. As soon as the complaint is registered, and if you do know where the person is, if you do have that contact to the person, or you can get that person is arrested or something like that, what is it? Why does it need 7, 8, 10 years in sexual assault cases? I mean, murders and things like that also, or even these rapes, whatever happens, all these should be like 1 day, 2 day. What other things have to be proven? If your medical is in place, nothing. You don't need anything. Correct. If there is something other suspicious, that is a different thing, right? The police, they come to know immediately. They do understand. They max a week, 1 month. Correct. My case is lying in the court of sexual assault for 8 years now, and there's nothing. Guy was, but they only say he's absconding. He's not absconding. I've given proofs, everything is there, but no, because the address, they take money from the police. He's given summons, this and that, all it's just on paper, and actually in reality, the person is there, but no, he's not there. We didn't find him. He's out or something like that. All these things just happen, and judiciary is totally. After that, also the second case of divorce, in that also I have a physical assault thing. Same thing there. And now since the lockdown, though, it's been terrible because he took my son for a vacation, and he never sent him back. But I have a rape charge in that. We have been staying separate for a long time now. And for the son, he used to come and meet, things like that. And he raped, and things have happened. But now, neither he can be like taken into custody, or nothing is happening because this corona thing is there. And the court had issued some warning, no, not warning, what do you say, some letter till 9 July, nothing can be done, this and that, Exactly. something. Yes. Yeah. Yes. So the thing is there. And so it's like since last lockdown, it's only one appearance. That too, he said, oh, okay, I'm not feeling well, I cannot come. Lives don't stop, right? Lives don't stop like this. The pain that we go through, the person that we have to face because of all these things go on. Because of COVID, your system is stopped, but the lives don't stop of other people. Leave COVID. I'm just saying the other case, that is 8 years it's been pending. So if that's okay that I have moved on from that, but why should judiciary take so much time? Yeah, Pragyati, there's no second thought that our judicial system is not at right place. The officials involved are not working as per what they should, and there are unnecessarily delay in the cases. But what I will suggest you in this case, which you stated, if you know that that guy is there, you should go and click some pictures, and your lawyer should produce it in the court, stating that that person is there, but the police is not deliberately producing him before the court, saying that he's absconding. Yeah, 1 minute, Shreya ji and Sonia ji. Now, since Priyanka ji requested that she wants to drop off, we kind of requested her to stay back because we thought there are some questions directed to her.
If do you have any pointed I questions am to her? If you leaving. can, yeah, then you can tell her, because poor thing, I don't want to hold her back. Oh, that's If fine. she's Thank you, like that. Priyanka ji. Thank you for coming. Thank you, Priyanka Jai ji. Hind, Jai Bharat, Thank you Jai so Shri much. Ram. थैंक यू. Yeah. एंड ये जो आप कर रही हैं सोनिया जी बहुत अच्छा है. And I have gone through 2-3 sessions. It's great. Thank you so much, Priyanka ji. Thank you for supporting Thank us. you. Thanks a lot. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shri Ram. Yeah. Sorry, I just interjected because she Sorry, was Shreya waiting. ji. Yeah. Yes. Yeah. I also wanted to appreciate, what Priyanka had said, the trauma remains. You do not understand it that time, but it does come out later. Even as you said, Sonia ji, that the trauma, I've like dealt with it. But when something else happens like that again, you are like thrown back. But still, you don't stop. You are a fighter. Like I am a fighter, but those memories they remain. And Yeah. at Yeah, certain they haunt you and they pull you they down from where you started. yes. And if it is as a child, you don't even understand. You don't even understand what to tell. My uncle, he was my first cousin uncle, and I remember him stuffing things in my mouth, and I didn't know it that time. I am the first girl in my family after 4 generations. So everybody loved me, and my uh, grandparents, my parents, everybody was like, okay, ठीक है लेके जा रहे हैं. That's how it is in my house कि लड़की है सब लेके जा रहे, इधर लेके जा रहे, उधर लेके जा रहे. And this uncle of mine was a teenager that time. I didn't understand it that time, but slowly, I did start to understand, and I saw there is a change in my sister. And I didn't know, but I knew that she had gone to that house. Even though I was just a ninth standard, I don't know, people do understand it early and things. I did have sex education, but I didn't still understand what had happened to me in my childhood. But I saw my sister, she was a little off, and I asked her what happened, and I came to know she had gone to that house. I just understood everything. In After some time, my his son, we all were together. His son, like, he was just curious maybe because kids they are like that, and he didn't even have that because a guy in sixth standard, what would a guy in sixth standard know? Is what I thought that time. Is what I thought that time. He tried to lift my top when I was sleeping and things, but I became so insecure of everybody after that. I just talked to him and I told him, and that was the day I told my parents also and everybody, because I understood that this is something which is not right. But okay, my mom supported me, my father supported me. Okay, it was a very bad thing, this and that. But that uncle, he was never questioned, or at least not in front of me. He was not even like barred from coming to our house. I don't know. Our relations still to till the date they have been the same. They haven't changed at all. And it's not only me. So in my family, all 6 kids. So we are a joint family. So all 6 kids, boy or a girl, have been harassed by this man. I have said it after some time, even after some time when I got a little older and I had that guts to talk, I confronted him. I said, this is what you've done. And because his own kid, he was just like trying to say, oh, she's so good in studies and this and that. And I wanted to go to Bombay and I wanted to do my job and things. And he was the one to say, ki, oh, that is so unsafe. And I'm like, my God, my home. You took to me your home and it was so unsafe. And you talking about other cities to be unsafe? That's like a hypocrite. It actually till date I don't understand. All many of my friends also, many like how you said, 80 whatever percent have been abused. So most of the girls, some boys also I know, they have been abused. But it hurts when these people who have abused us or harassed us or
hurt us in any way, they get the power and they are still the same. You know, unke sath people won't behave differently, or they still have that kind of a power that they would come and say something in your life. They're Shreyaji, given my the question, I'm sorry, but my question here is what kind of protection, what kind of support are you talking about your parents? I If don't if you told them about this person has outraged my modesty, has abused me, and still if he's getting that space in your life, in your house, that means nothing was done. You said they it's heard not and it closed there. happening in most of the houses. Exactly. It's That was the point happening. I'm coming to. They don't like to name and shame the perpetrators because they're part of their family, they're part of the society. Because, as I said, the first concern is family का नाम खराब होगा, रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा, बेटी का नाम खराब हो जाएगा, बेटी की शादी कौन करेगा? So the thing is, we have, nobody thinks about that person who has gone through and how that person will heal. If the perpetrator is before you all the time, you can never heal because you feel nobody justified it to you, not even your parents. So what kind of healing are we talking? And I will correct you all girls who were talking here. It is not sexual harassment, it's sexual abuse. There's a difference. Harassment happens, sexual harassment at workplace is specific because there is give and take, monetary or other benefits. In sexual abuse, there is no such give and take. It's just an abuse. So when we Can I use these terms, they are very important. can I pitch in with Shreyaji? I know Shifuji wanted to talk something, but then before that, Shifuji told, I mean, has been waiting patiently since long, so we'll take her. Then after that, I wanted to Shreyaji of the same incident. My personal thing, I am ready to open up now because many people have. So yeah, Shifuji will take it up. Yeah, then we can come up. जय माता दी सोनिया दी, जय माता दी जय शेफाली। माता दी उज्जवल जी, जय माता दी अरुण जी एंड नागेंद्रा जी। उज्जवल जी और सोनिया दी को मैं फॉरवर्ड फैमिली से जानती हूँ, जब से स्टार्टिंग से दीदी वहां पे आ रही हैं, और उज्जवल जी को तो वैसे ही हर कोई जानता है, और बाकी सबको मेरी तरफ से जय माता दी। बाकी देखिए, मुझे आप लोगों की तरह इतनी समझदार तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो अभी सेशन देखा आपका, जो समझ रही हूँ, एक्चुअली मैं 7:30 घर पहुंची हूँ और 9:30 बज गए यहाँ पे। मैं सिर्फ सोने की वेट कर रही थी, जस्ट लाइव देखा, दीदी का लाइव चल रहा था, तो मैं तभी से लाइन पे ही हूँ कि कब नंबर आएगा। और मेरे को इतनी लंबी बात नहीं करनी है, मेरे को ये है कि जो मुद्दे शायद कभी कोई उठाने से पहले 100 बार सोचता है, वो मुद्दे दीदी ने उठाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्टली तो सैल्यूट है मेरा प्रियंका जी को और श्रेया जी को, जो एक मंच पे आके आप बीती खुद सुना रही हैं। ठीक है, मेरे को खैर आई एम सो सॉरी, मेरे को इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं इतना समझ सकती हूँ कि बीइंग अ फीमेल इन फीलिंग्स, जब हम ऐसी बातें करती हैं और जिन पे बीती होती हैं, तो वो उसी वक्त उसी फ्लैशबैक में चली जाती हैं और दर्द फील होता है, बहुत कुछ होता है। पर जिस तरह से प्रियंका जी ने खुद को अपने सामने रखा, एक तरह खुद को रखा है, दूसरी तरफ एक आईना, खुद को अपने सामने ही रखा है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं दूसरे लोगों को जल्दी से ऑब्जर्व कर लेती हूँ, क्योंकि जो मैं खुद इस दर्द से निकली हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि अगर वो अकेला बैठ के रो रहा है, तो उसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो भी शायद ऐसी सिचुएशन से निकल रहा है या निकला हुआ है जिस सिचुएशन से मैं निकल के आई हूँ। तो दूसरों को उसी दर्द को समझना और उसी दर्द को कवर करते हुए समझाना बहुत बड़ी चीज है ये। ये काम सिर्फ हम अपनी विल पावर से ही कर सकते हैं। और बाकी रह गई सोनिया दी, ये तो हमारी झांसी की रानी है, ये तो हम फॉरवर्ड फैमिली से ही कहते आए हैं। उज्जवल जी को भी पहले से जानती हूँ, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हर एक नारी में एक झांसी की रानी है। आप प्रियंका जी को भी झांसी की रानी बोल सकते हैं। जो सबसे बड़ी झांसी की रानी वो होती है जो मेरे ख्याल से खुद से लड़ जाए। और जिस तरह से श्रेया जी आप बीती बता रही हैं या प्रियंका जी आप बीती बता के गई हैं, तो वो आप खुद से लड़के ही अपने आप को आज हमारे सामने रख रही हैं।
अगर आज भी आप लोग खुद से लड़ नहीं पाती तो आज शायद इस मंच पे आके ये सारी बातें शेयर नहीं कर पाती। तो मेरा उन सारी लेडीज को दिल से सैल्यूट है, दिल से, जो अपने आप से लड़ के आगे 100 आदमी है, पता नहीं कौन कैसा है, कौन किसका है, क्या पता पड़ोसी सुन रहा हो, क्या पता, ओ माय गॉड, मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो सुन रहा है, ओह नो, कौन कौन देख रहा होगा। ये सारी चीजें पीछे छोड़ के जो अपना एक खुद से जंग करके एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, मेरा उन सबको सबको हेड्स ऑफ, रियली, दिल से सलाम है, दिल से। क्योंकि आप लोग मैंने वेस्ट बंगाल में बहुत देखा, सुना भी, ऐसा हो गया लड़की के साथ, ऐसा हो गया, ये हो गया। जस्ट मैं एक ही कमेंट करती थी, अगर आप लाइक एक लड़की है जिसको 100 रूपों में जाना जाता है, अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है, अगर वो खाना अच्छा बनाती है, अगर वो बहुत पढ़ी लिखी है, एक अच्छी टीचर है, तो उसे सरस्वती माता की भी उपाधि दी जाती है, उसे दुर्गा माँ भी बोला जाता है, उसे एक ममता भरी जो माँ होती है, माँ का दिल भी बोला जाता है, ना जाने कितने नामों से। लेकिन जब उसके खुद पे आती है, खुद के स्वाभिमान पे बात आती है, तो मेरे ख्याल से चंडी बनने में देर नहीं लगनी चाहिए उसे। क्योंकि आत्मसम्मान से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि शायद ये बात मेरे लिए कहना बहुत, इस वक्त नाउ आई एम इन न्यूयॉर्क सिटी, अभी मैं 7 बजे ड्यूटी से आई हूँ, 9:30 हो गए हैं, मैं सिर्फ सोने की वेट कर रही थी, इसलिए मैंने बोला मेरे को सिर्फ 2 मिनट दे दो। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल के जब ये बातें हुई, मैंने सुना कि लड़की के साथ ऐसा हो गया, लड़की को उठा के ले गए, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती थी, मरना तो है ही है, मरना तो है ही है, इन्होंने मारना है तो कुछ करके मारो, या तो एक को मार के मारो, या तो एक का गला काट के मारो, कुछ भी करो, एक आध वार तो करो उनपे, पता तो चले कि लड़की इसको कौन है। रोटी नहीं खिलाई? तो इसीलिए मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि लड़की कोई कमजोर नहीं होती है, लड़की पुरुषों पे डिपेंड नहीं है। हालांकि जो हमारा भारत है वो लड़का लड़की से बहुत ऊपर निकल चुका है, आजकल एक लड़की कंधे से कंधा मिला के चल रही है। मैं 14 घंटे की ड्यूटी करके आती हूँ, पूरी नाइट शिफ्ट बाहर लगा के आती हूँ, उसके आने के बावजूद सिर्फ 4 घंटे सोती हूँ, आके घर का काम करना, घर को संभालना, हस्बैंड के लिए खाना बनाना, खुद के लिए बनाना, खुद के लिए कैरी करके जाना। मतलब 7 बजे आती हूँ, 8 बजे आके सोती हूँ, 12:30 उठ के फिर 4 बजे ड्यूटी पे जाती हूँ, तो जस्ट फिर सुबह 7 बजे आती हूँ। तो ये आम कोई, अगर मैं बात करूं, एक लड़का कर सकता है, कोई नहीं कर सकता ये, लड़का नहीं। लड़के को सिर्फ काम संभालना है, बाहर का देखना है, लेकिन लड़की को घर भी संभालना है। बेटा, अगर तूने जॉब करनी है तो वो तेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो मैं सिर्फ यही करूंगी, कब एक ही बात, मेरी जो जो भी ये देख रही है वीडियो, सबको मेरा हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही प्रार्थना है, प्लीज जब बात आपके स्वाभिमान पे आए तो एक बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लेना, कि जो सामने खड़ा है वो तुझे छोड़ेगा नहीं, वो तुझे मारेगा, तो मरना तो है ही है, तो मार के मरो तो वो ज्यादा अच्छा है। और बाकी अगर हमें इंस्पायर इंस्पायर होना है तो प्रियंका जी कम नहीं है, श्रेया कम नहीं है, जो इस स्टेज पे आके खुद को बोल रही है। और सबसे बड़ी ये झांसी की रानी मेरी दीदी सोनिया, ये तो वैसे ही किसी से कम नहीं है। और उज्जवल जी जितना सोनिया दी को जानते हैं उनको पता है कि जैसे इन्होंने फोगट फैमिली में उस ऑस्ट्रेलिया वाले विशु, पता नहीं क्या नाम था, विशु समथिंग, उसकी धज्जियां उड़ाई थी कि उसकी बीवी ने भी सॉरी मांग ली थी, तब भी ये झांसी की रानी नहीं रुकी, कॉन्टिन्यूसली। तो फिर उसने हार के बोला, ओके जी गलती होगी मेरे हस्बैंड से, मैं माफी मांगती हूँ, आपको नहीं बोला, किसी और को बोला। तो यही चीज हर हर औरत में चाहिए, हर औरत में अपने स्वाभिमान के लिए लड़ो, अपने हस्बैंड पे, अपने भाई पे, अपने बाप पे, किसी पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि जब तुम पे आएगी ना तो कोई खड़ा होने वाला नहीं है, ठीक है। और इतिहास गवाह I है। must tell you everyone, Shefali, शिफू, Shefu, हाँ जी। Shifu is one of the amazing fighters. She has been fighting throughout her life and she is independent. She's taking care of her family. She's taking care of so many other things. And being an amazing warrior at the same time, she is worried about Hindutva. She is worried about Sushant. She's worried about her parents, and that is the kind of girl we all want in our family.
जो अपने पति को भी बैलेंस करे, अपने माँ बाप को भी बैलेंस करे, अपने देश को भी बैलेंस करे, अपनी संस्कृति को भी बैलेंस करे. And So I'm worrying about my also lot of राष्ट्रवादी also exactly. राष्ट्रवादी So रियली नितिन शुक्ला जी हो गए, सुधीर चौधरी हो गए, अर्नब हो गया, सोनिया दी हो गए. मेरे लिए वो हर बंदा इम्पोर्टेंट है. मैं इतनी यूएस में लाइफ बहुत बिजी है, बहुत बिजी है. सोनिया दी जानती हैं, राइट. 14 घंटे अगर आप काम पे निकाल देते हो, पीछे कोई घंटे नहीं बचते हैं, सिर्फ खाना बनाने किचन में ही चले जाते हैं. पर मैं सच कहती हूँ, इसके बावजूद भी मैं सोशल भी रहती हूँ, मैं अपने देश से जुड़ी हर बात को अपडेट रखती हूँ, और इस बात की सोनिया दी भी गवाह है. पर मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, प्लीज हर लड़की से, जब बात स्वाभिमान पे आए तो चंडी बनने में देर मत करो. गलत कोई भी हो सकता है. जब आप घर से बाहर निकलते हो तो एक चीज याद रखना कि हर मर्द की निगाह गंदी होती है. हर मर्द की निगाह गंदी है. जो भी तुम्हें देख रहा है, पापा की परी मत बनो, चंडी बनो, वो ज्यादा अच्छे रहोगे. बस मेरा इतना ही कहना है. आई एम सो सॉरी अगर मैं ज्यादा बोल गई, तो आप सब लोग बहुत बड़े बड़े हैं. नगेंद्र जी, आप हैं, सोनिया दी हैं, उज्जवल जी, ओ माय गॉड, उज्जवल जी तो हमेशा प्रणाम काशवीर जी के चरणों में करते हैं. जब भी ये काशवीर जी के चरणों में प्रणाम करते थे, तो मैं कहती थी, उज्जवल जी मेरा प्रणाम आपके चरणों में. ये सीरियसली उज्जवल जी दूसरे गूगल है. इनको हर हर चीज का पता है, हर चीज का ज्ञान है. एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अरुण जी, आपने टाइम दिया मेरे को. मैं तो मैसेज लिख लिख के बोल रही थी, प्लीज गिव मी 2 minutes. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. एंड श्रेया जी, प्रियंका जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. Shifu, और Shreya wants to say something to you. Hold your horses हाँ, for a minute, please. I'm just saying to you, what you allow is what will continue. I believe in that. या एग्जैक्टली. Now is what will continue. तो सिर्फ उसके बारे में नहीं चलेगा भी नहीं बोलना है. We have to take action against it also. नहीं चलेगा, बोलना भी है और एक्शन भी लेना है. That is how we can stop all this. And it's not हमारे only हमारे लड़कियों के एक्शन से ही, हमारे एक्शन से ही श्रेया जी ये भारत बदलेगा. बोलने से कुछ नहीं होगा, हमारे एक्शन से ही भारत बदलेगा. बोल बोल के देख लिया है, बोल बोल के इतना देख लिया है कि हमारे घर वाले ही हमारे दुश्मन बने हुए हैं. हमारे घर में ही, हमारे भारत में ही हमारे बहुत दुश्मन बन चुके हैं. बोल बोल के देख लिया है, अब करने का वक्त है, बोलना नहीं है. मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, अब करो, डरो नहीं. अगर कोई सामने खड़ा है, मरना तो है ही, तो मार के मरो साले को. ऐसे मत मरो, डर डर के मत मरो, रो रो के मत मरो, उसके पाँव पे पड़ के मत मरो. मरना है तो साले को मार के मरो. दैट्स इट. और शायद, और नो डाउट, अब जो अपने रोहित सरदाना जी हैं, जब वो गए थे, तब भी मैं बहुत टेंशन में थी कि हाँ, ये कोरोना हमेशा राष्ट्रवादियों को क्यों खा रहा है, ये बुल्लीवुड को क्यों नहीं खा रहा, इनको क्यों नहीं कुछ हो रहा. ये अरविंद केजरीवाल हो गया, ये टकैत हो गया, इन लोगों को क्यों नहीं कुछ हो रहा. सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है जो पक्के राष्ट्रवादी हैं. क्यों? नहीं, हम एक मिनट, आई जस्ट नीड वन लाइन इन दिस. शिपू जी, हम शेर जब मरते हैं ना, उनका गिनती करते हैं. ये सुअर मरते तो गिनती नहीं करते हैं. ठीक है, उन लोग बहुत मरे हुए हैं, उनका गिनती नहीं है. शेरों को हम ना जाते देते हैं. चलो बिल्कुल, वैसे भी शेर के मरने पे ये सारे गीदड़ आते हैं बाहर. ये गीदड़ तभी बाहर निकलते हैं. गीदड़ नहीं है, सुअर है. जंगल का भी सुअर है. एटलीस्ट सिटी का सुअर तो डोमेस्टिकेटेड है, उन जंगलों का सुअर है उन लोग. अरे अरुण जी, जंगली सुअर भी नहीं, नाली के सुअर है ये लोग तो. जंगली के सुअर भी नहीं है, साले नाली के कीड़े हैं ये लोग. ये जो गद्दार है, ये जो एक कल रोहित शर्मा पकड़ा गया चाइना को सम डॉक्यूमेंट्स करते हुए, जो शक्ल से इतना शरीफ लग रहा है, इतना शरीफ लग रहा है. मैं सोच रही हूँ जूते मार के गंजा करूँ, वो पहले ही गंजा. स्टूपिड. क्या बंदा करे ऐसे. और 2019 में तो इसको लेट इट गो कर दिया था. बट आई होप सो कि अभी देश का कानून, हमारे देश के कानून में, सोनिया दी, चाहे आप इस बात को मानो या ना मानो, बहुत लूज पॉइंट है. और मैं तो खुद ही बोलती हूँ, मैं तो रोज सुबह शाम बोलती हूँ, बट चेंजेस लाना बहुत मस्त है. और वो जब हम पब्लिक अवेयर होंगे, तब हम प्रेशर डाल सकते हैं, और तभी वो हो सकता है. सो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज कीप सेइंग. लॉ में बहुत चेंजेस की नीड है. इट्स अ टाइम, नीड ऑफ द टाइम, बेसिकली. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, ओके जी, मेरी तरफ से हाथ जोड़ के सबको जय माता दी, और थैंक यू वेरी मच. और अब मैं सोने जा रही हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए. जय माता दी. जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम. तो अरुण जी, मेरे को जरा बाहर फेंक दीजिए, मेरे को बाहर जाना नहीं आता.
अरुण जी, मैं 2 बाहर मिनट फेंक कुछ दीजिए। कहूँ फेंकूंगा नहीं, एंड मैं देन फेंकूंगा नहीं। अरुण जी, मैं only 2 minutes I'll speak and then I'll go. नहीं नहीं, आप Okay? कंटिन्यू करिए, बिकॉज वी नहीं नीड नहीं नहीं यस सर। नहीं, नो, ओके ओके। मैं एक चीज कहूंगा, जो भी देखो, दे हैव सफर्ड ए लॉट, दिस पीपल, ओके। With my experience, I can tell you, with my own experience, I can. Yes, we all suffer. We go through that mental trauma. But एक चीज है, देखिए, we can't live with that trauma. It's very difficult to आप कोई बोझा सर पे 100 kg का पत्थर लेके आप चल नहीं पाओगे जिंदगी में, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कहीं ना कहीं हमें उस पत्थर को सर से नीचे उतार के रखना पड़ेगा, एंड देन वी शुड वॉक। ओके, यू हैव सफर्ड, इमेंसली सफर्ड, आई एग्री विथ ऑल ऑफ यू। हाँ, बट उस पत्थर को लेके नहीं चढ़ना है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिंदगी कहीं भी खत्म नहीं होती, जिंदगी किसी भी पॉइंट पे खत्म नहीं होती। एक पॉइंट में आता है, आज आप नीचे हो, कल उठ जाओगे, लेकिन स्ट्रेंथ आपको खुद लाना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, कई बार ऐसा होता है, एक इंसान ने बोला था कि एक लाइन, इस लाइन से बड़ी लाइन खींचनी है विदाउट टचिंग इट, तो एक दूसरी लाइन उससे लंबी खींच दो। दैट्स द ट्रिक इन लाइफ। ओके, वी हैव टू बी लुक फॉरवर्ड टू अवर फ्यूचर ऑल्सो। अपने आप को भी लाया जा सकता है बैक आफ्टर ऑल द ट्रॉमा, ऑल द हीलिंग। वी कैनॉट रिकवर 100%। देखिए, कई इंप्रेशन रह जाते हैं। हम हार्ड डिस्क को, हम एक एग्जांपल देते हैं, आप सीपीयू से जब या हार्ड डिस्क से डाटा डिलीट करते हो ना, देर इज स्टिल द ट्रेसेस ऑफ इट, इट कैन बी रिकवर्ड, बट नॉट ऑल कैन बी रिकवर्ड। ओके, ब्रेन भी वैसे ही है। व्हेन वी ट्राई टू, जब ब्रेन से कुछ आ जाता है, इंप्रेशंस लग जाते हैं यहाँ पे, ओके, you can rub some portion of it, but still some portions will remain very deeply ingrained, बहुत डीप रहेंगे। कुछ तो हीलिंग हो सकती है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू ऑल दोस थिंग्स। ब्रेन के कई फंक्शंस को हम लोग थोड़ा थोड़ा रिलीज करके एक काफी हद तक एक आदमी को ला सकते हैं इन ए बैलेंस पोजीशन टू लीव हिज लाइफ। ओके, बट अगर उस ट्रॉमा को आप बार बार याद करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, इट प्लेज ए मल्टीप्लायर इफेक्ट इन योर ब्रेन। ओके, वो ट्रॉमा और ज्यादा आपको ट्रबल करता है, और ज्यादा हिट करता है, बिकॉज आवर नर्वस सेल्स आर, अरुण जी तो डॉक्टर है, ही विल अंडरस्टैंड दैट यहाँ भी एक इलेक्ट्रिसिटी है ब्रेन में भी, एंड इट, इफ यू रिपीटेडली हिट दैट, इट विल हिट यू, नॉट द अदर पर्सन। बहुत ज्यादा ट्रॉमा, यू विल create the multiplier effect. It is not that I am blaming you, not that I am trying to teach you. I know it's very very difficult, but at the end, 5 साल बाद हो या 10 साल बाद होगा, आपको रियलाइज होगा कि आई हैव टू लुक टुवर्ड्स माई लाइफ, आई हैव टू लुक अहेड फॉर माई लाइफ। आई कैनॉट लिव विद द पास्ट, ऑल्दो आई हैव टू फाइट विद द पास्ट। फाइट कीजिए, बट बहुत बैलेंस्ड एटीट्यूड से, बहुत करेक्ट एटीट्यूड से। बहुत ये पॉसिबल हो सकता है, बट यस, सर्टेन इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड, certain mental interventions are required, certain psychological inputs are required, where you can do it, where you can muster the strength. और कुछ कुछ चीज ऐसा होता है, कई बार patience and silence also plays. Little bit of silence in our life, little bit of patience in our life gives us more courage to fight in life. आप प्रूव कर सकते हो। अब देखो, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, आई विल गिव यू विथ माय एग्जांपल। I was thrown out of 2 universities because of my honesty. Okay, 2 universities because of my honest attitude. Not thrown out. One I resigned. One I was told कि your job will not be extended. But I had the courage. I had the yeah. I did not lose my integrity in the process. I didn't lose my integrity. That was with me. I was today I respect myself, and today I am fighting myself, and I think I am in a universe, not in a university. I left that pond called university. I am in a bigger university where I deal with more people, I heal more people, I connect to more people, and yes, that's the way. I always thought I will draw a bigger line. वही आंसर होगा मेरा. And today I can tell I may not have earned too much money, but with whatever did I have done, I can say I have drawn the bigger line, and I will draw bigger lines in life. So this is my answer to those people. Okay, this those small mindsets, those small
They think this pond is everything. This pond is not everything. The universe will open up to you if you just create the right balance, because there are opportunities. The universe is so big, it's for everywhere, for everyone is there some opportunity somewhere, life, some beauty is there, trying to find you out. But हमें open up करना पड़ेगा. Life is beautiful. You can't sacrifice, you can't live with a trauma forever and ever. You have to move ahead. Okay, don't deny yourself the right to live, don't deny the right to love yourself. ये बहुत बड़ी चीज है. Okay. Yes, I know, I agree. Whatever you have gone is extremely painful beyond imagination. और ऐसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए अरुण सर, जो प्रियंका का साथ किया ना, ऑन ए स्पेशल केस बेसिस दे शुड, बिकॉज इट इज ए, क्या बोलेंगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट में इसको कन्वर्ट करना चाहिए. Because this is not once rape, 7 years the person raped that girl. Okay, rarest of rare event. इमीडिएट फांसी होना चाहिए अंडर ए स्पेशल बेंच के डिस्कशन में ऐसे लोगों को जो इस तरह के काम करते हैं. इट इज माय ओपिनियन. ओके, बट यही बोल के मैं जाना चाहूंगा. यू कैन कैरी ऑन योर डिस्कशन. आई हैव टेकन टू मच ऑफ योर टाइम, but I congratulate Arun ji and Sonia ji for bringing up this discussion, and also Priyanka, Shreya. They have been, I thank them for speaking out, that is your courage, that is your, आपने बहुत courage दिखाया, and we are thankful to you. You opened our eyes. हम पुरुषों का भी आंखें आप लोगों ने खोला है, and we need to fight these problems jointly in life. हम भाग रहे थे ना सुशांत से, इस केस से हम भागने लगे थे. We are talking about divisions, we are talking about PR agency, but now we need to talk this right issues. ये right issues के बारे में बात करने का समय आ गया, and when we leave, we will leave a better India. If we keep talking, we'll leave a better India. कल मुझे एक जन ने बोला, सर आपको काम नहीं है, आप ये सब, हाँ, मैंने बोला मेरे पास कोई काम नहीं है. This is the best work God has given me, and I am proud of it. I am really proud of it. God has put me to some national service. I wanted to do that. I want, जब भी चाइना में कोई आता है ना, I want to go to the army. You don't know. I just want to pick up the gun and hit them. I don't know why. That courage I have. I want to live for my nation. I want to die for my nation. And this is the best thing I believe I can do for my nation. Oh, yeah. Nagendra ji, Nagendra ji, I want to say something to you. हाँ मैम बोलिए. हाँ, आपने जो बोला ना कि हील करने के लिए बहुत जरूरी है that this to deal with the trauma because it takes a lot from you. Life doesn't stop, right? And it has a lot more other things to offer. I totally agree with you. But you know what happens? The problem that I was trying to say in this, if it is a legal case, you cannot forget it. Inside, yes, you have to deal with trauma even while going through it. Yes, you have to keep in mind each and everything, each and every minutest of the details. Okay? Yeah. And you are actually living the pain because when you are reminded of it again and again, so you are living it again and again. तो ये हुआ एक बार होता है. If a person, मतलब if all these things aren't there and is doing on his own, fine. कि मतलब he's doing it himself or herself or whatever. But if it is because of the system or somewhere, तो ये बहुत problematic हो जाता है. Because this also plays a very big role in all these things. And especially अगर यहाँ पे भी और देखा जाए ना कि there's a conspiracy happening उसमें because of others, and I'm not able to get that justice or anything. It is not about the event that has happened then. वो तो एक अंडर में प्ले कर रहा होता है, वो और ऊपर उसके आते जाता है. And if this abuse happens again and again ना, तो I'll tell you my experience, what has happened. एक PTSD ऐसा आया. Please don't, आप describe मत करो. It's painful यार. We can understand your pain, but I want you to help in this. I want you to help in this because I know you do yoga and everything. That's why. Okay. तो ये इसकी वजह से PTSD आया. You cannot take good touch. You cannot bad touch. तो बहुत दूर की बात है. You can't even accept good touch after that because your mind
it just cannot take even good feelings. It is like कोई अगर बस तुम्हारे सर पे, even if your parents, सर पे तुम्हारे बस हाथ फेर रहा हो ना, it is totally unknowingly ऐसे भर के आता है कि लिमिट नहीं है. इट इज नॉट कि वो रोज चीज हो रही है नहीं हो रही है, वो सबकॉन्शियसली ऐसा फिट हो जाता है वो, बिकॉज ऑफ द टाइम दैट इट गोज. अगर वो इवेंट तब हो गया, उसका चीजें सॉल्व हो गई ना शायद, तो इतना नहीं होगा, इज व्हाट आई फील. बिकॉज अदरवाइज इट गोज टू अ टोटली डिफरेंट लेवल. अब आई वांट टू आस्क यू, अगर ये ट्रॉमा इतना बिल्ट इन हो जाता है, तो व्हाट डू यू डू विद दिस योगा? कि अगर ये कोई अपने अंदर, because there are many channels, right, जो खोल के we can release it and things like that. So if we do have anything, तो आप प्लीज आपके चैनल पे या जहां पे भी, यू प्लीज टेक अ सेशन. आई एम वेरी श्योर many women, many men like us would want to know about it. You see, Shreya ji, for all such people like you, I am going to give my service free. Don't worry, it's totally free. And I can tell you, ये post traumatic syndrome जो बोल रहे हो आप, brain cells क्या होता है, they have a very good memory. वो सारे इंप्रेशंस रख लेते हैं, मेमोरी सारे चीज वो याद रख लेते हैं. इट स्टोर्स इन द सबकॉन्शियस माइंड. टू इरेज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. बट धीरे धीरे मेडिटेशन के द्वारा it can be erased, but it takes a long time. Don't think it will happen in a, but very first day you will see the effect in the form of a, हम जब फोगट चैनल में कराते थे, शायद उज्जवल जी शायद होंगे, वो अली भाई और पारस भाई थे. they had severe brain problem and they told me कि सर we are experiencing something inside our brain को बहुत लाइट लग रहा है. the first day experience will be that. आपको लगेगा आप हील हो गए, लेकिन आप हील नहीं. इट विल टेक वेरी रेगुलर इनपुट. बट रेगुलर करते करते क्या होगा, आपको एक ऐसा साहस मिलेगा, एक डिसिप्लिन मिलेगा, एक एटीट्यूड मिलेगा to how to deal with the situation. Yes, you have court cases, you have the trauma will not go in a day, but you will know the right mindset. Yes, मुझे ये केस फाइट करना है. At the same time, आई थिंक नागेंद्र जी का नेटवर्क का इश्यू है बीच में. आगे आप Ujjwal ji, you can just move on to Ujjwal ji, then we can take on Freeze. Freeze has been waiting patiently. Yeah, Ujjwal ji. सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव. मैंने काफी देर से डिस्कशन सुना है ना. मैं सबसे पहले तो सलाम पेश करता हूँ श्रेया जी को और प्रियंका जी को. they have both come forward and discussed. am I audible? आप मेरी आवाज Yes, सुन sir. सकते हो? हाँ, तो वही मैं कहता हूँ, ओवर ए पीरियड दिस हीलिंग कैन हैपन, बट डोंट एक्सपेक्ट इन ए मिनट और सेकंड्स. ऐसा नहीं होता, ये जादू की छड़ी नहीं है, बट इट विल हेल्प यू. दैट्स ऑल आई वांटेड टू से. नागेंद्र जी. थैंक यू. हाँ, उज्जवल सर. जय भारत, जय श्री राम. नागेंद्र जी, please keep coming. Yes, sir. Thanks for your input, sir. It's really very heartening. थैंक यू सर. मैं सब कुछ सुन रहा था, मैं काफी डिटेल में आपके फीलिंग भी सुने एंड ऑल दैट. सोनिया जी का भी काउंसलिंग सुना, एडवाइस. अब देखो, मैं प्लीज डोंट फील, गेट मी रॉन्ग, या आई मीन वेल. और मैंने ये बहुत सारे इंस्टेंसेस अपने सामने होते हुए देखे, वर्क प्लेस पे भी देखे है ना, अपने तरीके से काउंसलिंग भी की है लोगों. व्हाट आई वांट टू से हियर इज, वो शिपू जी ने जो बात बोली है ना, वो 101% गोल्ड स्टैंडर्ड है. मतलब मैं तो उनको हैट्स ऑफ बोलता हूँ. या शी हैज सेड व्हाट एक्चुअली शुड बी डन. किसी के साथ भी कोई ज्यादती होती है, वो आप पहले तो उसको सही तरीके से समझिए, है ना. डोंट ट्राई टू बी अनअवेयर एंड लाइक लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड टाइप. ऐसी सिचुएशन में हमेशा अपने आसपास, अपने साथ में, अगर आप हर रोज अपने दिन को एनालाइज करेंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था स्कूल में, कॉलेज में, या आपके वर्क प्लेस में, तो आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना. धीरे धीरे, एक दिन नहीं समझ में आएगा, 2 दिन नहीं समझ में आएगा, लेकिन 8, 10, 15 दिन में समझ में आएगा.
फिर उस चीज को आप आई गई मत करें, उसको आप किसी किसी भी बड़े या साथी के साथ में, वर्क प्लेस में तो बहुत इजी है, आप लोगों से बात करें, अपने कुलीग से बात करें। मैं बताऊं, उसको बहुत सारे केसेस में मेरा तो बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है। दूसरे जो वर्कर्स होते हैं ना, जो हमारे जूनियर्स भी होते हैं, या वो हमको शील्ड करते हैं, वो आके बोलते हैं, अरे है ना, दूसरे सीनियर्स के सामने गवाही देते हैं या खुद बोलते हैं जाके कि देखो ये इनको परेशान कर रहे हैं या कर रही है, आप थोड़ा देखो करके, है ना। तो ये काउंटलेस ऐसे इंसिडेंट मैंने देखे हैं। सारे लोग खराब नहीं होते दुनिया में, है ना, हमको एक दूसरे की मदद भी करते हैं। लेकिन सोनिया जी हैज गिवन यू द स्टैटिस्टिक्स, या दोज आर वेरी रूड स्टैटिस्टिक्स, दोज आर द ट्रूथ। ओके, उससे आप दूर भाग नहीं सकते, लेकिन आप क्या करोगे? जब तक कि हर स्कूल में काउंसलर ना हो, हर वर्क प्लेस में काउंसलिंग ना हो, या हर ऐसी छोटे बड़े शहर में जिनकी बात प्रियंका जी ने बहुत ज्यादा करी, वहां पे काउंसलर्स अवेलेबल ना हो, इस तरीके की फैसिलिटी नहीं हो, तब तक तो आपकी जिंदगी रुक नहीं जाएगी ना। आप आपको हमको जिंदगी जीनी है, हमारे बच्चों को जिंदगी जीनी है। तो इसके लिए अपना सपोर्ट सिस्टम हमको खुद देखना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, और बनना भी पड़ेगा एक दूसरे का। लेकिन दोस्तों, मैं बोलता हूँ, इफ यू डू टू मच ऑफ एनालिसिस इट बिकम्स पैरालिसिस। आप उस सिचुएशन के साथ समझौता कर लेते हैं, आप उस सिचुएशन के आदी हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है, ये सबसे बड़ी बीमारी ये है। अब्यूज तो एक बीमारी, बहुत भयंकर अपराध है, बीमारी नहीं है। लेकिन उसके बाद ये जो समझौता करते हैं या इस तरीके की मेंटल कंडीशनिंग करते हैं या हो जाती है, वो एक बहुत बड़ी बीमारी है ना। ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नागेंद्र जी की बात भी बहुत सही थी, सोनिया जी भी सही बोल रही हैं कि देखो, काउंसलिंग की आप सहारा लो, एडवाइस लो। क्या कर सकते हैं? भक्ति करो, योगा करो, म्यूजिक थेरेपी करो, मेडिटेशन की कोशिश करो, अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक बात है, हर इंसान, चाहे उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो ना हुआ हो, हर इंसान के साथ, जो इस दुनिया में आया है और जो इस दुनिया से जाता है, हर एक के लाइफ में अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, है ना। कुछ और तरीके के धोखा हो सकता है, कुछ जातियां हो सकती हैं, है ना। हर इंसान खुश खुश आता और खुश खुश जाता नहीं है ना। सो व्हेन यू रिकलेक्ट, द बैड मेमोरीज विल आल्सो कम इन अ फ्लैश, द गुड मेमोरीज आल्सो विल कम इन अ फ्लैश। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को किस तरीके से और मजबूत बनाएं और स्ट्रांग बनाएं। वो शिपू जी की मेरी को एक बात पे एक स्टोरी याद आती है, वो बड़ी छोटी सी है, मैं बता के अपना वक्त समाप्त करता हूँ, क्योंकि और लोगों को भी बोलना चाहिए इसके। प्रयागराज में एक लड़की थी, उसको बहुत, उसके गली में जो थोड़े पीसफुल समुदाय के काफी लोग होते थे, लफंगे जो होते थे, 5-6 लोग उसको छेड़ते थे। जब वो अपने कॉलेज जाती थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी बेचारी, उसी समय नया नया एडमिशन लिया, तो ये शुरू में तो बड़ा हार्मलेस सा होता है ना, तो हम ध्यान नहीं देते, चलो यार जाने दो। लेकिन फिर उनकी हिम्मत बढ़ती जाती है, तो ऐसे ही उन लफंगों की हिम्मत बढ़ती है। फिर एक दिन किसी ने लड़की का कुछ दुपट्टा खींच लिया, या फिर उसके बाद में हाथ खींच लिया। तो जब 2-3 बार ऐसा हो गया, तो वो लड़की पहले तो बहुत घबराई। फिर उसने देखा उस बाजार में इतने, वहां पे आसपास में उस नुक्कड़ पे कम से कम 20-25 लोग तो होंगे, किसी ने आगे समाज में आके उस लड़की की हेल्प करने के लिए नहीं आए, है ना। वहां पे आसपास में पुलिस वाले भी घूमते होंगे, वहां जेंटलमैन जेंटल लेडीज भी बैग घूमती होंगी, अपना काम करती होंगी, कोई ध्यान नहीं देता है इसके ऊपर, है ना। फिर उस लड़की को गुस्सा आया, उसने भी बोला कि ठीक है, जब मरना है मुझे तो क्यों ना मार के मरूं। क्योंकि एक दिन उसके बाद उन 4-5 लोगों ने उसको बहुत बुरी तरीके से असॉल्ट किया था, मतलब उसको उठा के खींच के, दे वर ट्राइंग टू ड्रैग हर समवेयर। उस दिन तो वो भाग गई कैसे भी करके। उसके बाद वो गई घर में, दूसरे दिन जब आई, बिल वैसी ड्रेस वगैरह पहन के, बड़े अपना खुशनुमा स्टाइल में, 2 कटार, वो जो होता है शॉर्ट डैगर, वो अपने हाथ में लेकर आई। फिर वही ग्रुप ने उसको, वो जैसे ही मेन रोड पे पहुंची, वहां से स्टार्ट हो गए, उसने वहीं पे 2 लोगों को तो वो डैगर से काट दिया। 2 की मौत हुई है उस इंसिडेंट में, सोनिया जी।
उधर मतलब शी stabbed them, cut them 2-3 times on vital places. She also studied कि मैं उसको क्या करना है, और तीसरे को तो उसने बहुत बुरी तरीके से इंजर कर दिया, बाकी के दो भाग गए। जब वो इंसिडेंट हो गया तब सारे लोग मदद करने आए, तब तक तो सारे वीडियो बना रहे थे, है ना। उसके बाद पुलिस आई, तो मैं तो उस जो जो वीरांगना है उसको मैं हैट्स ऑफ बोलता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। लड़कियों को ऐसे होना चाहिए कि भाई अगर बात अगर यहाँ तक है तो फिर तो मार के मरो ना, और क्यों नहीं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी हिम्मत ना खोएं। कभी किसी भी सिचुएशन में हमको खुद को हिम्मत दिलानी होगी। अगर हम खुद को हिम्मत दिलाएंगे तो बाहर लोग मदद के लिए भी आएंगे। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जो आपको सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं उनका सपोर्ट तो आप लें पहले। सोनिया जी बोल रही हैं यहाँ पे जैसे प्लेटफॉर्म है कि शी इज रेडी टू ऑफर फ्री काउंसलिंग। नागेंद्र भाई ने इतनी बड़ी बात बोली कि देखो मैं खुद आपको मेडिटेशन या योगा इस तरीके से कराऊंगा स्पेसिफिकली टू ब्रिंग कामनेस इन योर ब्रेन। तो ऐसे बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम मिलेंगे आपको। हम सबको एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना बहुत जरूरी है। लॉ में चेंज होना बहुत जरूरी है, ये सब ठीक बात है, होना ही चाहिए। बहुत बड़ा रिफॉर्म की जरूरत है। 23 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, और पुलिस वालों का एटीट्यूड तो वैसे ही है, उनको काउंसलिंग की जरूरत है। ये बात भी यथार्थ है, ये बात भी यथार्थ है। सिर्फ मेल पुलिस वालों को नहीं, इवन फीमेल पुलिस वालों को काउंसलिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग की जेंडर जरूरत है। सेंसिटाइजेशन की बहुत जरूरत है पुलिस डिपार्टमेंट को। एब्सोल्युटली। और आप एक दिन हम ये सेशन ऑर्फनेजेस के ऊपर जरूर करेंगे। आप देखो जो बाल गृह है, सुधार गृह बोलते हो, जो भी बोलते हो, ये नारी निकेतन है, वहां पे कितना मिसट्रीटमेंट होता है बच्चों का, दोनों बोथ सेक्सेस एज वेल नारी निकेतन में औरतों का। ये बहुत चढ़ा हुआ सिस्टम है, इसमें काफी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, वो सही बात है। लेकिन जब तक नहीं आएगी तब तक हम आपकी हमारी जिंदगी रुकनी नहीं है, हमारी जिंदगी तो आगे बढ़। तो रिली नीली हम कुछ भी बोले, कितना भी सिर पटक लें, पैर पटक लें, लेकिन हमको जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, चाहे छोटी छोटी कदम हो, है ना। एक दिन आप 2 दिन 3 दिन पैरालाइज रहोगे, लेकिन चौथे दिन आपने हिम्मत जरूर करनी। मेरा सिर्फ इतना ही संदेश है, बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव। फर्स्ट थिंग सुजल जी, आप रेस्ट ले लीजिए, यू आर नॉट कीपिंग वेल, सो आप पहले रेस्ट ले लीजिए। यू वांट टू स्विच ऑफ द कैमरा आल्सो, यू कैन स्विच ऑफ एंड दिस थिंग एट द सेम टाइम। Just one point, Sonia ji, Shreya ji we also asked, and a lot of people also asked, raised the question, Ujjwal ji also, right? When any person who is affected by sexual assault or any other kind of abuses, and they want to tell, even harassment, they want to go and complain, they relive the entire situation again and again every time they go and complain, right? The entire trauma they go through, so multiple times it takes a lot of emotional and psychological effect. So why is the law can be made easier that they can record once over the voice, and that record can be taken as a valid document which they can play it anywhere they want. एक बार होगा, फाइनल होगा, इंस्टेड ऑफ एवरी टाइम इसमें डालो, देन वो राइटर के पास जाओ, वो लिखेगा, नहीं उसके पास नहीं, कोर्ट में एक सेपरेट बैठेगा, गुमास्ता कोई बैठेगा, उसके पास लिखना है। It is very traumatizing. It's my thought. Maybe I am asking as a very, very layman's, very naive guy, but that is my submission. If we can do something for that, we I can. will come to the point because I had prepared a list what we should do about it Yeah. and how we can. So once we conclude this, before concluding, Okay. the solutions I have decided, we can talk about. Yeah, and about one thing before it takes freeze down, 1 minute यार, ठीक है? So Shreya ji, the thing which you told about the pain factor, right? I'll just tell you about हमारा जो wound पड़ता है ना स्किन पे, है ना, हमारा एक क्रॉनिक टॉन है, ठीक है, एक टॉन है, नहीं कि अपने लेट अस से आवर व्हाट वी वेयर आल्सो, ठीक है, वहां पे एक स्टबर्न बटन है शायद। इफ यू वेयर द सेम थिंग, एक कपड़ा अगेन एंड अगेन, वी डोंट रिमूव इट, नो, पहले वो वुंड बन जाता है, रिपीटेड सेम एरिया, इट बिकम्स अ थिक मास,
फिर एक समय के बाद ना द रिपीटेड एरिया वोंट गेट वुंडेड, इट बिकम्स नम. वो एरिया का वो सेंसिटाइजेशन ना कम होते जाता जाएगा, स्कार बन के उसके बाद उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं रहेगा. ठीक है ना? वाई? बिकॉज द सेम थिंग विच वॉज कॉजिंग पेन इज स्टिल देयर. तो आप जो पॉइंट बोले हो दैट एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज दैट आई वाज आल्सो जस्ट नाउ सोनिया जी से बोल रहा था, like repeatedly going there. Also in the family per se, when that person is not punished, when they when your parents or people elders whomever you speak to, they say okay समझ गया बेटा बेटी कि ऐसा हुआ है तेरे साथ, ठीक है, I will see to that they are more careful. But the person who is the culprit keeps visiting you, keeps lurking around you, वो क्या होता है, that is an additional pain. Then you become insensitive to any kind of emotions. Even as you rightly told, even if your own father comes and probably pats your hair or pats your back, you don't take it in the right way, right? Because that is what all the sensitivity goes out of the window, is what I have personally, and also through my people in the family have experienced it. So what you said makes sense. I'm trying to correlate emotional, psychological, and physical scar, what we call it as the scar for a long period of time becomes a cancer, right? Yeah. So carrying it, as Ujjalji rightly told, carrying that wound for a longer time and we keep remembering that and keep poking it, that also becomes a problem. So Sonia ji also told, take it and use it as a strength, move it forward. Yeah, freeze them. I think I've spoken enough. Yeah. Hello, good evening, everybody, and hello Sonia ji, how are you? We haven't spoken for long. Ujjwal ji ko bahut time ke baad dekha, and I thought for a change I'll just make it a little light and in Ujjwal ji style. दोस्तों, देवियों, सबको जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव. Hello, everybody. Yeah, this subject is actually it's been very. I've been reading for a long time. बहुत time से पढ़ रहा हूँ, बहुत time से मेरा pointers, मैं point लिखता भी हूँ काफी time से. I mean, right now, so I thought I'll write something, and I have come here to put a different side and twist to the subject. Mainly because सबको पता है मेरा background has been music, DJing, nightlife, and my entire focus absolutely is going to be on men. So men, don't hate me after this, boys. Okay. So the first thing I would like to say is on a legal case, Shreya was saying, and it's very sad because recently we have come across the Tarun Tejpal sexual harassment case, and we know what happened after so many years. Sonia, you will be the best to tell us what happened with that. I will not come to that. Now, on the PTSD, I would like to say I saw a comment also that PTSD is real, and yes, it's real. Fatafat mein bolta hu my own experience in the sense my girlfriend, okay, and when we met in the early days, okay, so we were together and we were in one place, and fast forward, we were sleeping, and suddenly in the night, okay, I just turned my side and I happened to just touch her, and you guys won't believe a lot of stuff has happened to her also. And just because we were sleeping, or मैं सिर्फ turn हुआ और मैंने just touch किया, in the sleep of nowhere, in a shock, she gets up in a shock and she kicks me so hard that I'm almost flown away out of the bed. Now, my observation out of that is that it is that moment, that trauma was not there just in her mind, it was there in a system and in her body also. So I think it is there, and different people react to different ways. कोई जन बचा के रखते, कोई जन kick करते. So even that, उसका it has to be taken up and it has to be dealt with. I'm not a perfect guy how to deal with, so that point should be taken under consideration. Now, the other part about sexual harassment and sexual abuse. I think it's high time the police, as we just everybody spoke, police, politicians, public figures, especially actors. I had gone with my nieces to watch this movie, and I'm not a Bollywood guy, but they had taken me for this movie. जिसमें वो रितेश देशमुख है, कैनेडा है, ये है, वो है, सब लोग 3-4 हीरो लोग हैं, and there are 4-5 or the Jacqueline McLean सब heroines है. I don't know which movie is that. उसमें रंजीत है, हमारे पुराने टाइम का जो विलन रहता था रंजीत, वो अक्षय का डैड दिखाया गया है. And tell me.
If you come and said no, then please. No. That's a very bad movie. I said. Oh yeah. It's a very bad movie. It's an It's a very ugly bad movie, rubbish. and there was a Rubbish. big I'll hit. tell you what It was a was. big super hit. Yeah. It's a big super hit. That was such a third class movie, and I was sitting with my nieces. I repeat, I'm sitting with my nieces, and I'm going to do something. Please excuse me. Do not mind. उसमें ये कनाडा वाले ने कनाडा कुमार ठीक है he's got this part where he looks at a woman and he does this. Now we know what is that. So he's finding a woman delicious or whatever, like like an object where he wants to eat it, he wants to do whatever. And you guys won't believe, I was feeling so. I was like, are they looking at it? And they are looking at it, you know. And my other observation is these people don't realize कि ये हीरो और ये सब होके थिएटर में जो करते हैं, people get influenced. Why are they selected to be in ads and all? Because ये जो action करेंगे उसको लिया जाएगा. It will be taken. And I am telling you, believe me or not, I saw that. ये वो happening in गलियों के of Bombay. I have seen that. So that was picked up from there and normalized on the street. ठीक है? So something has to be done, ladies. I mean, all of us together. कि ये सब फालतूगिरी जो भी पिक्चर में दिखाते हैं ये सब बंद होना चाहिए. Because it gets taken up. Freeze by the same troop, okay? Houseful बोल के लिख रहे हैं. Houseful 1, 2, 3. Yeah, I think that's the third class movie. They came. The director, including the horrible director, they all went to multiple programs. वहाँ बैठ के they reenacted the same scene in one of the things. Can you even imagine? In the sense, वो जैसे करते हैं ना मूवी में वैसा करिए, and that person is doing. That's so, and that was supposed to be a family show, by the way. Family, exactly. I was very shocked. The other part, okay, so that is one thing. Whenever we can talk in extension, in depth, we can talk about that. The other part is it's my own experience that so some time ago, not too long, I had my reunion with some old friends of mine, and when this reunion happened, we were 7 of us. So and very strangely, I was the only guy who was not married. The rest, all of them are married, and we met up in a pub mein mile. And you know, as the night went on, obviously there are drinks happening, people are getting drunk, there's alcohol happening, and I was watching. These are my own friends, how they were, you know, looking and talking about other women, and I was watching, and I asked them, "Kya ho gaya tum log?" And they're all married, by the way. Okay, all of them are beautiful, wife. Like, and ये हुआ फिर that led to another you know, एक argument हो गया मेरे दूसरे दोस्त के साथ. वो night ही खराब हो गया. We had left. मेरे को separate किया एक दो जन के साथ. एक और जिसके साथ argue कर रहा था दूसरे जन के साथ. And these guys not realizing they have daughters of their own, you know. So I think men also have to realize कि what has happened to you all, you know. And इसका एक दूसरा कारण है, it's alcohol. If you notice very carefully, a lot of the crimes are happened under the influence of any kind of a nasha. Because you must have come for us also कि जब भी पकड़े जाते बोलते हैं, you know, मैं I was not in my senses, मैं नशे में था, होश नहीं था, क्या कर रहा था, ये वो blah blah blah. So nasha is also very an important part. And so all these places have to be taken care. Where what? Please, what points you brought are really valid points. See, not only men has to understand certain things, the way of, you know, behavior, but it has to be taught from the institutions, not only home but school. So once, yeah. I was coming to that, Sonia ji. ये मेरे को एक खत्म कर दो. I think it's a very because वो connected है मेरे ख्याल से. And the reason I'm saying this कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? A, because मेरे nightlife background है. So I've been around women, you know. I've been around you know, nightlife, women, you know, partied, ये वो. दूसरा एक very important point I'll say that I've also you know, in my childhood I've had a sister in my house, you know. Now I have nieces in my house. So when I was in my childhood, I used to go. I have gone. None other than my mother has sent me to get napkin. And I remember when I used to pick up and get a lot of times been wrapped up with them, hush hush, chupa chupa ke aisa hota tha. But slowly, I think now it's become a little bolder. It's become okay. But I remember, मेरे को, you know, there were these some boys who used to tease me, hey, ladies का stuff लेके जा रहा है, ये वो, और मेरे को tease करते थे, मेरे को चिढ़ाने, मेरे को psych करने देखते थे, जो एक दो बार में हुआ भी था.
And I remember the most famous dialogue that was told to me by mummy to tell them कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, because it's happening with them also, and उनको भी तो So I think because I've been exposed to all that, exposure is very important here, and I see that because Nagendra ji said that uh, our Priyanka ka jo hai rarest, I think it's gone very crazy, because right now when I'm talking to you guys, right now I have a report right now in front of me जो अभी 7:02 का report है. Rajasthan, 12-year-old minor girl gang raped by Azad, Wasim and Razak, 2 arrested, 1 भाग गया है. Now ये rarest और rare अभी नहीं लिया गया है, ये काफी ज्यादा हो गया है. And I think with the explosion of the internet, the pornography, everybody's watching. There are these TikTok videos. TikTok निकल गया, अब कुछ दूसरा आ गया है. And मैं कुछ हटके बात नहीं कर रहा हूँ. This is there. Even on YouTube, we are getting these small 1-minute videos of women dancing in less clothes, and so unka, how it must be affecting them, and when they are high, and I think they are not able to handle that situation, and that's why it's happening whatever is happening. Because in this case, the thing is, 12-year-old girl gang raped by 3 youth while she had gone to feed cattle, threatened and then kept silent. So I think ये कैसा इसको solve करेंगे issue, how it will be done, it's very, very important. If you want to say something on that, Sonia ji, after that I'll just make one point and leave. Yeah, no. As you said, as I was telling that, first thing is society. Society has to change. Law and order comes into picture after that. So bringing your child up, as you raised this very important point that you used to get sanitary napkins for your sisters, and how people used to tease you because it's a taboo, So we have never given that, the certain kind of upbringing to our boys, because it was a taboo. And if you come out with it, so you are doing something different, which is not normal. So you will be labeled. At the same time, now we are seeing a different breed where parents are allowing their kids, making them understand. And I believe, as we used to say, that you know, if you if you make one woman educated, that can make a whole family educated. But I feel when you make one boy responsible, you make whole bunch of men responsible in the society. So it's the same thing. Slowly and gradually, this will happen. And please, not only that, I have seen, like I have friends, their kids. One of my friend's son only, one of her classmates, she got sprained her skirt. Maybe it was her first jump. She got sprained, and this guy went and told her, like, I think this skirt is sprained, so you need to really take care of it. He took his blazer and gave it to her. That shows the upbringing now, which is changing, and that is quite admirable. We should spread the same awareness among boys and girls. There are certain things which are natural, so there's nothing to be shy of. Exactly. And that is one of the reasons, as you said, your set of friends, they are restricted, they're busy in their married life, so they're very bored. So when they see something new, and they see something which is out of the ambit, they get so excited, they forget, where to draw the line. So these things we have to teach our children from the beginning. So when we teach them, we make responsible men in the society. So that is Yeah, my but I take think on that. I think on that point they have to realize that why are you looking somewhere when you have your own in the house? I mean, I've never understood this thing of theirs. I mean, maybe the size, the color, It is something may be very thoda different, simple. If but you eat but if you eat the same food or same brand of things every day, you get bored. That's human nature. no, So no, people no, just Sonia find ji, on everything. this, I've had a Other lot of things, discussions. I've had a yeah, lot of yeah, we can. discussions That's what on, I'm saying. But to I'm be telling you the very open practical and bold. experience. In fact, I would in fact do it with my, and enjoy it more than in fact enforce it on somebody. Why do I But have to how even? how many men will be like you, Freeze? How many men will be like you? They don't want to do the regular stuff. They want to do I don't out know. of the box step, and they want to be there alive. आप एक concept जो foreign में बहुत चलता था, sugar daddies. So what Hmm. is happening in our society is sugar daddies. What is Mahesh Bhattu, Reha Chakrabarti? Sugar daddy. So this concept, see now Freeze is them jumofying, but these are the things. So we should not forget we are learning from the West, and we're adopting it.
but we are forgetting there are certain other aspects in the Western culture which we are not learning, which are good. So the difference, we have to balance it. And when society changes in general and the mindset changes, then the law and order, then the, because these army or these police officers, these judges, these people who are at the positions, वो कहाँ से आते हैं? हम में से निकल के आते हैं. तो जब हम वो सोसाइटी सुधारेंगे, तो ऑफ कोर्स जो वहाँ लोग बैठे हुए हैं वो हम में से ही निकलेंगे. So my point is, we need to clean our own mess first, and then we We can need put to, the yeah, blame on. we need to clean our own house, and I think unitedly we'll all have to point fingers and correct the person when he's supposed to be corrected. Let it be, if the incident happens around us, it could be the slightest. And also, again, I'm coming back to the politicians, because politicians have made some really horrendous comments on rapes and a lot of incidents, like really, really bad comments, you know, and that sets a benchmark. I think they have to, and I think again they have to be reprimanded for that, for whatever they say. They have to be very careful. But it's very sad. It's the people and of their own. Of their own parties. I'm really sick and tired of listening to this analogy and this theory of, अरे हम लोग न्यूज चैनल पे भी आते रहता है, because of few bad apples, don't generalize, let it be police, let it be lawyers, let it be police, let it be judiciary, let it be politicians, let it be anywhere. यही डायलॉग चिपकाया जाता है हमको. आई एम सेइंग कि ये few apples है, तो बाकी के अच्छे apples क्या कर रहे भाई? What are you, the rest of the good apples, doing? So I have a real thing. Question Let तो me ये भी finish. है No? ना, Let me इतने finish. सारे No? yeah. Let me finish. कि ये now, sorry, this is not few apples. This whole basket of apples is kind of rotten. और इसको या तो बाहर फेंकना पड़ेगा, या तो इसको कुछ तो एक डेटॉल विटॉल से धोना पड़ेगा. इन लोग सब लोग को ठीक करना पड़ेगा ये rotten apples को. How do we do that? I think we have to take decisions from some really intellectual people. But this has been my observation. I said that. You guys continue. And Ujjwal ji, Jai Hind. मिलते हैं. अभी मिलेंगे. Please, the limerick आप लोग and the चुप चुप के mimicry. मिल रहे हैं, आप और शरण जी बता रहे भी नहीं है हम लोग को. फिर बॉम्बे में रह के. You are open. You are welcome to join us. प्लीज सर, प्रोग्राम हो रहा है कॉफी विद शरण. Let me see now. Let me say my. देखिए ऐसा है. मैं फ्रीज हूँ, मैं कुल्फी लूंगा. कुल्फी विद शरण जी. तो आप ये पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हो ना, इट इज नॉट जस्ट मेल पॉलिटिशियंस, even female politicians. Yes, their silence, sir. It's unbelievable. No, not the silence, man. I'm telling you, in TMC 1.0, a woman was caught daylight in a moving ambassador car by 4 people in the middle of Calcutta, and they kept on. Sorry. I think it's getting a call. Yeah. So they kept on taking round and round and round. And this case was reported in every bloody newspaper. And what Supremo Mumtaz Bano says, in that particular case, it is there for anybody to go and research. He says, ये तो ऐसे है, ये cheap popularity के लिए they are trying to defame our government. Nothing like that has happened. Police never registered a case against those people. Nothing happened despite having POXO Act. So the trick here is not to reform laws. वो तो ठीक है. Implementation. अभी तो सोना जी विशाखा गाइडेंस उन लोग फॉलो ही नहीं कर रहे गाइडलाइंस. Yeah, let me complete, sir. तो इसमें the trick is not the law reform and all. Also, it is there in implementing it. Are you guys aware of Ajmer rape case? किसी को पता है? याद है? 27 साल हो गए, 27 years. More than 250 to 300 girls were trapped, blackmailed, gang raped, converted, and then they were left alone. And there were 4 culprits. All 4 are the sons of the Chishti of Ajmer Sharif Dargah, holiest of holy shrine and all that. तो ये कहीं भी हो सकता है सर, है ना, हमको ये समझना है. लेकिन उसका जस्टिस कब होगा? It has been 27 years.
So whether you blame the politician, whether you blame the police, whether you blame the law, whether you blame the judiciary, anything, fact remains that उसका justice अभी तक सही तरीके से नहीं हुआ है. For such a heinous crime, those 4 people should be put to death. Why are they roaming outside? They have become old people now. 27 साल में वो आदमी बूढ़ा हो गया भाई, उसके भी बड़े बड़े बच्चे हो गए, उसके भी पोते पोतियां हो गए. सर अभी एक और चांस है उन लोगों का, एक और चांस है. 70-year-old man can marry a 20, और अभी परसों ही आया था ना, उनका एक और चांस है जीने के लिए. बट यू नो, जोक्स अपार्ट, व्हाट सोनिया जी, you will not believe, Arun, I have worked in Hyderabad for a long time, and I was once at the Hyderabad airport, and I've seen an old man जिसके उसके दांत भी नहीं उसके मुंह में, and he's getting married, और उसको पूरा उसका बस्ती उसको छोड़ने आया है. He's full of garland, and he's getting married to such a young. I couldn't believe my eyes. I was so helpless. I wanted to save that girl. Do something. फ्रीज भाई, वो मैरिज नहीं है, यहाँ से मैरिज यहाँ पे उठा के लेके जाता है. और I know. Okay. I've worked in the Middle East also. Okay. Yeah. So now, see. You know what? Again, see. 1 minute, please. No. My 1 minute. No. My 1 minute. Okay. रुको यार. So it's very, see, again, हम लोग ना ये लास्ट 1-2 महीने से we have become a family by itself in this last 3 to 4 months. सुशांत के केस से, and then discussing, taking up topic. And I don't know, have you guys noticed, हम लोग घूम फिर के ना हम लोग उधर ही आके अटक रहे. जुडिशरी रिफॉर्म, ये रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, सब रिफॉर्म. अभी मेरे को एक चीज पूछना है, हम लोग कैसे करेंगे आगे? आई थिंक वी हैव टू रियली स्टार्ट थिंकिंग और वर्किंग. अवेकनिंग तो कर रहे, you guys are doing in your own ways. Subjects have been taken up. You will not believe, the moment I came here, immediately 2-3 telegram, I said it's on section 2, come on over here. So in our own personal way we are doing that. हम लोग कर रहे बाबा, ठीक है, लेकिन उसका चेंज जो करने का है वो तो इन लोग के हाथ में. You know who I'm talking about. तो ये कैसे, how to push this, how to get this ball rolling? I think we have to start formulating something on that also, because हम लोग घूम के उधर ही आते. Too many topics, too many कुछ, हम लोग उधर ही आके अटक जाते. We are doing, I think so, we are doing. ये लोग आके बोलते हैं कि क्या वो, what's the dialogue, डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है. आई थिंक ऑन एवरीडे बेसिस कौन करता है? इन लोग ही करते हैं, हम लोग तो कुछ करते नहीं. हाउ वी आर डूइंग इट? दीज आर द पीपल. लुक एट द नंबर ऑफ रेप चार्जेस ऑन पॉलिटिशियंस. No, अब सबके सब फेक है, सबके सब झूठ है. No. Example issue बोल रहे थे ना. Even Pragya ji was rating that, and even somebody else also told, no, one off case नहीं करो, मार दो एक को. देखो ये लोग ना, आई मीन, आई एम सॉरी इफ आई एम बीइंग वेरी ब्रूटल, आई एम सेइंग ये जब कुत्ते सब बोल के भौंकते रहेंगे ना, खाते रहेंगे ना, एक पत्थर मारो, एक कुत्ते को मारो, बाकी सब भाग जाएंगे ना. करो एक, सेट एन एग्जांपल. Maybe I don't know how you can do it, but that's the only way. Yeah. जी, सोनिया जी ये सजेस्टेड वन सोल्यूशन, पहले उसको यूज तो करो, पहले वो केस बनाओ. तो सोनिया जी ये suggested that you can register a 0 FIR from anywhere in that system, and once you log it, they will have to register it as an FIR, and within 7 days, I think they are supposed to explain. It's Shreya ka case. Let me complete, sir. Let me complete, ma'am. Let Sonia ji once again explain that. At least बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं होता, वो करते भी नहीं है. सोनिया जी आप वो प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन करो. आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज वेयर वी गो फ्रॉम हियर. श्रेया जी का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज शी वेंट टू द पुलिस स्टेशन, शी फाइल्ड अ कंप्लेंट. तो एज शी सेड दैट कि उनको पुलिस वाले बोलते हैं वो वहां पे नहीं है. द सिंपल थिंग शी कैन डू इज क्लिक द पिक्चर ऑफ द पर्सन इफ ही इज अवेलेबल अराउंड, produce it in the court through her lawyer, and say that police is lying. The IO will be called and inquired. And second point, which Ujjwal said, you always can file an online complaint about cyberbullying or cyber harassment. It goes to the centralized agency of your state, and then it is allotted to one of the particular police stations in your jurisdiction, who has to mandatory call you within 10 days and pursue this further. Yes, please. So are you indicating Sonia ji ke that the zero, I think zero ही हो गया ना, online zero FIR हो गया? No, zero separate. Cyber complaint. So cyber complaint का जो action है, that will be more fast tracked, and that ball will start rolling more than this FIR. Because see what happens when it goes to police station,
the SHO or the IO who writes the complaint, he may not complain complaint into FIR. But when you file it online, they have to answer it to the centralized center also, whether the complaint has been converted into FIR. So there is more on the head, right? So if So the they're head answerable starts there. rolling, that Okay. more people are answerable to you. So that is Okay. one of the solutions. And you asked one question, whether only the politicians are to be blamed or other particularly one police department has to be blamed. I personally have a different view here. I think, as you said, what should we do? What we are doing, Freeze, out of we 80,000 people who talk on YouTube every day about Sushant case, out of this 80,000 also, only 50,000 are doing what they're saying. So preaching other people is very easy, but doing that yourself, setting an example is very difficult. तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डाउनलोड जाके मूवी करते हैं और देखते हैं उसको यहाँ पे बाइकआउट बॉलीवुड चिल्लाते हैं. So my problem is with such people, the hypocrisy. If you want to do something, do it. Nobody's forcing you. Neither Sushant said you to do it, neither Sushant's family said to do you, or the same thing. Neither you said, neither I said, neither anybody else said. So it is our own will. So you don't need to hide it and do it. If you're doing it, do it. But then don't don't make a propaganda and try to gain something out of it. At the same time, if you're doing it honestly, of course, the change is slow because we are rotten from inside. As you said, Yeah. बास्केट में रॉटन एप्पल है नहीं. अब वो बंच ऑफ रॉटन एप्पल ने बाकी रॉटन एप्पल्स को धीरे धीरे अच्छे एप्पल्स को धीरे धीरे रॉट करना शुरू कर. थोड़े टाइम में वो भी रॉटन हो जाएंगे. तो आइदर यू हैव टू पिक अ न्यू बास्केट वेयर यू कैन पुट द फ्रेश एप्पल एंड रॉटन यू हाँ हैव मैं टू बोल रहा हूँ थ्रो. बास्केट बदल देते हैं यार. बास्केट बदलते. एग्जैक्टली. सो वो हम लोगों की खुद से ही चेंज होगा. Talking talking more about it, coming out more about it, and maybe not only talking, acting on it will do a lot of many things which can change on the ground level. जैसे अभी श्रेया जी कर रही हैं, उन्होंने गाँव को इन्वॉल्व किया है, वुमेन को अवेयर कर रही हैं, और भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं. बट उनमें से कितने लोग आके यहाँ पे फ्रीज बताना चाहेंगे? बिकॉज हम लोग स्टिल फील करते हैं ना कि मुझे टैबू लग जाएगा, मेरे बारे में ये कोई सुन लेगा मेरे को. क्योंकि प्लेटफॉर्म्स पे वही हो रहा है, जब आप एक दूसरे को नीचे खींचना है तो बोलोगे अरे अरे इसके साथ तो ये भी हुआ था ना, इसने कुछ नहीं किया उस टाइम पे. सो वी आर नॉट uplifting each other, we are pulling each other down. So that if used in a proper and appropriate manner, it can create a new India. Why not? So these changes we can bring. Politician और वो कब लाएंगे वो तो भगवान ही जाने, बट जो changes हम लोग ला सकते हैं वो हम लोग खुद तो कर ही सकते हैं. All right. ठीक है. I wanted to ask something. Like I said, that is it possible that we could propose to the government? I don't know. I mean, I don't know the right terms to use and things like that, but I think you'll understand what I'm trying to say. Is it possible that we propose to the government or the lawmakers that we take this judiciary system online? Because there are so many cases, and many of the cases, like cases can be solved online, especially the family courts and things like that. I don't think if in case of the criminals and things like that, that would be different, I guess. But at least the family courts or these special harassment and things like that, so you can take it online, na? It can be fast tracked. This only came to my mind when I saw a case. I think it was Kangana Ranaut's case or Arnab's case. I saw in the car the judgment was heard, and I was like, wow, so the courts are only shut for us and all these things go on. So this is not right. This is not okay. So things, the cases that need real fast intervention, because at last this is about a fundamental right if you think about it. So when things like this are involved, a life, it is a family life, it is about a son or a wife and things like that, and harassment is about self-respect. So at least in such cases, it can be online. The whole judiciary should be online, because then people won't be able to say, okay, later on I'll come or I'm ill or things like that. It will be like it online, so you can appear only. So it will go really fast track. So what do you think? Can we propose or do something of that sort? Shreya ji, the problem is we don't have an infrastructure. We are doing अभी मुंबई में भी हम लोग virtual court कर रहे हैं basically.
इवन इन सुप्रीम कोर्ट, इवन इन हाई कोर्ट, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी बहुत बेटर है. आप बाकी स्टेट्स में जाएंगी तो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अगर हमको किसी और कंट्री में क्लाइंट बैठा है उससे बात करने के लिए हमको 2 महीने तो एप्लीकेशन मूव करने के बाद लग जाते हैं कि हमारा वीडियो कॉलिंग का नंबर कब आएगा. तो वर्चुअल हमारे यहाँ पे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना सिस्टम है, ना हमारा जजेस को आधों को तो लैपटॉप ठीक से कनेक्ट करना भी नहीं आता, वो स्क्रीन कैसे चलाएंगे. अब सुप्रीम कोर्ट में ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, हाई कोर्ट में ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट जो आप ये मैट्रिमोनियल केसेस बोल रही हैं ये सेशंस में लगते हैं. वहां पे वी डोंट हैव द फैसिलिटी. आधे टाइम तो इंटरनेट नहीं अपना नहीं चलता, उनका तो छोड़ ही दीजिए. हम लोग चले जाएं तो हमारा फोन नहीं चलता है वहां पे. तो हाउ विल दिस हैपन? द प्रॉब्लम इज आवर सिस्टम में So है ही नहीं कोई. now when Modi ji is saying digital India, so I think this should be the first thing you should be working on, like how education at least you started and many courses. I think this should be the second most important thing. Not only has it started, but It has unfortunate started. part is not only has it started, but the unfortunate part is our judges, our staff has to still get used to this new system. So until they get used to it, it will take some time. So it has started already. It's not, but at the lower level, like state, matrimonial courts, and all that, it will take time because staff is not that well equipped to handle all these things. Supreme Court may we have screens. Even judge types a judgment or shows the order, it is there. You can read through it. But Supreme Court का standard हमको session court में लाने में time लगेगा. It will not happen in a day. Yeah, a quick thing in this is when what Sonia ji and Freesdam also told is a very good point because Shreya ji from the medical field, right? Medical field में इतना advancement आ गया है. You know who are the first people who oppose it? Or the senior most doctors, because उनको change में they don't believe in the changes. So when the senior doctors so called, they are all called experts. Experts are not ready with this. Let's change them only then. वो क्या ऐसे करेंगे? They are all experts, no? Then Change them only. इसलिए मैं बोला ना ये basket, ना फेंक दो ये कढ़ाई, ये frying pan, नया लेके आओ, अब देखो आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है, और आपके लॉयर के पास जाओगे, कौन से लॉयर के पास जाओगे? उनको क्या देख के जाओगे? He has got experience or she has got experience, वो क्या से लड़ेगा? All this thing ना, डॉक्टर के उसके पास जाओगे. हाँ, वो डॉक्टर और जज क्या पुराना गाड़ी चला रहा है? उसने भी चेंज किया ना, नया गाड़ी लिया, नया सेलफोन लिया, वो सब चेंज बराबर है. उसका फोन उसको चलाना आता, वो ड्राइवर गाड़ी के लिए ड्राइवर है, बट जब कोर्ट में जजमेंट लिखना पड़ेगा ना, ड्राइवर mentality what is happening. I'm telling you the ground facts, ma, because I am when I went to these people, when I try to put in, इन लोग ना मानते नहीं है. They are like, oh वो सब छोड़ो यार, let us go back to the thing. So when government puts it, no, government is trying to implement it. किसको उसको लेके करना है? ये जो बैठे हैं ना, उन लोगों को करना है. बाबूस, they are the people who are not doing it. No, Arunji, I don't believe in that because right now, see, right now in High Court in Mumbai, we had a circular which said if you want to do virtual hearings, please do it from your house. People who are comfortable with it, they do it, but then we have to maintain. अभी कोई बनियान में आप जज के सामने एक बनियान में चला गया भैया. मतलब Recently, Mr. Sanghvi was caught with his pants off. Exactly. So there are so many things. One of the famous lawyer was smoking cigar. So there are so many things happening. So we are still not used to that virtual hearings. The thing is, even if system changes, we have to also adapt that. ना adaptation में एक issue है. तो बड़े cities में तो फिर भी ठीक है. छोटा cities का कैसे करेंगे? We have to first make them tech savvy. See, I am not also very tech savvy, but जो basic चीजें वो मैं कर सकती हूँ. बट व्हाट अबाउट दीज गाइज जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है. सो वो जो डिजिटल इंडिया श्रेया जी आप बात कर रही हैं, वो हमारे देशवासियों के लिए मोबाइल तक ही कायम रह गया. अगर उन्होंने उससे ऊपर सोचा होता तो अभी एटमॉस्फेयर भी चेंज हो गया होता. तो आप अपने बेटे को एक बहुत हाई एंड एक्सपेंसिव मोबाइल तो लाके दे देंगे, लेकिन आप उनको एक लैपटॉप लाके उनको बोलेंगे नहीं कि इस पे पढ़ाई करो. So that change also has to come within, I feel, और तभी जाके वो implement होगा. अब जज के सामने आप इतना भी इज्जत नहीं रखोगे, बनियान में स्कूटर चलाते हुए अपेयर होगे, तो कैसे चलेगा भैया? So that change we have to see. I will leave. Thank you very much for having me over and fantastic. And I just want to say, I join hands and I know my eyes are very much on the comments also. I humbly request more and more women
to come forward and speak. I'm purposely saying this because I know why I'm saying this. There are women who are still not coming forward. And I think y'all know who we are. I'm talking to y'all. Please come forward and speak on not just this subject, but get your heart out. It's trust me, it's the need of the hour. It's the want of the hour. So Jai Hind, Jai Bharat, Ujjwal ji, doston, deviyon, hum milte hain very soon. Jai Hind, Jai Thank you. Bharat. Take care, Thank you. guys. Love you all. Bye. जय Yeah, हिंद good जय night. भारत हर हर महादेव हाँ ओ Sonia ji, हाँ I जी wanted to Shreya ask ji. over here. Now, I don't know what the rule is, but is it a law that you have to file all these things in the state language and things like that? Or what is it like? Because there were 2, 3 cases from the villages, okay? Now, they are too illiterate totally. They don't even know Marathi, English, Hindi to write or to read. Now, how do you deal with such things? See, Because this is generally there is a person. If you're filing on behalf of them, so you will be the person who will be dealing with the paperwork. So you have to read through them all the documents and take their signature. I'm not into this. I'm not into this. I just knew because I came across such people, and they don't know what the FIR is written. They don't know what all is there. Now, leave aside taking help of anybody. If I am there or if anybody is there to help them, that's the best thing. But if they themselves are going, because such cases have come in my contact, that the people, they have registered a wrong case. Now, what about that? So you So, can can always a get it amended. Has it been filed in the court? You can I don't ask for the amendment, or you can withdraw it and refile it. So there's no problem in that. If you feel it is a wrong case, you can always withdraw and refile the case. You can ask the judge. tribal people. I just want to say that this is a huge glitch again. Because if this verbal thing is also not taken up when the statement is taken, especially i- if it should be compulsory, I mean, if that is not there, you don't know what is written in such cases. Because then they don't want to follow up again. First of all, it takes a lot. And Shreya, plus, I'm sorry, but you have missed one point here, I guess. Whatever a statement has to be taken, it has to be read to the person if he's not educated enough, and then only his signatures has to be taken. It has to be read to him or her in the language they understand. This is the basic rule of law. So whoever signs the document has to understand what he's filing. this awareness also has to be there. This also is not there. Like I'm why did I put this up? I haven't gone through this, but people have come in contact with, this is the ground reality, that they say something and what is filed is something else, and then they don't even have the courage again, because till then these women or these girls, they are literally asked to shut up and over. That is what is Shreya, happening. that was the case. What happened with Sushant's family in Mumbai? They were given the complaint copy, which was there. They were not read what was written there, and they were taken the signature, and they believed on them. So most of us are not aware of our rights in totality, and that's why we don't follow them. So it's a very simple rule. If you file a complaint and they're writing in their language, which is not easy to understand for you, then the best thing is either give yourself a written complaint in the language you are comfortable and take a receiving copy from the police station. Or when they ask you, yeah, they have to read you per se per line and then only take your signature. So this awareness purpose is what is our aim. Ujjwal ji and me have and Arun ji have decided that we will be coming in sessions where we're going to talk how FIR should be filed, how complaints should be filed, how you should take copies and receivings from the agency so that it helps you in court cases in future. So we are going to start from basic scratch again. But for that, we are trying that how we should come. It takes some time and planning. We don't want to just come and talk here. So bit of research, bit of effort of how to produce it before you people, so that it becomes easy for you guys to understand, and that solves the purpose. Otherwise, अभी आप मुझे बोलेंगे मैं अभी चालू हो जाएगी. But the point Yeah, yeah. point is उसमें से आप कितना समझेंगी. Sonia ji, जी, let me Arun. now just begin with 10 seconds. Priya ji has raised very, very important point.
very important action points for all of us. Not only us, even the people like organizations like National Commission for Women, yeah, and even your NCPCR, as well as your government agencies as well. But you are right. We need to move in a very organized manner. Abhi Dhananjay ji has been listening to us the entire discussion very patiently. So let's hear his point of view as well on this. We've already been, guys, we've been at it for 4 hours. Yeah, so not to worry. But let's hear Dhananjay ji. Yeah, Dhananjay ji, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shri Ram. प्रभु चरण स्पर्श मैम नमस्ते, जय हिंद जय भारत। श्रेया जी नमस्ते। मैं ऑलमोस्ट सारा सेशन सुना। आज मेरा नेटवर्क में बड़ा तकलीफ है, 4 बार जुड़ा 4 बार ड्रॉप हो गया। एनीवे दैट इज अनदर थिंग। मैम ये स्टार्ट कहाँ से होता है? जैसे शुरुआत आपने जहां से करी ना, आई वांट टू कम ऑन दैट। ये शुरुआत जैसे कि स्कूल में अगर ऐसा कुछ होता है, कोई लड़की को किसी और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, एमकॉम में सीधा बोलूंगा, कंप्लेंट जाती है मैनेजमेंट के पास में। मैनेजमेंट के पास में जब कंप्लेंट जाती है स्कूल में, तो मैनेजमेंट दोनों पक्षों को बुलाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लड़के वाला क्या है, थोड़ा सा फोर्सिबली उसको दबाने की कोशिश करता है। अगर दबाने की कोशिश मतलब फोर्सिबली वो कर पाया तो ठीक है, और इवन दो अगर नहीं फोर्सिबली कर पाया तो मारामारी की धमकियां आती है। और उससे भी अगर ये हो गया तो उनकी घर की, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, और नॉट ओनली वन, मेनी अ टाइम्स उनके घर की औरतें आ जाती है और वो सबकी लड़कियों के बारे में वहां बोलना चालू कर देती है, गेट पे खड़ा रह रह के जोर जोर से, कि तेरी लड़की किसके साथ घूमती है, हमें मालूम है इसकी किसके साथ। तो हम क्या होते हैं, हम चुप हो जाते हैं, हम उस चीज को ना, कंप्लेंट्स को वापस ले लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में जब ऐसी चीजें होती है तो हमारे सीनियर या जो भी है, जैसे अभी मैंने ये स्कूल का बात बताया, तो स्कूल की मैनेजमेंट, ओ यार इसको दबा देते या शांत कर देते हैं, नहीं तो हमारे स्कूल की बदनामी होगी, हमारे कंपनी की बदनामी होगी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बदनाम होगा, लाइक दैट। और उससे क्या होता है फिर, वो जो एक्यूज्ड होते हैं, वो बेचारे विक्टिम जो है, वो विक्टिम तो डिप्रेस होकर के निकल जाते हैं। वो एक्यूज जो है, वो एक्यूज का मनोबल और बढ़ जाता है, एंड दे कीप रिपीटिंग द सेम थिंग विथ मेनी मोर टाइम्स। तो ये एक मैंने पर्सनली बहुत जगह देखा है, नॉट ओनली इन स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, या कंपनीज कॉर्पोरेट्स आल्सो, बहुत जगह देखा है। दूसरी बात, सर आपने जो अजमेर की बात करी, वो तो फिर भी 27 साल पुरानी बात है। ठीक है कि अभी उसमें कोई जजमेंट आया नहीं है। 6 महीने पुराना आप भोपाल का प्यारे मियाँ का कांड भूल गए? 6 महीना पुराना। आज किसी भी, ना किसी न्यूज चैनल पे, ना किसी किस, नो वन हैव इवन अ वर्ड ऑन हिज टंग अबाउट दिस केस। 6 ही महीने हुए हैं, क्या निकाल आया, आगे क्या बढ़ा उसमें? तो वो अकेला प्यारे मियाँ तो होगा नहीं, अगर इतनी 300-400 लड़कियां उसमें अब्यूज हुई है, तो कहाँ है बाकी के आदमियों की पकड़ क्यों नहीं हुई, धरपकड़ क्यों नहीं हुई? धनंजय या जी, प्लीज प्लीज। वो जो केस है ना, वो भी बहुत डिटेल में हम सबको डिस्कस करना चाहिए, एक सेशन पूरा लगता है। ऑब्वियसली 6 ही महीने पुराना है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसमें सिर्फ एक ही आवाज उठ रही है, नितिन शुक्ला की। नितिन शुक्ला जी की। बाकी कोई नहीं बोल रहा है उसके बारे में। यस, इवन वहां पे तो हम मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट है, मामा शिवराज है, उसके बावजूद भी अगर उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, या तो अगर कोई मतलब प्रेशराइजेशन है, तो ये तो हमें लाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये जो हम रोज लाइव आते हैं, चाहे सुशांत के लिए आवाज लड़ाते हैं, तो हर एक 10 मिनट उस केस को देवे, लाइक दैट हमने करना चाहिए। क्यों नहीं करते हम? तो हम यही कहते हैं, या हम ये कह करके रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को क्या जो कहना है कहने दो ना यार, कहने दो ना, लोगों को क्या करेंगे, कहेंगे, वो लोगों का काम है कहना। तो बट
इसी तरह से हम मतलब कितने साल तक हम डिप्रेस होते रहेंगे? क्या हमारी मतलब बेटे बेटियों को, एक तो हम घर में शिक्षा देने को तैयार नहीं है बच्चे बच्चियों को, तो ये धनंजय जी, बहुत बड़ा मतलब वो क्या कहते हैं ना उसको, बेस चेंज हमें लाना पड़ेगा। आवाज तो अभी हर इसमें मैं तो बोलता हूँ ना कि बस खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, रेज द वॉइस। जैसे फ्री सर ने भी कहा कि वो रॉटन एप्पल्स, मैंने फ्री सर को ही एक ये कहा था कि वी हैव टू क्रश एटलीस्ट 2-3 मौसम्बीज। तो ये मैंने उनको कहा था, वो समझ गए थे व्हाट आई मीन टू से। कि जब तक ये 2-4 मौसम्बियों को काट वो क्रश नहीं कर देंगे ना रोड पर, जैसे अरुण सर ने भी यही कहा कि थोड़ा ब्रूटल वे ही वाज स्पीकिंग, मैं भी वही बोलता हूँ, जब तक 2-4 मौसम्बियों को क्रश करके जूस नहीं निकालेंगे ना, इट विल नॉट कम ऑन द ट्रैक। सॉरी, अगेन I'll just put in one word. अभी आपने देखा होगा ये कुत्ते पकड़ने का वैन आता है ना, उसमें ये कुत्ते को पकड़ के लेके न्यूट्रल करके छोड़ देते हैं, उसके बाद वैसे ही कुछ एक्चुअली वो साउंड भी आएगा ना, सब कुत्ते भाग जाते हैं। वैसे इनको करना है, जो भी करे है उनको पकड़ के लेके जाके 2-3 को करो, बाकी सब ना वो उनके मुंह से निकलेगा भी नहीं कुछ भी। सर सामने आके धनंजय जी, बकेंगे कि सामने आके बकेंगे। धनंजय जी, एक मिनट रुकता हूं आपको। सोनिया जी, देयर इज एन इम्पोर्टेंट सजेशन फॉर यू, आप जरा रिस्पॉन्ड करना इस पे। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्चुअल जो क्या हो रहा है वो बता रहा हूँ। नाइजीरियन गवर्नमेंट लास्ट ईयर, इज देयर फाइनेंस मिनिस्टर on a visit to India, ऐसे कोई इसमें कॉन्फ्रेंस में he was interviewed by Indian Express and कुछ issues डिस्कस कर रहे थे। Rape is actually a tool which is used to take out enmity and subjugate rival community in Africa in a very big। तो उनके उनके प्लीज लेट मी फिनिश। तो उनको ये इंटरव्यू किया गया उसके ऊपर कि व्हाट इज योर थिंकिंग ऑन इट। तो उन्होंने बताया कि लुक, आई एम नॉट गिविंग यू माय पर्सनल ओपिनियन, वी एज अ गवर्नमेंट, नाइजीरिया एज अ गवर्नमेंट हैज टेकन अ रिजॉल्व, है ना, दे हैव पास्ड अ यूनानिमस डिसीजन that we will pass a law very soon where chemical castration in addition to the legal sentence will become mandatory for convicted people. So what do you say, why should we do that in India as well? Sonia ji. So I have been saying this from very long. It should be done for once and for all. If you know the cause and if you know the root, what is the problem? Do the surgery, finish it. So I legally feel that there should be certain changes in the legal system where, if we remember the Nirbhaya case also, if we come to that, there was one of the accused who was a minor, right? And he was given the liberty that he has to go to the minor court, post act ke andar usko charge kiya. I'm saying if the crime is heinous, how can you define the child's mindset is not that developed that he can do that heinous crime at this stage? Why will you think that he's a child? And it was just, I think, 5 or 6 months left for him to turn 18. So the crime should be not judged on the age basis. It should be judged basically on the basis of the outcome of that crime or what was the crime basically. आई एम इन फेवर ऑफ इट सर, मैं तो हमेशा। और धनंजय जी की बात का जवाब देती हूँ सर। एम कॉम या आपका सी कॉम, ये जो आप बोलते हो सी कॉम एम कॉम, मेरा बात एक मानना है, हाँ, मेरा एक बात का ये मानना है, ये उज्जवल जी से भी मैंने सीखा है, हमें अपनी बेटियों को मिस वर्ल्ड बनाने से अच्छा है हम उनको मेरी कॉम बनाए। कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए खुद तो खड़ी हो सकती हैं। मिस वर्ल्ड बन के क्या हो जाएगा? 5 साल तक 10 साल तक वो खूबसूरती रहेगी, उसके बाद क्या? उसके बाद अगर उनमें सशक्तिकरण नहीं है, वो उनमें शक्ति नहीं है लड़ने की, तो वो जीवन कैसे चलाएंगी? तो मेरी पापा की परी को पापा की परी ना बन के पापा की परी बनते बनते अगर वो एक टोटालिटी डेवलपमेंट भी हो जाए
तो उसमें क्या बुराई है? और यही चीजें हमको अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। तो ना ही कोई एम.कॉम ना ही कोई सी.कॉम कुछ कर सकता है। मैं जहाँ पली बड़ी हूँ, जिस राज्य से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे आजकल लव जहाद का बहुत किस्सा चला हुआ है, आप लोग जानते हैं। और हमारे यहाँ पे जब मिलिटेंसी शुरू हुई थी, तो जब हिंदू लड़कियां घर से स्कूल जाने के लिए, मेरी कजिन्स की बात बता रही हूँ, जब वो स्कूल जाने के लिए निकलती थी, तो ये बोला जाता था उनको कि अब तो हम तुमको ले लेंगे, तुमसे शादी कर लेंगे और तुम्हारे माँ बाप तो चले जाएंगे, तो तुम तो हमारे गुलाम हो जाओगे। These were my cousins who were studying doctorates or who were in medical field, studying that time in medical colleges. The mindset was in our community that you have to fight back. So we fought back. And that is the thing I want in every community. अपनी बेटियों को घूंघट से ज्यादा घूंघट के अंदर स्ट्रांग बना के रखिए। उनको सिर्फ घूंघट का महत्व ये ना समझाएं कि वो चेहरा कवर करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी कवर करके रखें, लेकिन जब दिखाने की जरूरत आए तो वो घूंघट उठा के अपना वो वाला रूप भी दिखाएं जो सशक्तिकरण का है, जो नारी शक्ति का है, जो महिला के अंदर जो आत्मशक्ति होती है उसका हो। तो हमारी कंट्री में बहुत सारी चेंजेस खुद हो जाएंगे। तो जैसे उज्जवल जी बोलते हैं उन्होंने अपनी बेटियों को सिखाया है मार्शल आर्ट्स एंड ऑल दैट। दीज आर सेल्फ डिफेंडेंट टेक्निक्स जो हैं, दे ऑलवेज हेल्प। इससे आप कुछ कम या ज्यादा नहीं हो जाती हैं, बट इट एम्पावर्स यू इन अ वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। उज्जवल जी को पता है, मैंने कॉलेज में बहुत बॉटल्स फोड़ फोड़ के लोगों के सर फोड़े हैं। आई यूज्ड टू एक्चुअली बी क्रेजी, आई यूज्ड टू पिक अप द बॉटल्स एंड थ्रो, एंड आई यूज्ड टू बी ये वन आपने एक बार पर्सन। बताया था लाइव पे। जी, और ऐसा ही नहीं धनंजय जी, मैं तो कॉलर से भी पकड़ पकड़ के घसीट के लेके जाती थी जब तक पुलिस स्टेशन ना पकड़ू। वंस माय फ्रेंड वाज उज्जवल जी इन मार्केट, शी वाज physically touched and assaulted. I got hold of that guy in the market, dragged him in GK Market M Block, and took him to the police van. And people were saying, "What is wrong with you? Why are you acting so violent? Are you mentally disturbed?" No, I am not disturbed. You guys are disturbed because you don't understand. That guy is standing there, he can do it to n number of more girls coming to that market. Just because he touched you and you left it, oh, I don't want to raise the issue because you are that in crowd. No, this is what is issue. Raise it. Once you put a full stop, these people are gonna stop. Otherwise, the change will never happen. Yeah, absolutely. This one thing I'll add, the so-called the in thing, right? Oh, I'm wearing the latest clothes, latest brand things. Those are all not ये in thing. ये in thing जो है ना, जब सोनिया जी बोल रहे हैं ना अभी, दूसरों के लिए जब खड़े होंगे ना, दूसरों के लिए खड़े होंगे जस्टिस के लिए, अगर आप भी कूदेंगे, चुप नहीं बैठेंगे ना, दैट इज द इन थिंग। इफ यू आस्क मी, दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न। ठीक है, दूसरों को जो जो हुआ है, मेरे पर नहीं हुआ, मेरे बेटी की नहीं हुआ, मेरे बेटे बहन के ऊपर नहीं हुआ, इसलिए मैं चुप बैठूंगा, दैट इज नॉट एन इन थिंग। दैट मीन्स you are as, even I mean I'll tell you सोनिया जी, even animals stand। ये कुछ तो हुआ है उनके उनके यू नो फैमिली में, अगर उनके बच्चों पे, वुमेन पे और किसी का भी जुर्म हुआ ना, इमीडिएटली दे कम एंड स्टैंड, ये द एनिमल्स। ये आपने ह्यूमंस को क्या हो गया यार? अरुण जी, आप तो एनिमल्स की बात कर रहे हैं, मैं तो कभी कभी, मेरे कजिन ब्रदर्स इतने बड़े हैं। एक बार उसका किसी का शादी हो रहा था, तो सम गाय वाज ट्रबलिंग हिम व्हेन वी केम आउट, आई तो रैन आफ्टर देम, दे थॉट आई एम क्रेजी, आई एम अ क्रेजी वुमन, बट इट इज नॉट, आई प्रोटेक्ट माय कजिन ब्रदर्स आल्सो। सो आई यूज्ड टू से देम, तुम वो क्या राखी वाखी नहीं बंधवाओ, मेरे को बांधो, मैं तुम लोग को प्रोटेक्ट करेगी। सो आई वाज गुंडा ऑफ माय हाउस ऑलवेज। So it is Absolutely. not about that because you're a woman you are less. You show one time courage and दूसरी टाइम ना आपसे वो बदतमीजी करने में वो इंसान को डर लगेगा। आई ट्रस्ट मी ऑन दैट। आप एक बार करके देखिए, वो जो एम्पावरमेंट आपको फील होगी ना, nothing can beat that feeling. That's the real empowerment. That is what I'm talking about, Sonia ji. Not these kind of the झंडा उठा के हाई टी मीटिंग रख के, कोई बड़े बड़े होटल में रख के हम वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करेंगे, वो सब ऑल बुलशिट। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल फील बैड अबाउट इट, बट दैट इज द रियल रियलिटी। उन लोग सिर्फ चाय नाश्ता बिस्कुट के लिए खर्चा करने के लिए जाते हैं वहां पे, अपने गॉसिप के लिए। ये असली जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, जो अभी आज श्रेया जी आए हैं, प्रियंका जी आए हैं, सोनिया जी बातें कर रहे हैं, और लॉट ऑफ पीपल आर देयर, that is the real empowerment. If you have guts, talk about that, not sit in a high profile meeting and talk. Yes, और धनंजय जी।
मैम एक चीज और कि देश में 2.5 लाख गांवों की ग्राम पंचायत तक तो फाइबर नेटवर्क पहुंच सकता है। तो 2.5 लाख जुडिशियरी तो होगी नहीं हमारे पास, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट्स वगैरह, तो वहां पे नहीं पहुंच पाता। वो तो और ज्यादा यूजफुल है। तो ये चीज मतलब क्या विल नहीं है गवर्नमेंट की, या जो भी स्टेट्स है, स्टेट्स के अंडर आता है, तो स्टेट्स नहीं चाहते कि वो मतलब डेवलप हो जाए, तो वो एक इशू है। तो गांव सर तक पहुंच रही है, तो आप जुडिशियरी तक क्यों नहीं पहुंचने देते? मतलब आपके जो हथकंडे हैं वो चलेंगे नहीं। यू विल नॉट बी एग्जैक्टली अ अगर लेटर दैट यू इतना विल। इतना ओपन हो गया धनंजय जी, तो जो केसेस में अंदर होता है वो ओपन हो जाएगा ना, वो कैसे कर पाएंगे? अभी देखिए हम लोगों का एक बहुत सिंपल सिस्टम हो गया, आप केस फाइल कीजिए, केस लिस्ट हो जाता है, लिस्टिंग का जो प्रीवियस ऑर्डर है वो तक आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। अभी छोटे छोटे केसेस में अगर ऐसा होने लग गया तो बंदा जो क्लाइंट है वो खुद ही पढ़ लेगा ऑर्डर, उसको वकील साहब के पीछे भागने की जरूरत क्या है? वकील साहब उससे 5,000 रुपए एटेगा कैसे? सो ये जो पूरे सिस्टम में गड़बड़ है ना, वो ठीक करने की जरूरत है। और मेरा प्रभु एक मजेदार एक बता। चीज, ये एक जो है छोटी ना, सी चीज मैं बता देता हूँ कि मैम आपने बोला कि बहुत सारे जजेस ऐसे हैं कि जिनको नेट कनेक्ट करना नहीं आता वगैरह। अब मैं ऑटोमोबाइल फील्ड से बिलोंग करता हूँ। हम लोग लड़कियों को या लड़कों को रखते हैं वो फॉलो अप के लिए, रिमाइंडर्स के लिए, उनके लिए रखते हैं। हम लोग उनको हर चीज की ट्रेनिंग देते हैं। 8,000 10,000 कमाने वाली लड़की, बीए ग्रेजुएट 12वीं जो भी आती है, पहले कैसे नेट कनेक्ट करना है, आपके पीसी में ट्रबल आया, आपकी साइट नहीं चली तो आप कैसे ये करेंगे, पूरा 1 हफ्ता उनको ट्रेन करते हैं हम। आपका पूरा कंप्यूटर जो है, उस कंप्यूटर को पूरा छुट्टा कर देते हैं, कि सारी केबल निकाल देते हैं, अभी लाओ आपका अपना कंप्यूटर आप इंस्टॉल करो, कि कैसे, मतलब अगर हम नहीं है, कोई नहीं है, तो आपका काम नहीं रुकना चाहिए, कि कैसे लैन लगानी है, कौन सी केबल कहाँ लगेगी। हम इतना एक फॉलो अप करने वाले लड़की को हम इतना ट्रेन करते हैं। 10,000 रुपए की सैलरी होती है उसकी, ज्यादा भी नहीं होती बेचारी की सैलरी। और ये 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रुपया सैलरी लेने वाले लोग अगर ये कहेंगे कि हमको नेट नहीं कनेक्ट करने को आता, तो इजंट इट स्ट्रेंज? सर स्ट्रेंज ये भी है, जो हमारा जो सिस्टम है ना, जहाँ पे हम बैठते हैं कोर्ट्स में, वहाँ सिग्नल नहीं आते। आधे जजेस तो छोटे छोटे शहरों में जो हैं, दे आर नॉट वेरी टेक savvy, तो आप लगा तो देंगे उनको। मैं वही बोल रही थी, अडेप्ट करने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप उनको 8 दिन के लिए सिखा रहे हैं। ऐसी ही ट्रेनिंग जब हम जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करते हैं, जो ये सेशन कोर्ट्स के लिए हम लोग एग्जाम क्लियर करते हैं, उस टाइम पे आप जजेस को वो ट्रेनिंग देना, क्योंकि हमने आज से पहले कभी वर्चुअल कोर्ट्स किए नहीं है, ये अभी शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक्स। बट अगर अब ये ट्रेनिंग, जब जुडिशरी आप एग्जाम क्लियर करते हैं, जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जब वो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं तो उनको ये ट्रेनिंग भी दीजिए ना, कि कैसे आप कर सकते हैं। बट अभी जो नई जनरेशन आ रही है, दे आर टेक सेवी। तो आप अगर कल को बोलेंगे वर्चुअल कोर्स चलेंगे, तो बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चले? सर मैं वही कह रही हूँ, एडेप्शन और टाइम चेंज में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। सोनिया जी, वर्चुअल कोर्ट लेवल तक आने के लिए उसके पहले एक स्टेज और है, जो हमारे सिस्टम को पूरा ट्रांसपेरेंट। आप सारे जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो लोकल चैनल पे कहीं पे भी लाइव अवेलेबल। जिस दिन ये लाइव रिपोर्टिंग शुरू होगी, ऑटोमेटिकली आपके देखना, जितने अनाड़ी कोर्ट इन्होंने बना के रखे हैं ना, हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट है, इंक्लूडिंग सेशन, वहाँ आप वो खोल लो, आधे से ज्यादा केसेस में ये डिस्पोज ऑफ केसेस विद इन सेकेंड्स। मैडम, एक दिन में 400 हियरिंग करते हैं वो केस, कैसे पॉसिबल है? एक जज के लिए कैसे पॉसिबल है? 400 केस निपटाते हैं भाई। तो उज्जवल सर ये आपको है, इसका, जी जी जी, इसमें अगर आप सीधा इसको ट्रांसपेरेंट कर देना, तो बोल रहा हूँ श्रेया जी का भी बहुत सारा प्रॉब्लम चला जाएगा, और बहुत सारे लोगों का, क्योंकि एक बार वो रिकॉर्ड हो गई थी, एक बार वो लाइव रिपोर्ट हो रही है, लाइव रिकॉर्ड हो रही है ना, तो फिर ये सारे करतूत जो है या तो सामने आ जाएगी या वो नहीं कर पाएगी। ये बहुत बड़ा
कदम होगा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, और इसको रोकने के लिए धनंजय जी, यही जज श्री न्यायमूर्ति श्री ही रिस्पॉन्सिबल है। ये नहीं चाहते ये सब पूरा अच्छे से लोकेट करना, तो बहुत कुछ है इसमें, गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, वो सब ठीक है, लेकिन तो रियल रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज द जजेस themselves. Yeah, sir. I और मेरे completely agree, सर, sir. और नॉट ओनली दैट, मेरा एक और चीज मानना है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में इतनी ट्रांसपेरेंसी है, आप देखेंगे उनके ऑर्डर भी आप पढ़ लीजिए, पुराने सारे ऑर्डर केस में क्या हुआ था, स्टेप वाइज आपको मेंशन मिलेंगे अगर आपने अपना केस डाल दिया। बट सेशन कोर्ट में वो बोलते हैं अपडेट कौन करेगा? अरे कितनी मुश्किल है अपडेट करना, कितना टाइम लगता है, बिकॉज दे डोंट वांट द रेजिस्टेंस जो है ना, अभी इतनी छुट्टियां मिल रही हैं, इतना बेनिफिट मिल रहा है, they don't want to get new things involved in their life to make it difficult for themselves. So judiciary में वो problem है। मैम आपसे मेरे दो और छोटे छोटे सवाल है। धनंजय एक तो जी, मैंने सुना है धनंजय जी, एक जी मिनट, सर, जस्ट टाइम चेक, इट इज 4 hours 15 minutes. नहीं मेरे बिल्कुल एक एक लाइन के है, सर क्वेश्चन छोटा होगा सर, आंसर बड़ा होगा, बिल्कुल ये अपने ऐसे नहीं टाइप हो जाएगा, वो भी इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, no, हाँ, there is no offense, sir. Please don't take it offense. What I'm saying is, we are having an extended session also on the same thing. दूसरा सेशन भी करेंगे, because it is just in the for सबके लिए, no, 4 बजे 4:30 बजे के ऊपर हो रहा है, तो then it becomes a lengthy session, जो बहुत लोग नहीं देख पाएंगे. Lot of good points will get vanished. That is what the only thing I have. So ओके yeah. तो मैं बड़ा वाला सवाल छोड़ देता हूँ और छोटा सा एक लेता हूँ। मैम अभी 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कुछ या मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक सुझाव आया है। एम आई ऑडिबल? यस यस यस। कुछ सुझाव आया है कि वकीलों ने मतलब नैतिकता रखनी चाहिए और उन्होंने गलत सलाह सूचन नहीं देना चाहिए, कुछ एक्यूज को बचाने के लिए फालतू के या ऐसे अनैतिक हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए। वो क्या था, वो मैंने कहीं सुना तो सही, लेकिन उसका ब्रीफ नहीं मिल पाया, या तो वो क्या था, कुछ आपको आइडिया है? आई या डोंट थिंक आज नहीं भी सुप्रीम हो तो कोर्ट ने कल बोला नेक्स्ट है। सेशन में थोड़ा सा नहीं नहीं उसमें नहीं, लाइट दी। मैं बताती हूँ, आप जो बोल रहे हैं वो बार काउंसिल ने रेज किया है कि लॉयर्स शुड refrain themselves from making any comments on the judiciary or the judicial system। वो ये था, एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर आप जो भी आपके जो नैतिक जिम्मेदारी है एज अ लॉयर, अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं और आप यू आर यूजिंग रॉन्ग मीन्स टू प्रोटेक्ट योर client, that is affecting judiciary in a wrong way and bringing it in a negative light. So the lawyers should be very careful of their acts to protect their clients and not use wrong means। ये उनका एक सजेशन था जब वो कह रहे हैं कि लॉयर्स को क्या करना चाहिए। So this is what ओके it was। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाकी थैंक यू नेक्स्ट थैंक यू। सवाल, हाँ एक सर, सवाल आप मैं नेक्स्ट अगली बार सेशन में, पूछूंगा। अभी क्योंकि हमने इसमें वो भी करना है कि हमको कैसे इसको बदलना है, व्हाट वी कैन डू, सो श्योर, वी विल बी कवरिंग दैट इन द नेक्स्ट सेशन एंड अदर पार्ट्स ऑफ इट। तो सॉरी फॉर दैट सर, थोड़ा सा टाइम नो रिस्ट्रेन हो गया नॉट है। एट ऑल, एवरी टाइम आई एम स्टिकिंग विद यू पीपल ओनली, डोंट वरी। प्रभु चरणों में थैंक हमेशा पार्थ तो हमेशा प्रभु के चरणों में होगा ना बैठा हुआ। थैंक यू उज्जवल जी, थैंक यू धनंजय जी। Let's take quickly Sachin ji and then Shreya ji and conclude it today। Sachin ji, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shri Ram। Sachin जय ji। श्री राम, जय श्री राम एवरीवन, जय श्री राम। नमस्ते उज्जवल जी, नमस्ते धनंजय जी, श्रेया जी नमस्ते, नमस्ते सोनिया जी सर। नमस्ते। नमस्ते सर। मैडम सॉरी, मुझे टॉपिक ही नहीं मालूम, मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। Sexual harassment was our topic today। ओके 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 ओके, आई कैन रीड नाउ। या ऑब्वियसली it's one of the biggest problem, not only in movie industry, but this is prevalent in every industry nowadays। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में भी देखोगे तो वहाँ पे भी बहुत ये प्रिवेलेंट है सेक्सुअल हरासमेंट। अभी वो छोड़िए, अभी यूट्यूब में भी चल रहा है आजकल सेक्सुअल हरासमेंट, सुशांत के नाम पे भी हो रहा है सेक्सुअल हरासमेंट। No sir, that is not sexual harassment, that is cyber cyber crime, bullying, cyber harassment। yeah, cyber harassment, but it also includes sexual harassment because certain sexual libido was used।
this particular thing, I think there need to be some stricter law against the sexual harassment. Because, one second, madam. Sonia ji, I'll Yeah, just, yeah, yeah, I'll please just say make your closing comments, please, and we will be taking it again. So you're most welcome to join us. I'm just very happy कि this topic was a very good topic today, and the discussion was also very good. And about the judiciary that we were talking, तो मुझे लगता है कि they are not really going that fast over there, क्योंकि अगर एक चीज उन्होंने ऑनलाइन कर दिया, बिकॉज ये तो आने ही वाला है, पूरा जस्टिस सिस्टम तो होगा ही ऑनलाइन, देयर इज नो वे आउट टू इट. बट अभी वो जल्दी क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज फिर सारे डिपार्टमेंट्स अगर आ गए ना, हर जगह इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई, तो ऑल द डिपार्टमेंट्स विल एक्चुअली हैव टू. एक तो आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती हैं, तो द कोर्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी खड़े हैं ना, वो मतलब आई डोंट नो, दे आर लाइक, वो बिल्डिंग्स भी ऐसी हैं कि पता नहीं कितनी पुरानी, बट स्टिल, एंड द पेपर्स एंड द डॉक्यूमेंट्स, एंड इफ एवरीथिंग गोज ऑनलाइन ना, इनको कुछ भी गुम हो गया है, कुछ भी हो गया है, कुछ बोल नहीं पाएंगे. वो फाइल्स कैन जस्ट गो, कुछ कुछ हो नहीं पाएगा, रेवेन्यू भी कैसे कमाएंगे, लैंड स्कैम्स भी कैसे होंगे, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए नहीं हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जस्ट डू समथिंग कि Shreyaji, जल्दी. before you conclude this point, I would like to say there is two committees which have been set by the Supreme Court regarding the artificial intelligence inclusion in the judicial system, and how these virtual courts can be made regularized and can reach to many states. So they have made two committees. They are working on it because they also understand in future this can be the new way, and there can be more transparency, as you said, and it becomes easy for a complainant or a petitioner or a person who's defending his case to understand legalities of his case in a better manner, rather than paying lawyers for what has not been done in the past. So that is the thing. So we are seeing changes. It may take time because we structurally as well are not capable enough. At the same time, our social structure is also very difficult, and adapting new things for us definitely will take time. But yes, there are committees which has been formed. So that I wanted to inform. Yeah, and I just want to tell everybody that whoever is coming, I respect everybody, but whoever is saying, na, we salute you, we really don't want that. Because for me, to it was like I didn't do it for a salute, or, and I'm sure nobody else does for that. But what I would like, or what anybody else would like who's coming out and talking about it, is you stand with each other. If there's something else happening, help each other, and help all the people who are fighting for all these things. That's what is needed. Instead, normalize this. No need of saluting or saying it is something very special that we've done. This is the basic that we should do, is what should happen. This should be a basic thing. Yeah, I just want to thank everybody, and Jai Thank Hind, you, Jai Bharat. Shraddhi. And I know you have been a brave person, and I know that has given you a different perspective in life. And what I will suggest to all the women who are listening to you, that take inspiration from the common people around us who have been the warriors in their own ways, in their own life, and learn from them. And this platform is always open. Whenever you guys feel that we want to discuss more about it, we want to talk more about these issues, please let us know. And Shreya ji can come, other people who have been there, who have gone through the trauma and how they have recovered and are living an amazing life right now. We will bring all these amazing women or men on the platform and do it again for all of us, to make us aware of what is happening around our society and among our people. Thank you, Shreyaji, for taking time and sitting with us for so long. I'm really grateful. Thank you so very much. Jai Hind to you, and Jai Bharat, and see you soon again. Sonia ji, thank you for bearing some time with me. सेक्सुअल हरासमेंट का मैं गूगल का डेफिनेशन बोल देता हूँ. सेक्सुअल हरासमेंट बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय द मेकिंग ऑफ अनवेलकम एंड इनअप्रोप्रिएट sexual remarks or physical advances in a workplace or other professional or social situation.
There can be a 3 types of sexual harassment: verbal, written, physical or visual. So अगर ये sexual harassment, be it verbal, be it physical or be it visual, अगर ये तीनों तरीका होता है, it comes under sexual harassment. और मैं I don't know whether it is whether I'm trying to get into this populist kind of theory, but if you consider this useless industry, Bollywood is responsible for spreading this sexual harassment into our society. You look at their movies, look at their songs, look at those vulgar dances, look at those vulgar item songs. Those all, they are deliberately trying to मतलब बढ़ावा दे रहे हैं sexual harassment को. तो because I've come so late, so I don't know, because तो मेरा हिसाब से this useless industry इसका सबसे ज्यादा रोल है sexual harassment को spread करने के लिए, क्योंकि अभी पहले ये इंडस्ट्री थोड़े थोड़े डिपार्टमेंट में होता था, थोड़े थोड़े इंडस्ट्री में होता था. अभी ये इस इंडस्ट्री की वजह से पूरा ये वाइड स्प्रेड हो चुका है. हर एक एवरी नॉर्म ऑफ द सोसाइटी, एवरी कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी, दिस इज हैपनिंग राइट नाउ. So since you being a legal advisor or legal advocate, you are in a better position to address this. But since I believe in all these populist kind of theories, I personally believe that this useless industry has to be taught a lesson, because they have destroyed our culture, they have destroyed our society, and they have done it by actually propagating sexual harassment in each and every platform or each and every stream. That's correct, Sachinji, and all these issues we addressed today. We addressed all these issues today, and we just came to a conclusion that not only one particular industry, but sexual harassment has been part of all the industries, corporate world, and all that. So not only by changing one particular industry, but in totality, the change in the whole society is very important to upbring a responsible man who can understand and respect women, to upbring a honest and understanding women who understand the whole scenario of it, and making a good total atmosphere in the society, a ecosystem where everything related to each other, if uplifts each other and makes it a better place for all of us. That is the whole point. And yes, we are going to conclude this session next time, because it has not been one last point I would like to make. Sonia, that we can understand sexual harassment, for women, it is there in every industry. But अगर sexual harassment अगर men ने किसी को propagate किया है ना, तो इस घटिया industry ने propagate किया है. This industry, Bollywood, has propagated sexual harassment against men. If you understand, मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोग गे कल्चर या होमो कल्चर को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, ये लोगों ने सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट मेन को बहुत बढ़ावा दिया है, दिस इंडस्ट्री, एंड इट हैज हैपेंड सिंस लास्ट 10-20 years. It is prevalent right now in our society as well. So this useless industry, if we don't kill it, these people are going to destroy our culture. So my request to everyone is, please boycott this industry. They are the root cause of all evil in our country. Right, Sachinji. Thank you for your amazing thoughts, for sharing it with us. We are grateful, and we hope to see you in the next session when we conclude this session and take it forward from there. Thank you so much for coming today. Jai Hind, Jai Bharat ji. Thank you. Dhananjay ji, your any closing statement? You're on mute, Dhananjay ji. You're on mute. सॉरी, थैंक यू. क्लोजिंग स्टेटमेंट में मैं यही कहूंगा कि जैसा सचिन ने भी बोला कि इंडस्ट्री अब सेकेंड टाइम मिस्टर परफेक्ट हैज बिकम इम्परफेक्ट, and these activities is just to malign our Sanatan Dharma and to just depress us. तो ये जो सारी षड्यंत्र ये लोग करते हैं, ये और इनके जो कारनामे हैं, ये रियली ये हरासमेंट, ये इनके लिए बहुत बढ़ावा देते हैं. और बाकी बहुत कुछ है कहने के लिए, बट डेफिनेटली इन द नेक्स्ट सेशन आई विल कम विद दैट, क्योंकि बहुत लंबे लंबे भी है चीजें.
नेक्स्ट टाइम जरूर, मतलब वो मेरा उम्मीद करता हूँ मेरा नेटवर्क सही रहेगा नेक्स्ट टाइम। आज मेरा नेटवर्क ने बहुत धोखा दे दिया। नो एनीवे, प्रॉब्लम। थैंक यू आज आप वेरी चाय मच। एंजॉय कर रहे थे घर पे भाभी जी के साथ, सो वी नो। यस यस लेट यस द यस let या the let the network also play its games. Thank you so much या for coming today. Jai Hind, Jai Bharat to you, Jai Shri Ram. यस, थैंक यू वेरी Arun मच। sir, जय श्री राम। Ujjwal sir, your closing comments, please. Ujjwal sir, your closing comments. Your मैं closing सिर्फ इतना ही comments. बोलता हूँ, मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलता हूँ, है ना। जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने ये जो केसेस शेयर करते हैं, उन सब की जय हो। और सारी नारी जाति को, इवन पुरुषों को भी, दोज हु गेट सब्जेक्टेड टू दिस, स्पीक अप एंड बी रेडी टू फाइट एंड डिफेंड योरसेल्फ। दैट्स ऑल। सबकी जय हो। Thank you, Ujjwal ji. Jai Hind, Jai Bharat. Arun sir, आपके closing comments, please. Jai Bharat, Jai Shri Ram again to everyone. As always, we decided for 1.5 hours and went to 4.5 hours. We will not blame that. I mean, this time I'm happy because a lot of people joined and expressed their, usually it is like, and and that is very good. As Ujjwalji and many people told, they have to come and express it out. That is what the platform is for. And such a very sensitive topic, we need more and more people to come and talk. And Shreya ji, आप बोल रहे थे कि I don't want people to tell me that वैसा नहीं है। ये सेंसिटिव टॉपिक को कितने लोग बाहर आके बोले हैं, ठीक है। हम वो ब्रेवरी को कर रहे हैं, बट there's one more thing is we should all stand for each other. As Sonia ji also rightly mentioned, we have to stand for each other. अगर कोई like unless until we show the compassion, right, they are not going to open up. वो बाहर बोलेंगे ही नहीं। अगर बाल बोलने के लिए हम चांस ही नहीं देंगे, कंपैशन ही नहीं देंगे, तो अंदर ही दब दब के देन वी कैन नॉट ब्लेम द सोसाइटी। फिर सोसाइटी में आके सोसाइटी खराब है नहीं बोल सकते ना, हम खुद वही कर रहे हैं। वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सोनिया जी द राइट थिंग शी टोल्ड। पुलिस कहां से, पुलिस को क्यों कोस रहे हो, पॉलिटिशियंस को क्यों कोस रहे हो? वो कहां से आए हैं? वो आसमान से तो नहीं टपके ना, आप और हम ही तो बनाए उनको। सो फर्स्ट वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स क्लियर बॉस। हम करें तो वो सब ठीक हो जाएगा। once we show the way, they will also become all right. That is what Sonia ji is saying. We stand with them, stand with whomever they are. Let them also come and explore what are the various solutions, express, and then understand what we can do for that. I mean, it is not a question of one woman or one guy or one boy, one girl, ठीक है? It's a question of the entire nation. अगर सुरेश भाई बोला था एक एप्पल और साढ़ा एप्पल बास्केट, if a basket is a nation, पूरा कंट्री को तो अफेक्ट कर रहे हो यार। इट इज ऑल कंट्रीज इश्यूज, इट इज नॉट इंडिविजुअल इश्यूज, ठीक है। बाहर आइए, एक्सप्रेस करिए, एक्सप्लोर करिए फॉर सॉल्यूशंस एंड लेट अस टॉक, लेट अस डिस्कस। इट इज नॉट लाइक it is not one man's platform, it is everybody's platform. Let us come and discuss. That is the only way of solution. जब ये उठाना पड़ेगा, शस्त्र उठाना पड़ेगा, उसके लिए भी डिस्कशन के बाद उठाएंगे, उसमें गलती नहीं है, उठाएंगे। उठाने का टाइम आएगा तो उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। बट वी हैव टू डिस्कस। दैट इज माय सबमिशन एंड आई हैड लॉट ऑफ इंसिडेंट्स इन माय पर्सनल लाइफ। प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम सोनिया जी से एक टाइम 20 मिनट का टाइम ले लूंगा, उसके बाद मैं सिर्फ मैं बात करूंगा, ठीक है। And people, you're aware, no, now I'm going to talk next time, so you know who not to avoid. Anyway, I'm just kidding. So मैं बात करूंगा next time, and I have to tell about certain incidents because I also wanted to. Guys, Arun sir, come out. Whenever Truth Teller's notification comes to me, I shares it at least 2 or 3 groups where 200, 150 subscribers are there, and it is I am feeling happy that one or two day by day 1 or 2 people are getting joined with this channel, and they are coming on the platforms. Sir, हमारे again as Sonia ji told, it is not like सब्सक्राइबर्स का गिनती नहीं है हमारा, कितने लोग देख रहे हैं, इसे सीखने का है, कितने लोग सीख रहे हैं। दैट इज द बेसिक थिंग वी वांटेड, बिकॉज़ सोनिया जी हैज बीन राइट फ्रॉम बिगिनिंग, उज्जवल जी ही हैज बीन स्ट्रेसिंग राइट फ्रॉम बिगिनिंग, आओ जुड़ो, बातें करो, सीख लो।
हम भी सीखते हैं, आप We भी don't सीखते want हैं। subscribers. We want viewers and actors. Yeah, learners. You know, हम ऐसे Learner, बोलते हैं ना, actor. जिज्ञासुस. We need Yes. those people will understand. Not है कि मैं मेरा full है यार, मेरे को सीखने को कुछ नहीं है, मैं नहीं आऊँगा. Big failures in life. Big failures in life. Anyway, Yes. thank you for giving me platform. I'll again step back. Sonia ji, आपके now it's left to you. Thank you. Just as I said in the beginning, sexual harassment, sexual violence, sexual abuse is never to a particular gender. It is a neutral thing. It is gender neutral. So not only our women but our men have to also raise their voice. I am sorry, my team is sorry, Ujjwal ji, Arun ji is sorry if you felt offended by our flyer today where I showed a woman in a position where people feel it's appropriate. The flyer is bold, but that is my way of expressing it, that we should not be ashamed. We should not be ashamed of what we are. So bodies are nothing but the soul which is hurt by the impact of all these violence, abuse, and sexual harassment. That marks never washes off. Sonia ji, I'm sorry. I'm very sorry to interject you. I'm very sorry to interject you. But the poster that you have put up, it is so prevalent in this useless industry. Almost every movie, I mean, in a very, very derogatory way, they publish this kind of posters. I mean, you have put up in a very, in a moralistic way, but these people in a very, very क्या बोलते हैं, मतलब बढ़ावा देने के लिए, sexual harassment को बढ़ावा देने के लिए ये ऐसे posters को propagate करते हैं. आप वेब सीरीज भी ले लीजिए, अभी OTT पे भी वही चल रहा है. They are completely encouraging rapes and sexual harassment on OTT as well. थैंक यू. सो मैं इस बात को कंक्लूड करूंगी और इस सेशन को हम नेक्स्ट टाइम पूरा कंप्लीट करेंगे विद द सॉल्यूशंस. वी हैव मोर अदर सच इश्यूज व्हिच आर कनेक्टेड टू इट. सो हमारा इस फ्लायर बनाने का एक मकसद था. आप शरीर की चोट को धो सकते हैं बट आत्मा पे आपकी मानसिक चोट जो आपको इन सब चीजों से आप इस सब से गुजरे हैं वो धुलने में टाइम लगता है, वो जाने में टाइम लगता है, वो कभी धुलती नहीं है. और उसके लिए आपको क्या चाहिए? ढेर सारा प्रोत्साहन, ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट. सो आई एम विद ऑल दोज मेन एंड women who have been through all this, who have ever been abused, verbal, sexual, any kind of abuse, who have been ever been sexually abused, who have gone through harassments. We are here, we are ready to listen. Just take one step. We will try to improve society together. We will try to make it a better place for our men, for our women, for our children, for our old, everyone. So on that note, I will say thank you so much for connecting with us today. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shri Ram. जय हिंद, जय भारत.